वो तो है भी सज्जाद सज्जाद ही है। हाँ सज्जाद पहले यानी तो अभी पुराने जो है वो अमान थे पहले। पिए मैं पीता हूँ पिए थोड़ी सी मैं भी थोड़ी सी पी फिर रूम में नवीन 11 तक ये 100 है मेरा। नवीन 11 प्लीज हरी अप गाइस ले लो। अच्छी वाली चेयर नहीं है सर। नवीन 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೆಂಡಲ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರೋಹನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನವೀನ್ 11 ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರೋಹನ್
चेक करते हैं इसको जो नहीं करो, फ्लेवर डाल के आराम से यूज कर सकते हैं। फिलिंग है भाई। नहीं मतलब लेकिन एक दूसरे का नहीं करना चाहिए। मतलब मुंह जाना ना, 10 किलो कह रहे कि ना, वैसे 10-25 रुपए का मिल जाता है।
Naveen 11. ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ದಯಮಂತದ ನವೀನ್ 11 ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಲೈನ್ ಔಟ್ ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಜಂತದೆ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು. So 10 teams participating in this prestigious cricket tournament, and in A and B group B grounds. I request the extra player of both the teams please be reported here immediately. Extra players of both the teams. Umpires, please start the match. Umpires, please start the match. Already delayed. Please. Umpires, please start the match. Extra players, please clear the ground. Please. I request the 12th man extra player of both the teams please be reported immediately. Diamond to the umpire. Commentary box ఎదురుంటుంది నాకు one side ball. So opening batters of Karawali Auto Garage is slowly walking towards the middle. Jersey number 33 and 5 walking towards the middle here. The umpires taking their respective position here. I request those who are standing in the left of our committee box. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು. I request the 12th player. So many times I requested, but you are not responding. I request the extra player of both the teams please be reported here immediately. Naveen 11 under the extra players. It's very compulsory for each and every team to need to keep your one extra players here in our committee box to help the scorer. Because live telecast is going on here, so that your cooperation is much required to mention correct name. I request the fielding team, kindly request you to fast very quickly. You need to start the match.
Umpires, please see that match need to be started immediately. Already late here. I request all the teams please cooperate with us. So, as the officials, we have Rishabh and Sian are the two umpires in this A cricket stadium. And as a scorer, we have Kiran, the official scorer. And in commentary box, myself, Sudhir Saryan, from Mangalore, first time in this beautiful venue. And I'm thankful and grateful for the organizer giving me the golden opportunity to be a part of this prestigious Kateel Premier League KPL. And along with me, my long-time partner, Mr. Gopi, will go to entertain you in our national language, Hindi. I request Kishore and Sunil. I request Kishore and Sunil be requested to report here in a ground A immediately. ದಯಮಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಬರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. Yes, everything seems to be ready here, and opening batters that came in the middle here for the team Karawali Auto Garage, because the captain of Navin 11, after winning the toss, rightly elected the ball was just they wanted to exploit the condition of the morning. Salim is a striker and a non-striker. Yes, non-striker is also Salim, the two Salim, and but we need to mention one is a well-built personality, Salim is in a striker's hand, and another one the little master in the non-striker's hand. The first ball, which is almost around the block hold of the batsman. Absolutely good start there from the bowler from the committee box, and is coming round the wicket, but targeting the mid-range action of Salim. He wanted to get that one downside region, but being the line of the delivery at last moment he negotiated it very well, just getting his back into the line of the delivery. Here is the next one. Right around the wicket again. They're going to be a punishable, not from the umpire, but from the not from the batter, but in fact it's from the umpire, because the ball just missing the direction outside the line of leg stump. Might be ball is brushing the leg of the batter, so no white call here. Wow, what a delivery! An absolute beauty of each of the delivery there from the bowler. Right on the block hold of Salim. Again, the bowler in the first over itself is right on the money and right on the target, not giving any room for the batter to get any big shots. Shan operating from the commentary box end, looking for some wicket here, round the wicket. Oh, what a delivery, absolutely perfect one. Again, the ball is hitting in the line and almost angling round the wicket, means always it's going to a good line to ball. But the ball is just moving from the good red spot and trying to get the ball back into the line of the delivery, but ball just getting some extra deviation, missing the line. Full toss, long net, it could be the first sixer of the tournament in this A ground. The first sixer of the KPL, which is registered by Salim. Manipur in the relegation, juicy full toss, no way to miss this opportunity to swing that one into the deep square leg boundary for a huge six. It's a little margin for other bowling that deliveries when you are having a little bit of opportunity to keep the field under the deep square leg. This is disrespected again, a lovely improvisation going down to deep square leg region before the fielder
returns the ball to the hands of wicketkeeper, ample time for the batter to complete that couple of runs. But one shot call by umpire here. Unfortunately, the Salim Manipur couldn't manage to reach his home in the non-cycle then, so that all the efforts it is gone in vain because of the one shot call by umpire. So 9 runs came from that first over. Good start, a positive start from the batting side. Naveen 11 even there on the toss selected to field first, but Karawali Auto Garage they got a very good start. 9 without loss of one shot, so that 8 runs. Eight for the loss of without loss of any wicket. Karawali Auto Garage. Absolutely, we can see we hear the sound of the band. It is really creating this atmosphere, just like a festival atmosphere out here in this most beautiful Malaika Cricket Stadium here in Ajman. Rohan. Left and off the wicket again. The ball is a good warning again from the bowler Rohan. There is the ball kissing the line on the middle stump. Luckily the batsman got a batter to that in the last moment. A little bit across the line he wanted to get that one. But fortunately for him that ball is got a little bit back in the last moment. Otherwise the possibility of ball hitting the stump here. But Sunil got the single here with the single cover numbers on to 9 on the board. Without loss of any wicket. This time switching is comes into play for running down the deep four point region for just a single here. Again, the ball into the direction going out for the next one, 2-1. So that no hesitation from the umpire to call that wide with that extra score numbers on to 11 on the board without loss of any wicket. Over number second is in progress. Again the ball operating. Swings, this is a lovely shot. Glorious opening up. Oh my goodness! The fielder in the mid-wicket region dropped the catch. Once this looks like a Salim hoisting it over down to mid-wicket. Looks like it's going to be maximum. And in fact, because of that stroke which is played against the direction of the wind, ball is not really traveling, and ball looks like the fielder is going to get that one. And unfortunately, the drop by the fielder at mid-wicket. The batter Salim has got a life here. Catches win the matches, which is the greatest slogan of cricket. You need to take the catch if you wanted to win the match. Can't give the life to the batter like Salim. Rohan. Once again shuffled across the line of delivery again. Salim looking for some improvising cricketing stroke. Of course, in a present cricket, each and every batter tends to play some kind of improvising cricketing stroke because the 5 game with the margin to defend the ball. Again, that's going to be wide. And Rohan is struggling to get his line and length as he is searching for some quick deliveries, but couldn't manage to make his concentration over the line. Wide call by umpire, one more addition total with the addition of that single score with more than 14 on the board without loss of any wicket. Rohan is struggling as we couldn't manage to get his line and then proper. Maybe searching the ball that on the legs of the batter. Again, switching is complete to break. It was building there by the fielder, little hesitation for the run, but at last they managed to complete the single because ball went very quickly to the hands of that short-term and fielder. In the meantime, non-cycle is almost crossed over halfway mark
good mark, so that Salim Manipur responded a bit late for that single, but anyhow, scoreboard numbers on the 15 on the board without loss of any wicket. So a ball single-handed hit, beautiful shot, one bounce into the fence for 4 runs. This is the kind of treatment is required for the kind of the delivery. I already mentioned, it's a little margin for error. We can't do the mistake only to the legs of the batter. It's known to be each and every batter is very strong out with the legs. And absolutely fantastic ball, which is coming from the bat of Salim. Wicket count is over numbers 19 on the board, over number 2, which is comes to 9. 2 overs gone, 19 on the board. That means they're going exactly 9.5 runs per over, and it seems to be a very good run rate maintained by the opening batters of Karawali Auto Ganj. So for the latecomers, this is the first match number 1, and match number 2, which is definitely the match number 2, because already the match number 1 which is started in a Group B, and you are watching the match number 2, and Karawali Auto Garage takes on Naveen 11. Yaksha Yogas and Kurmar DJ challenges match number 2. Even Dubai Indians and Varaha Rupa, the teams which is going to have a match after this match. With the wicket, that they managed to complete the single with a single score numbers on to 15 on the 20 on the board, 20 on the board, 24 without loss of any wicket. And over number 3 is in progress. This I want to see the field set. There is a deep fielder in the deep long off one fielder at the deep mid wicket. Fielder at short mid wicket, deep square leg, one at the short third man, back point fielder is coming inside the ring, and one fielder at between deep cover point and extra cover. So altogether we can see that 4 fielders in the offside region and 1 on the 5 on the on. Now spine leg coming inside the ring, the square leg coming inside the ring, there is short spine leg, short square leg, deep square leg in front of the square, and 1 at mid wicket and 1 at orthodox deep long on and deep long on. Again, holding away from us. Left arm, lovely delivery, beautiful delivery, presented almost like the batsman. And Salim very watchful in the against. He knows that this is a one good delivery, you need to give some kind of respect. And because there was an absolutely Yorker line, slow Yorker line delivery there from the bowler, and negotiated very well by the batter. This time again the ball is again right on the block ball. This time batter has got a little bit bad after that. Not convincing beginning, so but very important to see that both the batters are rotating the strike very well. With a single score number 21 on the board in the over number 3 is in progress. Quite a bit of overcast condition. What we are talking about is a little bit encouragement for the bowlers. That's why the condition of the weather. The little bit movement what bowlers can get. You need to hit the good spot to get the good deliveries. And mixing up the deliveries is so important. This time again going for the expansive drive. Shot it across the line of the not that much of short enough in the irrigation. Even though Salim wanted to get that ball down to deep square leg region. One of the scoring zone of Salim. He loves to play that stroke, especially down the square leg and fine leg. It's one of his strongest scoring zone. And here is again the bowler coming from the committee box. The ball's okay, just over the infield, down to long off. Fielder trying to save that, a very good save by the fielder. And meantime batsman turning out for the 3rd run as well. And they completed 3 valuable runs in between. So nicely placed that one down to long off for a 3 valuable runs. Well calculated cricketing stroke coming from the bat of Salim Manipur. He knows that the long off is inside the ring, is a little bit off. So they just got that one over the top of the infield and got a 3 valuable runs. This time, catch it is a ball high and up in the air. Opportunity for the fielder at the wicket to just the catch because ball is in the air for a while, for a long time in fact, and the fielder is at the wicket making no mistake at all. Wicket number first, which is back into the win at the score of 24 on the board. And partnership with the first player of Naveen, fielder has a partnership of 24 runs for the first wicket. Salim back into the win.
ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 24 ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲೀಂ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 24 ರನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ 11 ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 3 overs which is comes in hand. So after this match, the next match will begin between Dubai Indians versus Varaha Rupa. So that I request the team players of both the teams, please get ready and complete your formalities of signatures as soon as possible. The match number 2 in this A ground will be played between Dubai Indians versus Varaha Rupa. So that I request all the players of both the teams, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Rohan, the bowler is introduced from the far end. Again, we start with a wide delivery which is gone far away outside the line of camp. Point it's wide. And the wicket takes a scope and moves on to 25. Quarter century coming up here for team Naveen 11 by losing one wicket in the over number 4 in progress. Most of the bowlers are left-arm bowlers. Rohan balls and nicely played that one down to deep Rahman for a walkable single. With that single scope and moves on to 26. A new batter coming to the middle is Saru. He's off from the direction now. Salim picked up a single, so that Sarup is a new batter. And we can see a very experienced campaigner, Sarup. And very good striker of the ball as well. And the top part. He's worried only about a very good striker of the ball, but not really getting the placement right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with that shot selection. The placement is not good enough. The fielder has shot with wicket and making no mistake at all. Just moving to his left, taken that catch, and it's a golden duck here for Sarup. So golden duck here for Sarup. Of course, in the first ball itself, he just wanted to get the acceleration. Of course, he got elevation, but not really able to get the distance what he's looking for, because he played that one in a flatter version, and that's why ball went straight to the hands of that mid-wicket fielder. Unfortunately, Sarup, without troubling the scoreboard, is back in the pavilion. 26 on the board. I request the captain of Dubai Indians as well as Varaha Rupa. The captains, I request that please report here in our commentary box immediately. Dubai Indians baka Varaha Rupa. The red color captain nakala icon vagere barodu. Again, the lovely delivery indeed. Batsman going for unorthodox ticketing show. But very popular ticketing show in our cricket. Each and every batter loves to play the switch it and reverse swing. Couldn't manage to get the ball into his bat and the ball just missing his bat and the ample time for the batter to complete the single. With a single scope and move until 27 on the board for the loss of 2 wickets. Over the 4 in this goal. Lovely shot, lovely that one. Will go to opportunity for the field and there in the deep long off. Even though once it looks like it is Salim going to get the distance again, unfortunately, one more batter fails to get the distance, but managed to get the fielder down at deep long off, making no mistake at all. The wickets are coming here in this over number 4 of Naveen 11, lost their 3rd wicket. It's 27 for the number 3 wicket. So Rohan is picking up 2 valuable wickets and the score of now 27-27. Here. There is a manual scorer and online scorer. Both are showing the same, that 27.
First ball wide, second ball single, third ball wicket, fourth ball single, and fifth ball one more wicket. Please don't argue. There are two official scorers there. One is a manual scorer, one is the online scorer. So Rohan firing from the far end. So far they picked up a 2 valuable wickets. Captain bowler bowling again, driven that one down to cow point region quite officially but quite safely, and ample time for the batter to come back for the second. With that second six over moves on to 29 on the board. Alpha Dubai Indians captain Ainath Begade Barudu. Dubai Indians net the captain Ainath Begade Barudu. Vara Rupa the captain Captain. Again, nice with the one beautiful, glorious cover drive. They're looking for the second as well. Very good running with the wicket. In comes the throw from the deep. And batsman finding short of his crease. One more wicket is back into pavilion. They just wanted to take a risky second run, but what a good throw coming from the fielder from the deep extra cover. The throw has been absolutely fantastic. And just over the fields. Bowler just completing the formalities of making that run out. So 30 on the board. Altogether we can see in this particular over, the 3 wickets back into pavilion, 2 in the account of bowler, 1 in the form of run out. Altogether one of the most important over which is bowled by Rohan for Karawali Auto Garage. Not only he managed to tighten up the screws, but he managed to get some wicket for his team. And that's why the first time we can see that Naveen 11 little bit struggling, and here to get some competitive total. 30 on the board after completion of over number 4. Sir, may know the name of that fielder who returned the ball. The fielder who was responsible for the run out. Sean. Thank you. Scoreboard is 30 on the board, exactly 30, 3-0. Over to Mustafa. I request each and every team need to send your extra players to us or commentary box because it's a very compulsory. So you need to register that one in the online. Please, after we are having so much of call, you are not responding. It's a tournament is made for you. You need to see that. You need to cooperate with the organizer. Again, the switch it straight to the hands of Dr. Point Division. Unfortunately, very good connection, but they couldn't manage to make a placement. Wickets are nothing in hurry. Of Naveen 11. So Sachin is back into pavilion in the one more golden duck. For the first ball itself, he wanted to play unorthodox cricketing, so there is a switch he wanted to play. And always the fielder down at back point, making no mistake at all, and takes a very good catch, and wicket number 5, which is back into the 6th right back. 5 wickets back into pavilion. But unfortunately, wickets are tumbling like house of cards after that 3 overs. You can see that in a quick session, losing 4 valuable wickets. Partnership is more important, at the same time acceleration is very important because last over is in progress. Right above the gate, what you are talking about acceleration, here you go, the acceleration, one ball into the fence for 4 runs. Absolutely exquisite footwork coming from the back of the new batsman Sachin Shetty. So what an important boundary coming from the back of Sachin Shetty. But the time is required for some acceleration in the last over. And they got that acceleration. Nothing much wrong with the line of play, but footwork is absolutely exquisite. Taking this position quickly, premeditated Sachin, and
that played it on in the right in the gap against the bowlers from the corner. Right over they get one more switch it, but this time the fielder is there in the deep third man division, so that batsmen have to settle for a couple of runs. Good running between the wicket. Appeal for run out. Umpire says no. They're going for the card for the overthrow, and they completed 3 valuable runs. Absolutely good presence of mind here from both the batters. Very good presence of mind for both the batters. They have completed 3 valuable runs before the throw coming from the fielder. But the wicketkeeper trying for the run out. Ball hits the stumps, and they got opportunity to grab the opportunity for complete the 3 valuable runs. With that 3 valuable runs for 27, a very valuable run for the after time to complete that couple of runs. So over moves on to 39 on the board, 39 for the loss of 5 wickets in the over number last is in progress. So last over it seems to be a productive over. Right over wicket again, cutting down the track, just using his feet and puts that one down to deep slot. They're looking for the second. He wants a strike and he managed to retain his strike in this cycle. And good to the mind because Sachin wanted to get the strike back desperately because he wanted to deal with the last deliveries of this over. Wicket is back into pavilion and in a hurry because quite understandable. In this last over is more than the ball, more than the wicket. The run is going very important. So 40 on the board, 40 for the loss of 7 wickets, and again the bowler from the far end. Last delivery. Lovely delivery, very good delivery from Samad there. It is the last one, so that absolutely good one. And run out taken place here, run out taken place. Where is that run out or stump out? 40 on. I request Gopi. Gopi, please everybody. So yes, 40 which is the total score, and after completion of over number 5, team Naveen 11, they completed their 5 overs quota. Their manager, I request please stop the band. Stop the band, please. So just coming back to the completion of the innings of Naveen 11, it's a 40 which is the total score after the completion of over number 5, and they got runs exactly at 8 runs per over, and they set a target of 41 to win the match for Karawali Auto Garage. And we will see how well Karawali Auto Garage will go to get this 41 of the stipulated 5 overs, and we will see how Naveen 11 going to justify this 40 runs. Will they manage to stop the batters of the opposition not to get that 41? Let's wait and see. And before the innings will go to start off for Karawali Auto Garage, I request my partner, commentator, Mr. Gopi, to take over the microphone. And Gopi, welcome back and good morning to you. And it's going to be a pleasant morning and something different morning. And what we are talking about, the very cool breeze which is passing around in this ground seems to be a very good condition for the players because they're not playing very hot. But in this very cool weather condition, it looks to be a fantastic cricket tournament is going on here. Kateel cricket team Dubai organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Kateel Premier League 2024, which is proudly presented by Barrels and Rangers. And
especially for I would like to give special thanks to the organizers because the first time it's going to be an experience for us coming here and having a mic for this prestigious cricket tournament. First of all, I would like to give special thanks for the opportunity. And Gopi, just coming back to this match, Karawali Auto Garage takes on Naveen 11. Do you think that 40 runs in this condition is going to be good enough for the team Naveen 11 to defend that one? And if it is not, why it is not defendable? But coming back to the bowling of Naveen 11, Karawali Auto Garage, they bowled very well. And they picked up some wickets, especially the 4th over, the 5th over, they managed to pick some wickets. But last over is going to be the bonus over for Naveen 11. They got some runs in that over. Because of that, they can feel that if they bowl well, feel well, they can defend this match. And we will see how Karawali Auto Garage will going to get this run. And before the next innings of Karawali Auto Garage will going to start here, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our Hindi language. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು 15 ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾಗೂ 1 ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಟಗಾರರು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So welcome back once again. धन्यवाद सतीश. तो जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त करावली ऑटो गैरेज और नवीन 11 के बीच मुकाबला जारी है. इस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कटील प्रीमियर लीग 2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत जहाँ तक सवाल है इस वक्त पहले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त बना है Karawali Auto Garage ने बनाया 41 रन over. 41 the target in 5 overs for Naveen 11, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.20 runs per over they are to score for victory with the help of 10 wickets. So that equation shows for them. देखते हैं यहाँ पर नवीन 11 के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं. सुबह का वक्त और जहाँ तक ऐसा कहना पड़ेगा, अगर वक्त के बारे में अगर कहा जाए तो सुबह के लगभग 10:15 यहाँ के कालमान के अनुसार, यहाँ के समय के अनुसार इस वक्त बज चुके हैं, यानी 10:15 बज चुके हैं सुबह के. और घने बादलों से नीलाकाश इस वक्त ढक चुका है और बदली भरा वातावरण जरूर, लेकिन वर्षा की संभावना हो सकती है. लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जब तक ये श्रृंखला आज रात को समाप्त न हो, यहाँ पर वर्षा न आए. तो इस उम्मीद अपेक्षा के साथ यहाँ पर इस श्रृंखला के पहले मैच में हम आगे बढ़ते हैं. नवीन 11 के लिए 41 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में. 5 overs 41 the target, exactly required run rate 8.20 runs per over. 10 wickets they got in their hand. The present equation shows for them. And their innings now going to start. Shreyas and Shezan and Robin, the openers for Naveen 11. Meantime, the bowlers from the pitch proceedings is Salim. And we are just waiting for the first ball of their innings. पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. 41 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, टॉप एज पर गेंद टकराई, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. इस 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. नवीन 11 के लिए 1 रन का बिना किसी नुकसान के 55 ओवर इस वक्त यहाँ पर प्रगति पर हमें करूँ जो भी काफी हद तक तेज है. मैदान के पाई सताई और काफी तेजी के साथ हवा इस वक्त हो सकती है और धूप का नाम और निशान नहीं. सूरज जो कि बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है और कुल मिलाकर नीला आकाश को इस वक्त घने बादल यहाँ पर घने काले बादल यहाँ पर ढक चुके हैं और बदली भरा वातावरण यहाँ पर मैदान पर चालू है. तो कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा, इस बदली भरे वातावरण के बावजूद क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर चालू है. इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत कटील प्रीमियर लीग 2024. अगली गेंद ये गेंद ट्राई किया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद का पीछा करते फील्डर गेंद को जब तक वाइड लंबा और फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन का प्राप्त करने का. जैसी अंग्रेजी में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया और गेंद जब तक वाइड लंबा पर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के 2 without loss in the first over. 41 the target in 5 overs. And the next delivery comes from the bowler Salim. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए कीपिंग विकेट को थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया गया है. अगली गेंद
ये गेंद अच्छी गेंद इस बार हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर गेंद को खेला खूब चोटी के साथ मिड विकेट पर जब तक गेंद को फीड करके फील्डर थ्रो करे इस वक्त गेंदबाज के हाथ में बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर रन से नुकसान किया और फिर से एक बार सलीम और गेंदबाज फील्डिंग इस वक्त कवर करते हैं इस बार कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया जाना है कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के दरमियान सीमा रेखा के पास और अगली गेंद लेकर सलीम तैयार ये गेंद इस बार बड़े बॉल एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली हेल्ड ऑन हिज बॉल by the bowler. This is an absolutely sharp chance and he just got a head on that on the bowler throw and grabbed that one successfully. Fantastic on the ball. 1 minute gone. Is bar after the departure of Robin, number 3 batsman is not coming out to the middle. तौसीफ इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ और पहला विकेट गिरने के बाद इस वक्त कुछ हद तक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता है इस वक्त जरूरत है उन्हें साझेदारी यानी पार्टनरशिप की तो गेंदबाज सलीम एक बेहतर लेग ऑफ लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज तौसीफ के लिए लेकिन टॉप एज मौका हो सकता है लेकिन नोबॉल का भी इशारा यहाँ पर हो चुका है और अगर फील्डर कैच भी लेते हैं तो भी कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर नोबॉल घोषित किया गया था अंतिम अक्षर में और यहाँ पर बल्लेबाज को रन मिले इस गेंद पर कुल मिलाकर 2 रन और 1 नो बॉल यानी 2 + 1 3 रन एडेड टू द टोटल 3 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर टॉप एज पर गेंद टकराई थी गेंद को डालना चाहता तौसीफ है लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद के बल्ले पर की तरह से नहीं है लेकिन नो बॉल होने की वजह से इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं और 3 रन के खाते में छूट चुका है 2 बल्ले के रूप में 1 नो बॉल के रूप में 6 रन 1 विकेट के नुकसान 41 रनों पर स्कोरिंग on the target in 5 overs still they have to score 35 more runs for victory in the remaining 4.2 overs in fact still they got 9 wickets kept intact now with this वक्त सुरक्षित रूप के लिए और सलीम ने और उनका प्रगति पर अपनी और की अगली गेंद लेकर तैयार तौसीफ इस वक्त सामना करते हुए सलीम की गेंद को पता ही ना तो बंदा विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई This is just the triple shot he stop at the last moment और गेंद को वाइड इस वक्त घोषित करते हुए और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर it's 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress सलीम इस बार गेंद को चला है काफी ऊंचा लंबा फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आखिरकार इस कैच को लगने में सफल और इस बार गेंद को उन्होंने फेंका है नॉन स्ट्राइक रेट पर लेकिन फ्री हिट होने की वजह से बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं काफी ऊंचा उछाला था गेंद को लंबा गया था बेहतर तरीके से लंबा फील्डर द्वारा और इस बीच 2 रन बल्लेबाज को मिला और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर अगली गेंद चुके हैं गेंद पर टिप्पा कर देंगे और ऑफ स्टंप पर जाकर के टकराता हुआ दिल्ली अब डिस्टर्ब होते हैं और इसके साथ सलीम अपना दूसरा विकेट प्राप्त कर चुके हैं 9 for 2 तौसीफ the new man हकीम is now comes out to the middle as a number 4 batsman हकीम का आगमन यहाँ पर होता हुआ निश्चित रूप से यहाँ पर 9 रनों के ऊपर 2 विकेट यहाँ पर खो चुका है और इस वक्त
जरूरत है नवीन 11 को एक बेहतर साझेदारी की। तो जहाँ तक इस शक्ला का सवाल है तो एक बेहतरीन क्रिकेट शक्ला फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त प्रोग्रेसिंग here after being grand inaugural ceremony in the morning held and after the first match of this tournament is now progressing here fantastically in the name of Kateel Premier League 2024 और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए इल्लू खलील का ओवर समाप्त हो चुका है। प्रथम ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ನವೀನ್ 11 ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ। 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 32 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನವೀನ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ। 24 balls remaining, 32 runs required, 24 गेंदें बाकी, 25 रन चाहिए विजय के लिए। जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी में तो इल्लू इस वक्त गेंदबाजी में उतरते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, जबकि शहजाद इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लाइन आउट ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट करना गेंद विकेट सेट है, जस्ट वांट टू कंटेक्ट वन ऑफ द बिग exposing the wicket at the last moment, not succeeded और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 पर रन, 2 विकेट के नुकसान है, 9 पर लॉस ऑफ 2 विकेट और फिर से एक बार गेंदबाज इल्लू। ये गेंद कम है, मौका हो सकता है फील्डर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई एक रन मिलेगा नुकसान के लिए, थर्ड पर थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो पिच पर गेंद टकराएगी जरूर, गेंद काफी देर तक हवे पर रही लेकिन स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर नहीं और मिड विकेट से जब तक फील्डर हर तरफ कर गेंद को फील्ड करे, चंद टिप्पो बाद थ्रो कर स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रनों के साथ अपने छोड़ पर वापस लौट सके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। इन 2 रनों के साथ आपको पर यानी 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवरों की पारी के यहाँ पर 30 रन और चाहिए विजय के लिए, 30 रन स्कोर रिक्वायर्ड इन 4 प्लस ओवर्स। अगली गेंद लेकर इल्लू तैयार। Is back. Number shot. Fantastic. This time he plays again. Just we are going for the pass signal. And it's gone down the back. It's a biggie. इस वक्त शहजाद का बेहतरीन छक्का रिवर्स शॉट के जरिए स्विच हिट के जरिए उन्होंने लगाया था। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद अभी भी अंतिम क्षण में लेक्चर से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 17 for the loss of 2 wicket। इक्वल बैटिंग इज नाउ ऑन और शहजाद ने एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार इल्लू की गेंदों का। तो इल्लू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा उछाल लेने के तौर पर धीमी गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट पॉइंट, more slower delivery a little bit and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and that is an game shown as second over game shown and so good second over game shown and 9 runs came from it and after 2 overs still the batsman saw Naveen 11 are now fighting back. 17 for the loss of 1 wicket and let's coming back to the equation. 41 minus 17, that means 24 runs more required in remaining 3 overs, that means in remaining 18 deliveries with a requirement rate of exactly 8 runs per over. 24 ರನ್ನು की दरकार बचेगा 18 गेंदों पर 24 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का तो एक बेहतर ओवर जिसमें कम से कम 10 से 12 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर नवीन 11 इस मैच में वापस आ सकता है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त करावली ऑटो गैरेज के खिलाड़ियों का तो इस वक्त गेंदबाज उनका गेंदबाज जो भी इस ओवर को शुरू करेगा यहाँ पर किफायती गेंदबाजी अगर करता है तो करावली ऑटो गैरेज का पलड़ा और यहाँ पर भारी हो सकता है। फिलहाल कुछ ऐसा कहना पड़ेगा ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो 24 रन चाहिए, 18 गेंदें बाकी और इस बीच गेंदबाज
करावली ऑटो गैरेज की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सलीम नंबर 2 उनकी ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए सलीम मणिपुरा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सलीम दूसरा सलीम और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे साइनाथ के बल्लेबाज हकीम के लिए। तो इस वक्त सलीम इस वक्त फील्ड में कुछ जमावट करते हुए दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षणों में आप दिखाई देता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त साइनाथ ऊपर तक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए साइनाथ के बल्ले सीधे बल्लेबाज के पैर पर टकराएगी। तो यहाँ पर बल्लेबाज बन चुके एक रन का इजाफा हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब मोहम्मद इकबाल का चलाकर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जीत for the loss of 2 wicket at the start of the third over impact और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। कुल मिलाकर 23 रन और चाहिए 17 गेंदें बाकी 17 balls left 23 runs more now they have to score for victory। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। Again, this time, he's got that one. It's gone many amounts from the fence. It's a huge one. So absolutely fantastic second convert of Shaidan. इस छक्के के साथ I must say Naveen 11 are now back in the match. And now 17 required, 16 balls remaining. The tide is now turned. और यहाँ पर देखते हैं अब शिशान को बांध कर रखने के लिए गेंदबाज कौन सा फैसला यहाँ पर आजमाते हैं आने वाले गेंदों में। अगली गेंद full toss, again the same treatment. This time, oh brilliant, but he can't hold that one. In fact, it's gone over the fence. Single success for Shizan. And with this 6 and now they are strongly back in the match. Just 11 runs required, 15 balls remaining, 15 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए विजय के लिए और ऐसा कहना पड़ेगा नवीन 11 अपनी मंजिल की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। अगली गेंद ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई लंबा दौड़ फील्डर लगाते हुए लेकिन मैंने नहीं समझता कि वो रोक पाएगा। गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Shizan looking on fire. 7 required. 14 balls remaining. 7 रन चाहिए. 14 गेंदें बाकी और सब कुछ इस वक्त अपने पक्ष में कर चुके हैं शिशान अंतिम 3 बेहतरीन स्ट्रोक्स के बदौलत। अगली गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन इस बार इनसाइड एज ऑन द बैक गेंद पहुंची बैक बॉल स्कोर लेकर सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड की जाए बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। इस बार विकेट को उछालना चाहते थे डीप विकेट और डीप बैक स्कोर लेके ऊपर से लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा यानी अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त पहुंची थी 2 स्क्वायर है डीप बैक स्कोर लेकर 2 रन बल्लेबाज को मिले। 36 रन 36 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. They are looking in a commanding situation. Just 5 more to get. 13 balls remaining. और गेंदबाज इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार सलीम look it at this side he finds the gap and he's gone over the fence of the one bounce. It's a boundary and that brings the scores are now level. Scores are now level. Just a single run required in the remaining 2 overs. So scores are now level and now just a 4 minutes is now remaining in this match. Score इस ओवर पर आवाज कर चुका मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन बने थे। तो इस ओवर में रन बने थे 23 runs scored in this over and because of this over Naveen 11 are now heading towards to their victory. Just a single run required in remaining 12 deliveries that means in remaining 2 overs और अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है और अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो लेकिन चमत्कारी घटना अगर घटती है तो भी यहाँ पर नवीन 11 विजयी रहेगा क्योंकि सिर्फ 1 रन बनाने 12 गेंदों पर इल्लू
इस बार चूंकि राइटेड गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है, बराबरी पर 40 रन 2 विकेट के नुकसान में। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर है और गेंदबाज इल्लू अपनी ओर से अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहा लेकिन कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं निकल रही थी, तो कहते हैं टीम के सपोर्टर समर्थक इस वक्त कहते हैं कि जल्द से जल्द मैच को फिनिश करें, क्यों हम वहाँ पर खामखा और वक्त जाया कर रहे हैं। और अगली गेंद इस बार मैच को समाप्त कर चुके हैं चौके के जरिए विद एन रिवर्स शॉट। So a comprehensive victory for Navin Niraman by 8 wickets with 9 balls to spare, and with that comprehensive 8 wicket victory, they are through to the in fact they back the complete points. So the next match, Dubai Vararupa will take over Dubai Indians in the next match, and Vararupa are going to won the toss. They elected to please for that because of the Nariman. Both teams may have to restart the match immediately. presents over Dubai Indians in the next match और वरारूपा के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। प्लीज स्टार्ट द मैच इमीडिएटली। ವರಾರೂಪ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ। ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರಾರೂಪ ತಂಡವು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। So match number 3 of this tournament is now coming up now exclusively within just within front of it within just short while between Dubai Indians and Vararupa. I request the extra player of both teams to please to be reported here to tell the players name. And we are just taking a short break. I will be back right after short break with my presentation in English. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। So man of the match of this match award goes to undoubtedly the man who blasted 32 runs in just 13 deliveries, including 3 massive sixes and 2 boundaries, and he remained unbeaten on 32. Shazam, a gentleman of the match. He excelled man of the match for his fantastic batting knockout for 32 unbeaten runs, including 3 sixes and 2 boundaries. तो अगला मैच ವರಾರೂಪ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು I request the extra player of Dubai Indians and वरारूपा please to be reported here to tell the players name। तो अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा। दुबई इंडियंस और वरारूपा एक छोटे समय के बाद मैच अपने साथ उपस्थित होंगे अंग्रेजी में 25 के साथ, जब यहाँ पर मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी 25 श्रृंखला के अंतर्गत कभी प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत। तो अब वक्त है एक ब्रेक। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। तुम बस ऊपर आ जाओ, मैं तुमको छोटा माइक दूंगा, वो कमेंट चालू रखो। जाएगा नीचे कभी भी भाई। नेक्स्ट मैच ये ग्राउंड पे तो नहीं, किसका है? ओके मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए, बस नाम चाहिए भाई। माइक दे दो, निकल दुबई इंडियंस 12th मैच स्कोर चाहिए तो इधर बैठो। तुमको 2 मिनट चेयर अरेंज करो। मुश्किल नहीं, खड़ा रहे, नहीं तो एक निकल दो। नहीं नहीं वो कटवा है। ठीक है, आराम से बैठो। अभी बैठो। बैठो।
Europa or Dubai Indians? Dubai Indians. Over. Yes. Nice meeting you. Vishal Bachchan. Okay. ठीक है ओके थैंक यू अरे डिटेल्स करो ठीक है अरे डिटेल्स करो ठीक है वो पूरा अरे टीम पर वरा रो पला मैच नहीं आ रहा है वो क्या नाम बोले आप बहुत नीचे वाला है वो मैच हेलो वही जा रहा है ಅಭಿಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ कंफ्यूजन और उधर भी कमेंट हो रहा है ना मिक्स होता है वॉइस आ रहा है ना hello so good morning everyone once again welcome back for the match number 2 in this stadium number 8 and we are going to start here the match between two very good teams will go into clash here and already we are started over number first here. It's a 5 without loss of any wicket. Varaharupa, and again the bowler from the far end, bowling with the run up. Right, I'm over the wicket. Pulls that one. Pawaz is just going over the deep square leg boundary, and before the fielder will go in to collect that one down to deep square leg region. Ample time for the batter. Pawaz Ismail, he wanted a third run, but his partner is not interested. So just a couple of runs, and with that couple of runs, Kobar moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Ashad is on attack, is in from the far end, and Fawaz Ismail is batting on 6, and just enough for deliveries. Again, bowler seaming in from the far end. Again, nice delivery. Ismail is a very technically sound player. Fawaz Ismail. He's a kind of batter who plays every format of a game, whether it is tape ball, season ball, or hard tennis ball. And even he got a name and fame in underarm cricket as well. One who played for Team Young Friends Surua, one of the most respected and
prestigious cricket team in Mangalore, and nice to watch him is performing in this prestigious Kateel Premier League 2024, which is proudly organized by Kateel Friends in this most beautiful Malek Cricket Stadium here in Ajman. So this is your Sasish Salian, first time in Dubai, and my friend Gopi is also will going to join in our commentary box, and I hope everyone is enjoying the commentary here in Dubai. And Dubai is a managed to score 8 against Varaharupa. Muzmil bowled the first over and conceded some runs in this first over. It's 8 on the board without loss of any wicket. अगर नहीं है तो मुश्किल नहीं, बैकअप कर दो सब। From the far end, bowler will go in to start. Again, lovely shot, like lovely looking square drive there from Fawaz there. Absolutely glorious. And the way that he's just getting that one over that infield, it's an unbelievable. It's not an easy stroke to play in the book, I want to say. Have a look at the way that he's getting that ball. Just moving to his leg side, making some room to play the shot and plays it down to deep cow point. Deep cow point boundary for 4 runs. This is what now batsman was for you. I already mentioned he's a kind of batter who technically very sound and absolutely not missing the opportunity when there is the bowler giving some room. It's absolutely asking for trouble. Again the bowler from the far end. Right arm over the wicket. Switch it comes into play. Just going over the top of the infield. It's going to be one bounce into the fence for 4 runs. Now Fawaz is on fire. Absolutely is on fire. And 2 quality cricketing stroke. One is orthodox cricketing stroke and second one is absolutely unorthodox and but quite useful in present cricket. The switch it comes into play. Just going over the top of that infield. Just going over He is a very good cricketer. He's not only technically very sound, but he is a very intelligent cricketer. He knows exactly where the fielder is, and in choosing that cricketing stroke is unbelievable. So the runs are coming very easily in the second over. 2 deliveries, 2 boundaries. That means the bowler is on pressure. Right arm over the wicket again. Again, have a look at the way that Fawaz is getting his run. Little bit hesitation for the second run. In fact, it's going to be asking for trouble if wanted to complete the second run, because throw which is coming from the deep in the mid wicket region, and ample time for the batter to complete the single. So Fawaz is out of the strike. A little bit relaxed here for the bowler because Fawaz is out of the strike and left-hand batsman is on strike now. Samir is a batter, in fact, a left-hand batter. Samir Kurg in the sense is coming from Madikeri, basically from Madikeri, Kurg, and especially some players of Madikeri, they are very good in this format of games like tape ball cricket, and one of the most popular format of games is played in Dubai. Again the bowler from the far end. Wow, this time lofted that one, beautiful shot again, he's gone. Very good catch taken out in the cow point region. Once it looks like the batsman played that one in the gap, but couldn't manage to get the timing behind the stroke. Pays the penalty for that. Cow point fielder making no mistake at all. The wicket number first is back into pavilion of Dubai. It's 17 for the loss of 1 wicket. Samir Kurg departs for 0. He's gone. Very good catch taken down in the cow point. So first wicket is back into pavilion after 17 runs contribution for the first wicket between left and right combination, Samir and Fawaz Ismail, and Sandy will go in to contribute from his bat. The Sandy strong breeze which is passing in this cricket ground, and the breeze in the sense is a very cool breeze passing in the ground, and shot selection is going to be very important in this weather condition. You need to get the big stroke with the direction of the wind, then it's always going to be a chance for the batsman to get some
big shots. Again, Sandy quite nicely plays it down to square leg region because the delivery, which is almost on the midline leg stamp, batsman little bit shuffled across the line of the delivery. Just a roll of the wrist which is comes into play to play that one down to square leg region, and with that single, Sandy is off the mark, and total score now moves on to 18 on the board. For the loss of one wicket in the over number second is in progress. After that very expensive first over, and opposite team Varaharopa have to come back with some wicket taking deliveries again from the far end. Right arm over the wicket, lovely delivery, little bit deviation in the negation for that ball. Batsman wanted to get that one to third man region. Great over, good over, very tidy and successful over which is comes to an end for Varaha, and that's the kind of over they needed after that first over, which is very expensive. So after completion of over number 2, it's 17 on the board, 17 for the loss of one wicket. For live tip Msports. Yes. So good morning everyone. Good morning for the viewers of YouTube channel who are watching live telecast of this cricket tournament from Msports live YouTube channel, one of the most popular YouTube channel, especially coming to the cricket is concerned. A very popular YouTube channel that's got more than 1.23 1.1 lakh 23,000 subscribers already subscribed this channel because of that quality, the popularity which is given by Msports. So good morning everyone, this is your Satish Salyan and from Mangalore, and in English this is over number third will going to start. You are watching match number 2 in A ground, and the match is in progress in the B ground as well, because altogether 19 matches to be played today, and the bowler will going to start the first ball. Right arm over the wicket, again nicely behind the line of the ball. Sandy knows that his partner Fawaz Ismail is in other end. His job is to pick the single and wanted to give the strike as much as possible to Fawaz so that gets some acceleration, because always the subtle batsman is going to be very dangerous, and seeing that Sandys are doing a right job here, and because if straight away getting a big shot is always going to be asking for trouble. Again from the far end, right arm of the wicket coming down the track, lovely delivery, beautiful delivery by Pratap Shetty. He's just reading the mind of the batsman so quickly, seeing that batsman coming down the track using his feet and just shortening the length, and ball is just moving from the good land spot. Absolutely good outswing delivery there from the bowler to defeat the bat of Fawaz. Pratap Shetty from the far end. Right arm over the wicket, this time leading edge is going to be easy catch here for the fielder at short third man region. This is a wicket what team Varaha needed. Absolutely, this is a huge fish in the net, I want to say, because Fawaz Ismail is looking so dangerous in his attitude as he was wanted to get a big shot. The first ball he missed it, second ball he lost his concentration, tried to break the shackle, and he got a leading edge of the bat, held the edge. Short third man fielder making no mistake at all. The wicket number 2, which is back into pavilion. It's 19 for the loss of 2 wicket. So 19 for the loss of 2 wicket. Dubai slowly are back in the game. So I want to see the new batter just coming to the middle for joining Sandy. Ashish Egade is a new batter in. Ashish Egade is replacing Fawaz Ismail after scoring 16 runs in just 10 deliveries. He couldn't manage to convert that his start into big innings. Unfortunately, the team Dubai have lost their second wicket. Varaharupa slowly and steadily they tighten up the screws here from the far end. Right arm over the wicket, going for the big swing of the bat in the negation, shuffled across the line. Try to get that one down to deep square leg. Of course, little bit encouragement for the left-hand batter. If they manage to get that one into his bat, there is a wind will going to help that stroke to get the distance. And unfortunately missed it, and score remains on 19 for the loss of 2 wicket. Pratap Shetty so far is so good, and 3 very good deliveries bowled in this over. Again, this swings at one,
and but couldn't manage to get the placement right. They're looking for the second. In comes the throw, but throw which is not good enough in that occasion. Just talking about the throw which is not good enough in the sense he's just returns the ball against the direction of the wind, so it's very difficult for the fielder to return that one against the wind, so that they got ample time for the batter to complete that couple of runs. The scoreboard is 21 for the loss of 2 wicket, and the over number 3 which is in progress. So far compared to that last 2 overs, this is one of the best over, I want to say. Pratap Shetty has bowled a very tidy over. Not only bowled a tidy over, he picked up one valuable wicket of valuable wicket of team Dubai Indians against Varaharopa Mangalore. After winning the toss, selected to field first, Varaharopa Mangalore, and again the bowler from the far end, right arm over the wicket. Pratap Bowles again wanted to swing that one in the onside region, not quite able to get that one in the onside, get that one in the middle of the bat, and but it quite enough for the batter to complete the single. With that single, scored Namozan to 22 for the loss of 3 wicket in the over number 3, which is comes to an end. And run rate, just coming back to the run rate, it is exactly 7.33 runs per over for Dubai Indians, and they still have to 2 overs they have managed to need to play. Sandy, who is batting on 2, and Ashish is batting on 2, and altogether we can see that very good competition is going on between these two very good teams altogether, and we can say that yes, 10 teams which is clashing here for lifting this prestigious title, Kateel Premier League, one of the most prestigious cricket tournament. Just like in Mangalore, we are saying that Kudla Premier League, one of the most prestigious cricket tournament, and likewise here in Dubai, one more KPL, but KPL in the sense is Kateel Premier League, and Kateel friends are organizing this cricket tournament. Not only they are engaged in this sports activities, but they are even engaged in social activities as well. They are helping for the needies, helping the poor, and giving some help for financially backward students, altogether, and old age homes, and organizing committee of Kateel Premier League, giving us the opportunity to be the part of this wonderful cricket tournament. Meanwhile, fourth over already started here from the commentary box end, and meanwhile batsman completed is a single. With that single, score numbers on to 23 for the loss of 2 wicket. Arshad Moham, the bowler, is introduced by the captain of Varaharopa, and what was last 11 deliveries remaining in the innings of Dubai Indians, so that it's very important for these two batters, Sandy as well as Ashish, to keep the momentum going, because in the last over they couldn't manage to get the runs what they really wanted, but instead they lost a wicket. So strong breeze still is passing here in Malek Stadium here in Azman, and bowler will going to start his run off. Balls again now, lovely delivery. There is a wicket keeper behind the stump position quickly to get that full shot, because maybe the reason that it's not that much of shot enough, what I want to say, this is not enough short enough to play that ball, and again that's one more very good delivery there from Arshad. It's 23 for the loss of 2 wicket here in over number 4 is in progress. Arshad balls, it's going to be a wide, it's a huge wide, and absolutely the spectra wide, and with that wide again the score numbers on to 24 for the loss of 2 wicket. So coming back this tournament, Kateel Premier League 2024, which is organized by Kateel Friends Dubai, and it's not easy, isn't it, organizing the tournament, this huge tournament like this. It's not so easy, and all the hard work which comes into play, and because if you're seeing that's a one-day cricket, but more than 100 days the effort which is required to organize such a huge tournaments,
Again, bowler a little bit struggling there after getting a very good 2-3 deliveries in this over. For the loss of 2 wicket और गेंदबाज अर्शद इस वक्त तैयार. Again, oh, this is gone many a miles. It's gone over the fence. In fact, it's gone out of the ground. It's a huge one. Again. This is gone many miles. It's gone. तो बेहतरीन एक लंबा छक्का इस वक्त सैंडी के बल्ले से लग चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्टैंड्स एंड डिलीवर्ड एंड डिस्पैच्ड इट ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ ह्यूज वन. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड still 2 balls left in this over. 2 गेंदें अभी भी बाकी. 2.4 overs gone in their innings. Still 2.2 overs have to come in their innings. और गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार फ्लैटर वर्शन पर गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर फील्डर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर. तो फवाज के आउट होने के बाद सैंडी अब धीरे धीरे अपने बाजुओं को यहां पर खोलते हुए और रन के बहाव को यहां पर जारी रखते हुए और इस बीच गेंदबाज अरशद इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए फिलहाल दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में बातचीत करते हुए बल्लेबाजी के रणनीति के बारे में टैक्टिक्स के बारे में और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज आशित हेगड़े इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस ओवर में अंतिम बार अरशद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. Bowled out, just gone for big one and lost his leg stump. Fantastic delivery from the bowler and he's just got the lead of the batsman. 3rd wicket lost, 3 overs completed, 32 on the board and except they lost the 3 wicket, they are looking in a good situation. Bowled out, just gone for big one and तो 3 ओवर की समाप्ति 32 रन. पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर आशीष हेगड़े का विकेट यहां पर गिर चुका है और 2 ओवर का खेल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 1 ओवर का खेल बाकी. 32 रन बच चुके 3 विकेट के नुकसान पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स एंड स्टिल 1 ओवर टू गो इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में सो लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द रिंग्स. अंतिम ओवर का खेल बाकी और इस बार अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. यशु गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सैंडी जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हुए और अंतिम ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ इस वक्त दुबई इंडियंस की पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर यशु इस वक्त तैयार. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट और वाइड का इशारा अंपायर का. 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है. 33 रन 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 5th एंड अ फाइनल ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन देयर इनिंग्स और अपनी अगली गेंद लेकर तो गेंद को इस वक्त उछालना चाहता. गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद इनसाइड एज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्लेक्ट होती हुई गेंद फाइन निकली इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की बाईं ओर से 4 रनों के लिए डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर. अगली गेंद यह गेंद इस बार ही हैज गॉट दैट वन. इट्स अ ह्यूज वन. 6 नंबर 2 फॉर सैंडी. सो फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ सैंडी और ऐसा कहना पड़ेगा बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए.
43 रन, 43 now for the loss of 3 wicket. 4 balls remaining in overall calculation in the innings. 4 गेंदें अभी भी बाकी. अब धूप मैदान पर प्रकट हो चुकी है. सूरज जो घने बादल जो कि नीला आकाश को ढक चुके थे, उन घने बादल इस वक्त तक काफी हद तक बिखर चुके हैं और सूरज इस वक्त बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, रन लेना नहीं चाहा अंतिम क्षण में. और विकेट कीपर जो कि गेंद को फील्ड करते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र पर जाकर रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 43 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट कपल ऑफ बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज यशु अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी, शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा लेकिन उछाल नहीं पाए. गेंद लगभग उनके छाती पर टकराते हुए और विकेट कीपर स्वयं गेंदबाज अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करते हुए रन्स नहीं मिला. 2 बेहतर गेंदें छक्का प्रदान करने के बाद इस वक्त यशु फेंक चुके हैं. अंतिम 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और अपनी ओर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए यशु इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. लेग स्टंप से बाहर, वाइड नंबर 3 इन दिस ओवर. 44 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में. अगली गेंद, फुल टॉस, जस्ट वांटेड लॉफ्टेड वन, अगेन अ वाइड, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर. और ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी अपनी सही लेंथ लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज यशु. और एक रन अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ वाइड के रूप में 45 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. यशु फिर से एक बार तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ओवर द विकेट. इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. शायद गेंद स्टंप्सों पर टकरा कर निकल चुकी थी और आखिरकार स्टंप्स को छू कर निकल चुकी थी. गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब हो चुके थे और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेट नंबर 4 डाउन, 45 for 4 with just last ball to go in their innings. धन्यवाद. बहुत ही मधुर धुन इस वक्त पंजाबी भांगड़ा नृत्य के द्वारा हमारा मनोरंजन यहाँ पर करते हुए पंजाबी ग्रुप जो कि उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं. और इस पारी के अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर चूके इस वक्त, लेकिन एक रन सिर्फ बल्लेबाज को मिला और एक रन के साथ और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन यहाँ पर रन नहीं मिलेगा और रन आउट हो चुका है. सो द इनिंग्स इज अप. दे फिनिश विद 46 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 47 द टारगेट फॉर Varaha Rupa, and their inning starts now with a just shot while धन्यवाद. और ಯುನೈಟೆಡ್ ಡಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಡ್ ಒನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So 47 the target, back to this game. 47 the target for Varaha Rupa, set by Dubai Indians. They managed to score 46 in the stipulated 5 overs and batted first, and now the 47 the target for Varaha Rupa. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद. 47 रन बनाने हैं और देखते हैं इन 47 रनों को बनाने के लिए किस तरीके की रणनीति यानी टैक्टिक्स बल्लेबाजी में वराहा रूपा के बल्लेबाज अपनाते. तो वराहा रूपा की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर चंद लम्हों बाद. 47 रनों का लक्ष्य उनके लिए. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम उपस्थित होंगे जब यहाँ पर वराहा रूपा की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
Thank you very much, Gopi. Welcome back for the match number 2 in this ground A of this prestigious Kateel Premier League 2024, and which is sponsored by Barrels and Rangers Group. And we are into the innings of team Varaha Rupa, and target for Varaha Rupa is 40. 47 is going to be a target for team Varaharopa against Dubai Indians. It's a competitive total against team Varaharopa. I'm ready to see how well these opening batters will go into lay the foundation. Arshad and Rakshit are the two opening batters are in the middle, and we didn't see the two opening batters just came into middle now, and I want to see the field set wicketkeeper standing well up to the stump. There is a short fine like there is a deep square like one fielder down at wideish almost in the mid wicket, between mid wicket and wideish long on, one fielder at long off in the sense it is a little bit in the mid off in that position, short cow point. Again, the lovely looking stroke, but not quite able to get the placement right as ball went straight to the hands of short mid wicket, and there is no chance for any round. Now condition looks to be very good. After that overcast condition in the morning, strong and a cool breeze which is passing in the middle, cloudy weather condition, and a little bit chances of the rain. But now sun is coming with the full strength, and it's going to be a fantastic weather condition.
Again, the next one, oh, lovely delivery, just moving delivery, but just moving too much, and couldn't manage to control that movement of the delivery, which is going away from the left-hand batter, and umpire rightly so called it wide. First run comes off here for team Dubai Indians. So for the latecomers, you're watching match number 2 of this ground A of this prestigious cricket tournament, and called Kateel Premier League 2024. Kateel friends cricket team Dubai organizing such a wonderful cricket tournament in this most beautiful venue, that is Malek Cricket Stadium here in Azman. So again the bowler back to his bowling mark. Sandy. This time he lofted high up in there, and it's going to be a chance. No chance. One bounce collected. Very good, saved by the fielder. I think so. Looks like the fielder, both the better fielder has got some coordination work in the occasion. What could be a certain boundary? Because of that some combination fielding by both the fielders. That ball is just stopped by the one of the fielder, and even a very good backup by the fielder from mid-on. After that, 2 runs scored Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. Good looking stroke there from the left-hand batsman, and Sandy knows that the mid-off is up in the mid-on is up in the circle, so that he's just going over the top of the infield to get that 2 valuable runs. 3 without loss of any wicket. Sandy, the bright sunny morning now. It's a very good news for the cricket lovers. We're having a very good condition now. Again, the bowler from the far end. Sandy bowls, nothing much to do with the delivery, because ball almost missing the line, far outside the line of off stump, and a wide call by umpire with the extra scope and Namozan to 4 on the board. Little margin for error, isn't it? When you're defending a total score like 47 to win the match, you need to bowl some good deliveries, because each and every extra runs is going to make an impact for the result of the match. Sandy again back to his bowling mark. Seaming in from the far end, batsman not quite able to get that one from the middle of the bat. Of course, the intention is to get that one down to deep square leg region. Because of that, he played little bit across the line of the delivery, couldn't manage to get that one from the middle of the bat, and ample time for both the batter to complete the single. 5 without loss of any wicket. Steady start from these 2 opening batters. They knows that they need to get 47 in that stipulated 40 deliveries, because one productive over, which is definitely going to change the momentum of the game, and that's why both the batters are taking their own time to settle down and wait and see how well this batter will going to get this 47 in the rest of 5 overs. 5 overs in that sense, at the 30 balls, they need to get 47, and it's manageable if the batter will going to play sensibly. Right above the gate, going for the reverse stroke is gone. Batsman out of the crease while he's trying for the expansive switch it. He's just using his feet a little bit away from the stump. He's standing. So wicketkeeper in fraction, just grabbing the opportunity to make that stump out. The first wicket is back into pavilion of Dubai Indians. So thank you. Rakshit is back into pavilion as he wanted to go for the big shot, but couldn't manage to get that one to couldn't manage to get the ball into his bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 5 without loss of any wicket. Very, very important breakthrough coming here for team Varaha. A little correction for Dubai Indians, as they got a wicket of the very good batter Rakshit. Mithun is a new batter, just joining his partner. It's a first over is in progress and scored 5 on the board. So new batter Mithun, just looking around the field set. I just already mentioned one at short third man, one at backward point and extra cover. The long off is not there, the mid off is there. The one fielder at mid on and one at deep mid wicket. 2 fielders outside the circle in that power play. Again, nicely bowled. A very good delivery to ball to the fresh leg, because whenever the new batter coming to the bat, it's the right time for the bowler to tighten up the screws, because it's not so easy straight away the batsman to come and throw the bat, and that's why the bowler always loves to bowl to the fresh leg. And one more dotted delivery. With that dotted delivery, scope numbers remains on 5.
for the loss of 1 wicket. Sandy is known to be a Sandy Kurg, is a very good performer, is a very good all-rounder for the side, and again he from the far end. Right, I'm over the Getty. Oh my goodness, he's tried to cut that one, but ball is very close to his body. When the ball is very close to the body, it's very difficult to cut the ball. And fortunately for him, that ball didn't went into the stump. It's very close to the stump. But meantime, the ample time for the batter to complete the single. First over completed after completion of first over, chasing a total score of 47 to win the match. It's 6 on the board for the loss of 1 wicket. 6 for the loss of 1 wicket. Just you had talking about some sponsors and those are the one who are really responsible for the success of this cricket tournament, and just we are talking about, yes, we are just talking about Sky. We are talking about the Sky Fund Smart Private Limited. They are the one. We have a very respective managing director of Sky Fund Smart Private Limited, Suresh Acharya, is enjoying the game of cricket in our commentary box, and Indian Mutual Experts, and with the slogan of you can make a big score in personal financial goal, and the specialty of this guy Fund Smart Private Limited is that here is a demat account which is made freely today, so it's a golden opportunity for everyone to grab this opportunity, and free assistance and audit of personal financial plans. So registered broker of MSc and BSc, and registered of AMFI, registered mutual fund distributor of India. Okay, so I request each and every cricket lovers, please grab this opportunity to make your future bright. Again, the bowler will going to start his fresh over from the far end. Suki is the bowler, bowling second over from the far end. Right arm over the wicket. Or delivery, which is almost missing the line, isn't it? It's a warm-up delivery of the morning, and ball almost going away from the outside the line of half time. Nothing much to do with the delivery. Batsman just shouldering his arm and left the ball into the hands of a wicket keeper behind the stump, did the rest back to bowler. So one more extra, score but moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. Second is in progress. Lot of cricketing action we are going to witness today. Is one of the most memorable and a big day for organizer, because I already mentioned this one-day cricket, but more than 100 days of effort which is required for organizing such a wonderful cricket tournament. Again the same line, identical mirror display of previous delivery, the same line and same length, and same reaction coming from batsman as well, just shouldering his arm and left the ball into the hands of wicketkeeper. With that extra score moves on to 8 on the board without loss of 1 wicket. So much we need to talk about this organizer. We are coming back to that afterwards, and bowler again bowling right arm over the wicket. Lovely shot, beautifully cut that one down to deep backward point, between backward point and gully region. Fielder will go in to chase the ball, and looks like the fielder will go in to win the race against the fielder, and before the throw coming from that fielder, the ample time for the batter Mithun to complete that couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to double figure, 10 on the board for the loss of 1 wicket. Suki is searching for a good line. Of course, after bowling 2 wide deliveries, he just wanted to get 1 good over for his team, Dubai Indians. Right, over the get. Oh, lovely shot, beautifully driven again. That was the fielder will going to chase the ball. Again, the ball is not really going to travel quickly because of the heavy grass in this ground. The ball, the batsman hitting the ball down the ground because of slight bit of heavy grass. Ball will going to travel very quickly. Enough time for the fielder to chase the ball, and before the fielder will going to collect that one. Again, the batsman Mithun got a plenty of time to complete that 2 valuable runs. With that couple of runs, score moves on to 12 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number. Second is in progress. Suki, even they got a very good line, but he couldn't manage to keep the batsman quiet. In the last 2 deliveries, conceded 4 runs, and again bowling from the far end.
Right above the wicket, the same shot again. This time little bit in front of the wicket, and again the ball is went towards a deep backward point region for a couple of runs. So Suki, the Mithun is doing a very good job. The cricket is not all about hitting a boundaries and sixes, but some kind this kind of sensible cricket which is more required. Because singles maybe looks to be it was a small in a safe and size, but continue it's just like it's a raindrops. The continue fall of continuous rainfalls make the rivers overflow, and that's what the singles in the cricket is very important. Right above the wicket again, nicely cuts that one again. This time they will going to get a single there because fielder very close to that ball. We're standing at backward point division. One more single. With that single score moves on to 15 on the board. 15 for the loss of one wicket. Good going for the team Varaharupa. The Varaharupa cricket team wanted to get that 47, the stipulated 5 overs, and they knows that what could be the asking run rate for them. That is almost 9.50 runs per over, the required run rate, but they are going almost in the similar run rate, and they needed one good partnership. But at the same time, for the opposition team, they needed one breakthrough if they wanted to put some break on the run rate of the against team Varaharupa. Dubai Indians trying their level best. Suki changing his angle, quite understandable because left-hand batter is on strike. He is coming round the wicket now from the far end. Again, this is one of the biggest problem I want to say from some bowlers, that they're conceding some lot of extras. It's definitely going to release the pressure from the batter when you concede the extra. Not only they come giving you an extra bonus run, but you need to bowl extra deliveries. That will going to be a bonus for the chasing team. 16 on the board. Full toss, lofted at one, but not really able to get that one middle of the bat, and he pays the penalty for that. The very good running catch taken there by the fielder at mid wicket. Excellent running catch back because once it looks like the ball is going to land it safely, it's not really connected properly. So wicket number 2 back into pavilion as the batsman Mithun, Rakshit. Arshad is back into pavilion, caught at mid-wicket region of the bowling of Irshad, and Suki is a bowler who really got a very important breakthrough for his team. So Varaharupa in a wrong time they are losing the wicket when the momentum is going very well for the team. They lost a big wicket, and it's the right time for the team Indians to tighten up the screws to bowl some good deliveries. Right above the wicket again going for the switch. They straight to the hands of that cow point fielder, and no chance of any run there. So one more delivery, one more over which is comes in, and after completion of over number 2, chasing a total score of 47 to win this match. It's 16 on the board, Varaharupa, and they are needed another 31 more runs required for the victory in the remaining 3 overs. 16 for 2, and they needed another 31 runs to win this match. 31 required in remaining 3 overs. I request the fielding team to make it fast. Don't waste the time in between the overs as far as setting a field is concerned. Actually, as per the rules and regulation of the cricket is concerned, only 4 minutes which is given, and 5 minutes going to be a
Actually, 20 minutes is given, and you can take another 2-3 minutes as a grace time, but not more than that. And please note that. Please cooperate with the organizers. Twenty plus 5. 20 minutes. Iron player rule actual rules Vinay, the bowler. Uh, Third over going to start. 3 overs, 31 runs required for the victory for Varaharupa. And asking run rate, I already mentioned 10.33 runs per over. The asking run rate for team Varaharupa to get this remaining 31 runs. And from the far end, it's going to be a change in bowling. Vinay brought into attack from the far end. The spin bowler is in action. I request the fielding team, please don't waste the time and make it fast. Already repeating. And umpire will going to take their action if exceeds the time limits. And there is a deep square leg, there is a deep mid wicket and long on. One fielder down at long off and one at short extra cover, deep cover point and backward point. A short third man, nicely driven right in the gap. It's going to be a chance of a couple of runs here before the fielder coming from the deep long off. Oh, it's not a good end to throw. Absolutely, as far as the dimension of this cricket ground is concerned, when you try to return the ball from the deep long off towards the hands of wicketkeeper, it takes a long distance. So it's going to be easy for the batsman to complete that couple of runs. Then with that couple of runs, Koban moves on to 18 on the board. Again, driven that one straight down the ground, down to deep long on range. And this time also they wanted a second. There a fumble from the fielder, and they will go to grab the opportunity. Little margin for the mistake, isn't it? Whenever the batsman trying to get the first run very quickly, slight a bit of pressure for the outfielder. This is a good strategy implemented by both the batters, that they wanted to get the first run very quickly. When you try to get the first run very quickly, then almost you can see that the outfielder is under pressure, and because of that pressure situation, the fielder making a little bit fumble, and they grab the opportunity for that. This time pulls that one. Will it going to be a chance here for the fielder? Yes, it does. He drops the catch. Can you believe this? He hold the catch, then missed the catch. Wait and see whether the ball, which is good enough to umpire to call, is out or not, or we just wait for the umpire signal. The umpire decision is going to be a final here, and umpire will going to discuss field umpires. It's given out. Is given out. Maybe the fielder has got enough time to hold the catch in his hand, and one more wicket is back into pavilion. It's a 20 for the loss of 2 wicket.
So 20 for the loss of 3 wicket. Vinay will going to continue. Please respect the umpire's decision. So field umpire will going to be the decision will going to be the final. Please note that there is no third umpire, and the field umpire will always his decision will going to stay final. Please note each and every cricket teams participating in this tournament. I request please continue the umpires. One more dotted delivery. Scoreboard remains on 20 on the board. Again, appeal for stump out. Umpire says not out. Just an excitement rather than the confident. And batsman is safe here. So one more dotted delivery. Each and every dot ball will go to create the problem for team Varaharupa to get this total score. Scoreboard remains on 20 on the board. 27 more runs required for the victory. Needed some. So after completion of over number 3, it's 22 for the loss of 3 wicket. That means in remaining 2 overs, he needed 25 runs to win this match. That means 12.5 runs per over required run rate for the team Varaharupa. So looks like in the naked eye, we can see that Dubai Indians Varaharupa, if they wanted to back in the game. Going to be a bowling change from the commentary box. It's going to be a jersey number 25 will going to start the over number 4. It's going to be decided over for both the teams, and as a winning perspective of team the fielding team of fielding team of the team Dubai Indians is concerned that they needed one good over, and over of this time he lofted it, and he lofted that in the gap, and one bounce into the fence for 4. No, it's a 6. No, it's a 6. Ball just landing over that rope, and what a great shot coming from the bat of the batter Alfaz. In the right time, he is getting the momentum what his team is wanted. And scoreboard now jumps into 28 on the board. 28 in the sense 19 more runs required for the victory.
in the 11 delivery. Just like mentioned about some acceleration is more important for the team, Varaharupa, and they got acceleration. Again the bowler from the far end, right arm over the wicket. Driven that one nicely down to mid-wicket region. They're looking for a couple of runs there and they managed to get that couple of runs quite easily. Wi-Fi undade. So 30 on the board, 30 on the board, 30 for the loss of 3 wicket. It's a 30 on the board. There's a 17 required for the victory. Sandy, and 2 deliveries considered 8 runs. That means the match is now looks like very interesting. It's going to be anybody's game because 17 required for victory in remaining 10 deliveries. We can see a slight bit of change in the field then. Again the bowler bowling right arm over the wicket. It's a batsman off the back foot. Good bowling. That's Sandy just forcing the batsman onto the back foot. Seeing that batsman a little bit shuffled across the line of the delivery. He's not really let the batsman to go for the full shot. Slight a bit of extra bounce which is keeping the batsman quiet in that occasion. But single anyhow for the batter Alfaz with that single scope and moves on to 31 on the board. Another 16 more runs required for the victory. Right above the wicket. Oh, lovely delivery. Beautiful delivery indeed. Again each and every dot ball will definitely not going to help the team, chasing team. Yashu is the batter, again missing that delivery. Out of 4 deliveries, he only managed to score 2 runs. It's not a good thing to see it when you are dealing with the slog overs, when you wanted to get some runs from the bat. Again, the bowler Sandy. Right over the wicket, Tick is outside edge of the bat, but the ball which is landed safely between the wicketkeeper and the bowler. One more addition to total. And a good thing to see about that single is that the batsman Alfaz is back on strike. There's 32 on the board. So when the Alfaz is back on strike, the condition which looks to be something different, because he's the one who got a 6 in the first delivery of the over. So he definitely wanted to get one more in this over so that he managed to take this match into the very interesting final over. And we'll wait and see how Sandy will go into ball. It's going to be a very good contest between that very good players. Sandy is a very good all-rounder and Alfaz is a good striker of the ball as well. And it's going to be a very good contest and it's going to be a very important delivery as well for both the teams. 15 required for the victory from the 7 deliveries. Right over the wicket, he swings and swings it hard, but oh my goodness, all happening in this cricket. It's a 38 on the board after completion of over number 4. That means in the last over, 9 runs required for the victory. What a great innings is playing here by Alfaz. And this time Alfaz hits that sixer. 2 sixes which came from Alfaz. I already mentioned before the delivering of the delivery which is delivered by the bowler, the last ball. It's going to be a very interesting delivery. It's going to be a match-turning delivery. And what Alfaz did in this delivery, he knows that the one big shot which is badly required from the bat. What a great shot that one. But unfortunately, what could be a wicket for the bowler, Sandy, the fielder in the mid-wicket region, after having fingertips into his hands, ball went into the fence and they got a lucky boundaries. So this is what I'm talking about. The cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket and it's going to be anybody's game. Sometimes luck will go into be the fundamental ingredients in the success, and that luck which is went to the side of team, the fielding team, a little bit of the batting team, Varaharupa. 9 required from last over. Match is not yet over. Samir Kurgu is the bowler, has got a lot of responsibility in his shoulder that he need to restrict that 9 runs in this last over. And but a good thing to see that the batter Alfaz is in non-striker's end. He's out of the strike. Yashu is the batter, is on strike. And
Samir Kurgu will go into ball. That a very experienced campaigner, and wait and see how he will going to convert that experience into performance. Left up the wicket, top edge, high up in the air, and it going to be landed safely. Our fielder waiting for the one bounce, and batters completed that couple of runs. Once it looks like he's almost started his run from the long off. Looks like he will going to gather the catch, but he's given up. It's really given up because a lot of time for the fielder to judge, because ball is in the air for a long time. And he couldn't manage to hold the catch. Catches win the matches, because if he manages to get that catch, he can stop couple of runs. At the same time, he can send one batter into the pavilion. 2 valuable runs, 40 on the board. Again, lovely delivery, chance of run out. Oh my goodness! Oh my goodness! It's going to be 2 chances in one attempt, but already I think his base is off in the striker's end. Now some argument is going on here to which batsman will going to be out. Yashu is the batsman, is walking towards the middle because he need to. The umpire is rightly so. Yashu is the batsman, is back into pavilion and in the form of run out, and the good comeback here by the bowler in this last over. And just as per the rules and regulation of the cricket is concerned, which batsman is very close to that run out, the batter will going to be out. I request to make it past. Already we are spent a lot of time for this match, so we need to complete the matches. And I request all the. It's not an excuse actually. So Samir will going to continue here for the new batters coming to the middle here for the team. Varaharupa, Shashi Durga. Left a ball, stop edge opportunity for the wicketkeeper. Ball going to land it safely between the wicketkeeper and the third man. They're going to complete the single. With that single score, now moves on to 41 on the board. That means 6 required from 3 balls. That means required run per ball, 2 runs per delivery. It's a 2 runs per delivery, which is the required rate for the ball. Run rate required for the every ball. 6 required from 3 balls. It's going to be anybody's game. Both the teams has got some opportunity to win this match. But good thing to say that Alfaz back on strike. Alfaz is the man who really brought his team into the right track of winning this match. But job which is not yet over. Job which is not yet over. Again, the bowler bowling away from us. Left arm over the wicket. Oh, lovely delivery. Beautiful delivery there from Samir. I just mentioned earlier, he's a very experienced campaigner, but he wanted to convert that experience into performance. This is the one what you can see that experience will not go into wastage. And that was a really good delivery, which is just moving from the good line spot. Even Alfaz little bit shuffled across the line out to deliver to get that one to mid-wicket region with the direction of the wind, but he fails to make a contact with the bat. Left arm bounce, lovely. Oh my goodness, ball is keeping low indeed in the relegation. So very difficult condition for the batsman when the ball is going to keep low. It's not so easy. Now one more dotted delivery. 2 dotted deliveries will going to make a little bit difficult task. 1 ball, 6 runs required for the victory. It's going to be a decider delivery. Will it going to be Albas? Can he become the hero? Or Samir, he's also got an opportunity to become the hero. Little correction. The bowler Samir is taking his own time here. The 6 required from last ball. Alpha's already got us 2 sixes from his bat, but all the 6s will going to be wasted if you're not going to get these 6s in this ball. It's going to be a decider delivery. Oh my goodness, this is going to be a delivery which is called as a wide.
Wide call by umpire. Batsman shuffled, but not too much. And the wicketkeeper behind the stump did the rest. Wide call by umpire. One more addition. With that addition of that single score, moves on to 42. Match which is not yet over. Match which is not yet over. That means the 5 required from last ball. Alfaz has got a one more opportunity here. Samir has got a one more opportunity here to save the runs. He need to bowl one good delivery, and Alfaz have to get one good cricketing stroke. And boundary will go into tie the match. 6 will go into win the match. Here we go. Lofted. I don't think we're going to get more than a couple of runs in this one. And certainly they come back for the second. But only the 2 runs they were looking for the third. But I think it's all over. It's all over. And the win for the team. The victory of 2 runs. Very close encounter. An absolutely nail batting finish. Team Dubai Indians won this match. And Samir Kurg is the one who really bowled a fantastic last over. It's not so easy to keep the batsman like Alfaz cool for a long time. It's outstanding performance, bowling performance given by Samir Kurgu. And because of his fantastic last over, the team Dubai Indians managed to win the match against Varaharopa. And congratulations for Dubai Indians for that victory. Hard luck Varaharopa, better luck for the next match. Well, we are going to finish this match number 2. It's absolutely one of the best match I want to say in the day number 1 of this prestigious Kateel Premier League 2024, which is proudly organized by Kateel Friends Cricket Team Dubai and with the sponsorship of Barrels and Rangers. And now coming to the match number it's showing that United Dabba Cricketers versus VID1. So we'll take a short break in the commentary box, and after short break we'll go into start the match number 3 in the ground A, and right time for my partner Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो मैच इस वक्त शुरू हो चुका है और पहले गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। तो इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स 2 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जो कि विडवन ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद और राजा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद सफल होते हुए गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने निर्धार को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। सुरक्षित 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। बतीशाम इस वक्त सामना करते हुए, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शाबुद्दीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। शाबुद्दीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बतीशाम के लिए। दाहिने हाथों पर तब विकेट। ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन गेंद नहीं गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता एक टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। Lofted. This time, I think it could be got. No, in fact, it could be taken. Oh, brilliant! Absolutely brilliant attempt made by the fielder at a deep backward square leg, but he won't get that one at the last moment, and because of that, the batsman got सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और जीतोड़ कोशिश इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर ने जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में असफल और 1 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 6 रन बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज फिर से एक बार शाबुद्दीन full toss swings and straight to fielder deep backward third man. In fact, he's got only a single for that stroke. प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं था और इस वजह से बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन प्राप्त होता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज शाबुद्दीन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। और अंतिम बार इस ओवर में, for the last time in this over, and here he comes. Bowled him, gone for a big one and lost his stumps. स्टम्प्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद स्टम्प्सों पर टकराई और गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए यहाँ पर और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर 7 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट। तो वही अंबिका आगमन यहाँ पर होता हुआ। फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट शॉर्ट वाले गो 7 रन्स ऑन द बोर्ड, मिक्स स्टार्ट फॉर यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स। और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमदान और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज राजा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और हमदाम पहली गेंद फुल टॉस स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाल दिया। इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर गेंद जब तक फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल रहा और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद के लिए गेंदबाजी इस वक्त आगे
बढ़ाते हुए हल्के से 2 कदम आगे निकले, हल्के से गेंद को पुश कर दिया। देखा गेंद लगभग कुछ हद तक ऊंची तरीके से आ रही है, ऊंचाई पर आ रही है और जब तक गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हमदा अम्मा और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। एमबी सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, टॉप एज, चांस फॉर द फील्डर बट नो वन गेट दैट वन एंड द बॉल फेल बिटवीन द 3 फील्डर्स। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, काफी देर तक हवा में रही, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद टिप्पा खाते हुए और एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। राजा और एमबी इस वक्त क्रीज पर मौजूद और हमदा अम्मा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और जहां तक सवाल है दोनों बल्लेबाजों का, तो दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर हमदा अम्मा यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट और गेंद लगभग उनके जांघों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए और रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ लगभग वह सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ इस वक्त गर्मी का एहसास भी खिलाड़ी यहां पर करते हुए, भीषण गर्मी का एहसास इस वक्त खिलाड़ी यहां पर करते हुए इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। बेहतर गेंद थी, फुल गेंद पर स्ट्रोक खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर नंबर 2 के समाप्ति, 2 overs completed and 13 runs on the board, exactly 6.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them and 1 wicket lost and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining. Then 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो कि काफ़ी मात्रा में इस मैदान पर मौजूद है यहाँ पर इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति करते हुए कटील प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत इनामों का बौछार इस श्रृंखला में संगठकों ने रखा है कटील प्रीमियर लीग के। और देखते हैं आज रात को इस कटील प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब किसके पक्ष में जाता है, कौन इस खिताब का हकदार बनता है। और यहाँ पर इस चैंपियंस का खिताब प्राप्त करने के 10 प्रतिष्ठित टीमें 10 प्रेस्टीजियस फ्रेंचाइजी टीमों के बीच इस वक्त संघर्ष जारी है। और जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो इस मैच में इस वक्त भिड़ रहे हैं 2 बेहतरीन टीमें और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अशूर कुंदापुर गेंदबाजी शुरू करते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला, गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर गेंद को लपक चुके हैं ठीक तरीके से। एक वक्त ऐसा लगा गेंद को लपकने के बाद सीमा रेखा के ऊपर वो गिर जाएंगे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद वो गिरे जरूर लेकिन सीमा रेखा के अंदर ऊपर नहीं। तेरह रन 2 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो तीसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और पहली गेंद पर बल्लेबाज का विकेट गिर चुका। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी देर तक हवा में रही और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपकने में सफल। फैसल का आगमन होता हुआ एज अ नंबर 5 बैट्समैन, ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद। काफी विशाल सा सुंदर सा हरा भरा क्रिकेट मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है और यहाँ पर एक बेहतरीन और मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए कटील प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज आशूर कुंदापुर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज फैसल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई
काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया है। मिड ऑन फील्डर पीछे जाते हुए लॉन्ग ऑन की ओर, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट सीमा रेखा के 20 गज के दायरे के अंदर और गली भी 20 गज के दायरे के अंदर। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर मौजूद इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। आशूर कुंदापुर दाहिने हाथों पर विकेट, पटकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी। गेंद कुछ ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी और थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ United are searching for runs. Good one, absolutely good one. Just cuts that one at the last moment, just opening the pace of the bat, and he's got a single for that stroke. Score 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर और कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त आशूर कुंदापुर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स के बल्लेबाज इस वक्त जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक जिस अंग्रेजी में कहते हैं। इस बार स्विंग्स एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप। 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce into the fence for a boundary. Absolutely perfectly pulled by the batsman and the ball passed in that gap between deep mid wicket and wide east long on, and because of that he's got a boundary for that stroke. Perfectly struck. $19 for the loss of 1 wicket. Fantastically struck with a reverse shot by Raja at the last moment, and he finds the gap between wide east long off and extra cover. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त आशूर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद को ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में असफल और गेंद सीधे पहुंचे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 19 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। In fact, a couple of ball, 2 balls left. Good one, absolutely good one. हल्के से अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में, हालांकि 2 कदम आगे जरूर निकले, लेकिन आखिरकार गेंद की गति को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक को वहीं पर रोक लिया। सीले में डाउन की दिशा में गेंद को खेल लिया। 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 20 रन बन चुके हैं और तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर आशूर कुंदापुर का और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद लंबे रनअप के जरिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट पेडलिकेटेड, ओह स्लिप्ड आउट बाय द फील्डर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को रोकने में सफल और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 1 रन प्राप्त। for the loss of 2 wicket. टाइटल सॉन्ग कटील प्रीमियर लीग 2024 का आपने सुना इस वक्त माइक पर। और जहां तक सवाल है, एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला कटील प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई सुंदर से हरे भरे मैदान पर मालिक ग्राउंड आसमान पर एक बेहतरीन मैदान। मालिक आसमान का एक बेहतरीन मैदान, काफ़ी लंबा विशाल सा मैदान, हरा भरा मैदान और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कटील प्रीमियर लीग की 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। तो इस वक्त मैच नंबर 5 में भिड़ रहे यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स और विड वन और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। ये गेंद full toss, swings and this time, oh brilliant, no he won't get that one.
Absolutely brilliant effort made by the deep mid wicket fielder. अंतिम क्षण में जी तोड़ कोशिश की गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। तो बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट मेड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर। 6 रन्स इनटू द अकाउंट ऑफ द बैट्समैन और राजा के बल्ले से यह छक्का नंबर 1 लग चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 26 रनों पर 26। तो इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। This time gone for a big one and just the bowler just took a revenge. So Yaksha Yodhas will take over Rangers in the next match, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Yaksha Yodhas ಹಾಗೂ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷ ಯೋಧಾಸ್ ಹಾಗೂ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. (26 for 1), 3 overs completed. 4th over is now going to start. प्रथमेश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए तो पहली गेंद लेकर प्रथमेश इस वक्त तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, चूंकि लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 27 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over. In fact, still the batsmen of United Dhaba cricketers are now searching for the right track और एक बार फिर से गेंदबाज प्रथमेश दाहिने हाथों पर विकेट, full toss swings and this time has got that one for a maximum. It's a biggie. प्रथमेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक। ಯಕ್ಷ ಯೋಧ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರೇಂಜರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. So next one from the bowler, अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, डिफ्लेक्ट होते हुए गेंद निकल चुके, शॉर्ट फाइन लेग पर बेहतर स्टॉप गेंद को किया गया इस वक्त फील्डर द्वारा, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और गेंद इस वक्त पैर से डिफ्लेक्ट होकर निकली थी। अंतिम क्षण में लेग बाय का इशारा अंपायर का और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर और 3 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी और गेंदबाज शिहाबुद्दीन अगली गेंद लेकर तैयार। Again, lofted this time. In fact, there's a chance for the fielder. He dropped that one. He dropped that one at the last moment. और यहाँ पर रनआउट का मौका, लेकिन निशाना टकरा चुका है और बल्लेबाज की पारी समाप्त हो चुकी है रनआउट के रूप में। तो रनआउट यहां पर हो चुका है। हालांकि स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज जरूर बच चुके हैं, लेकिन विकेट गिर चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर और जीतोड़ कोशिश लॉन्गऑन के फील्डर ने जरूर की थी गेंद को लपकने की ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक नहीं पाए और इस बीच एक रन और विकेट भी यहां पर गिर चुका है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और शिहाबुद्दीन इस वक्त तैयार। रन दाहिने हाथों पर द विकेट। अगली गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 36 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर
और ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है. 4 overs completed, 36 on the board, 4 wickets lost with just a last over to go in their innings. So just a last over remaining in United ढाबा क्रिकेट इनिंग्स. और अंतिम ओवर में देखते हैं उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. 6 गेंदें बाकी और उन 6 गेंदों को फेंकने के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार. कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से वैभव और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, पुल किया इस वक्त, मिड विकेट पर मौका और सीधे फील्डर के हाथों में गेंद. हालांकि खुद गिर गए जरूर कैच लपकने के बाद, लेकिन कैच को लपकने में सफल. So Naufal is now comes out to the middle as a number 7 batsman. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद. इस बार ऑन साइड पर उछाला, लेकिन इस बार गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर. जीतोड़ कोशिश इस वक्त फील्डर ने जरूर की थी, लेकिन आखिरकार डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपकने में सफल. और गेंद सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है उनके हाथों पर टकराने के बाद छक्के के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ इस वक्त नौशाद के बल्ले से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर. 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. और 4 गेंदे अभी भी बाकी उनकी पारी में. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. अगली गेंद फुल टॉस, पुल, द सेम ट्रीटमेंट. 6 नंबर 2 इन दिस ओवर. और इस बार गेंद को उछाल दिया था 2 स्क्वायर. नौशाद के बल्ले से छक्का नंबर 2 लग चुका है. और नौशाद इस अंतिम ओवर अपनी बाजुओं को इस वक्त खोलते हुए पूरी तरह. 48 for the loss of 4 wickets now. In fact, it's a 5 wickets. तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार. अगली गेंद लेकर इस बार एक्स्ट्रा क्विकर. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. अंतिम क्षण में कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो कुल मिलाकर इस ओवर में 2 गेंदें बाकी है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 48 रनों पर. 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. फुल टॉस, टॉप एज, लेकिन फील्डर काफी पीछे नहीं. यहां पर लॉन्ग ऑफ के फील्ड. ओहो, कैच छूट चुका है. कैच छूट चुका है. इस वक्त गेंद को पकड़ चुके थे लेकिन शरीर पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाए. अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटते हुए और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. 50 कम्स अप फॉर यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स. 2 रनों के साथ 50 रन यहां पर पूर्ण हो चुके हैं. अब अंतिम गेंद बाकी. जस्ट लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद पर उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. तो नौशाद काफी आक्रामक रवैया इस अंतिम ओवर में अपनाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार उनकी पारी की अंतिम गेंद का. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. अंतिम गेंद. फुल टॉस एंड जस्ट ही फिनिश द इनिंग्स इन अ स्टाइल विद अ 6. So fantastic end for United Dhaba cricketers. 56 runs they scored, and now the target is for Vid1 is 57. Quite difficult, but not impossible.
और देखते हैं उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। '57 the target for Vidvans, and what a way to end the innings by Naushad with a 6. He hit 3 sixes and he scored. In fact, he hit 3 sixes and scored 20 runs in just 4 deliveries with a strike rate of exactly 500. And because of his fantastic explosive knock of 20 runs, United Dhaba cricketers. Hello. Agadda bidda javanere gobbunu tule Kateel Premier League Kateel Premier League Hello. Kateel Premier League Kateel Premier League Hello, check. Mic check. Mic testing. 1, 2, 3, check. Hello, check. तो 57 रनों का लक्ष्य इस वक्त यूनाइटेड ढाबा ने रखा है विद 1 के लिए, एंड एज फार द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न्ड एग्जैक्टली 10.40 रन्स पर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद हेल्प ऑफ 10 विकेट। द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर देम, और देखते हैं वो इन 57 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब विद 1 की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। थैंक यू, धन्यवाद। Hello. Thank you very much, Gopi. Welcome back for the innings of Vidwan, and they need to get 57 to win this match in the stipulated 5 overs, and wait to see how well team Vidwan will going to get this total against the United Dhaba cricketers. It's going to be very interesting because it's not a easy total to chase down. 57 means it's going to be a target which is slightly bit of stiffer and tougher. But seeing that wind direction, which we can see that the huge wind is passing in this cricket ground, of course it's going to be very difficult to tell before end of this match. It's going to be anybody's game, and if team Vidwan will want to win this match, they need to get some good start, some positive start, which is required for the opening batters of team Vidwan, and wait and see how well these two batters will going to get this start here. Opening batters, we have Shabuddin and Puneet are the opening batters. Left arm round the wicket. First ball plays it down to short extra cover region for a single. It's almost in the Yorker line delivery, but line is a little bit outside the line of off turn. Batsman wanted to get that one in the off volley, but not quite get that one because of that was a ball which is almost close to the bat, and they couldn't manage to get the timing behind the stroke, but managed to rotate the strike. He got a first run
and first run for his team as well. One without loss of an wicket. Team with one wanted, they got started their journey, and wait and see how long its journey is going to be. And the bowler from the far end, Ankit, with the direction of the wind, they wanted to ball from the far end and going to ball to the right-handed batsman Puneet. Ball, lovely delivery indeed. That ball is came in such a pace that such a bit of excitement, not more. I think just an excitement rather than the confidence in that appeal. We can see that ball missing that bat for a long way. Of course, somehow sound we can hear that, but it's not a ball which is contact with the bat, but bat which is hit by the batsman into the ground. So again, the bowler back to his body mark. Ankit seaming in from the far end, right arm, left arm. Around the wicket. Oh, this is a one delivery. The batsman have to capitalize, isn't it? There's a full toss delivery outside the line of off stump. You can see that there is no man in that long off and extra cover region. This is absolutely going to be a free hit delivery for the batter to get that one into extra cover. He missed it completely, and lucky survival for Ankit. He just managed to survive from that full toss from the far end, left arm around the wicket. Puneet this time wanted to cut that one. The ball will going to travel. Almost the ball is almost looks like it's going to be landed just below the waist level. Umpire, square umpire wanted to say, and saying that it was below the waist level, so that he can't call it's a no ball. ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡು ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್. From the far end, balls again, nicely balled, very good delivery indeed. He kept the fielder at deep cover point. Oh, unfortunately the batsman just lost his balance, maybe a little bit of softness in that pitch. Couldn't manage to grip that one properly. The batter, he got a single there. With that single, scored moves on to 2 on the board. So far it's a very tidy over is in progress here for Ankit, and I'm not saying that last delivery remaining in this. So scoreboard is 2 on the board. 2 ರನ್ನು, 1 ಎಸೆತದ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. Ankit will go into ball that last delivery of the over. I request the fielding team, please make it fast. Shahabuddin is on strike now. Need to have some good shot here, because they are not having some enough runs on the board. Just 2 runs on the board, and again left arm around the wicket. This time going for the switch it. Again the ball is missing his bat. Going for the quick single irrigation run out chance which is created. Overthrow. The fielder at mid-off region tried to back up that throw from the fielder, but couldn't manage to do that. So they got extra run there. But absolutely tidy over from Ankit. After completion of first over, chasing a total score of 57 to win this match. With one absolutely has got a slow start. They're 4 on the board without loss of any wicket. Still long way to go. 53 more runs required for the victory, and they got only 4 overs to spare. So coming back to this cricket tournament, is just talking about Kateel Friends Cricket Team Dubai, and with the support of Barrels and Rangers, they were organizing this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024, which is continuing very successfully. I request the umpires to see that the need to complete the 5 overs very quickly, because we have a shortage of time, and 20 minutes actually they're given for them to complete the 4 overs. If they exceed that time, I think some action will be taken here. So fielding team, please note that they need to complete, because I think probably only the 4 minutes which is given for 1 hour, and that means 20 minutes for 5 hours, but they given an extra minutes for you, so you need to complete that your 5 hours quota within the time limitation which is given by the organizers, so that we can complete this match in our scheduled time. So second over going to start from the far end. It's going to be a Prathamesh. The Prathamesh bowling to Shahabuddin, not Shahabuddin, it's Puneet.
ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನರ ತೂಲೆ 6-4 ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗ ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 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 Just coming back to this Kateel Premier League, Kateel Friends, which is proudly organized, and they're not only organizing this decade of giving back. The Kateel Friends cricket team has been consistently supporting the needy through the Kateel Premier League for a decade, and we are coming back to that. Lot of social work done by this Kateel Friends cricket team. In the 2016, they distributed distributed the books for the Kateel school in 2016, and 2017 they donated for old age home at orphanage and participation in blood donation camp as well. 2018 their charity donation towards the school Aksharana building in development. And here is the next one. Right arm over the wicket, going for the big shot. Missed it completely. No run scored. And 2021, they donated 1,50,000 for the baby health.
those who are suffering from the health problem. And 2022 also they donated 1,50,000 for the baby who are suffering from health problem. 2023 also they donated 1 lakh rupees for home renovations, and 2023 also they donated 1 lakh rupees for the cancer patient. This is really beauty of this Kateel Friends Dubai. And here is the next one, right? Over wicket, again going for lofted shot. Ball is in there, but ball landed very safely between the cover point and short cover point and deep cover point. Before the fielder from the deep extra cover to run across is to left to field the ball, ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, score now moves on to 7 on the board. Hamdan is a new batter in, and Hamdan is the one who is really got a name and fame as far as one of the best cricketer. And wait and see how well Hamdan will going to contribute from his bat. This time, ball is in there. Opportunity for the wicketkeeper. He is saying it's my catch, and he completes the catch as well. Not quite getting under the net of that delivery. Of course, he almost sitting in his knees. Try to get that one to mid-wicket, square leg region. But the ball is got a little bit top edge. Unfortunately for Hamdan, is back into pavilion. The wicket number 2, which is back into pavilion of Vidwan. Everything is going against Vidwan because of they are a little bit feeling the pressure of chasing a 57 runs to win this match. I've already mentioned that before the start of the innings of Vidwan, it's not so easy to get the total of 57 in a 5 overs, and unless and until you are going to start very well, because the first over of the power play is going to be very crucial, where it was a limited option of play, keeping the fielder outside the circle. In that particular over, if they manage to get 15 to 20 runs, then gate will go into certainly open for the team Vidwan. But what is happening is everything is going against their plan. The wickets are falling, runs are not coming, and that means the team United Java cricketers are absolutely right back in the game. Thank you very much. It's absolutely very beautiful and melodious title song of this prestigious Kateel Premier League 2024. And Kateel the Javaner absolutely did a great job here in Dubai. Azman organizing such a wonderful cricket tournament in this beautiful venue. Again, lovely delivery, beautiful delivery. Absolutely, that ball is moving from the good line spot. A batsman going for the big swing of the bat in relegation. No other option at all. Batsmen have to look for some acceleration, and by doing that, they're not really connecting the ball very well. But the bowler are dominating here of team United Dhaba cricketers. And again, the bowler seaming in from the far end. Right arm over the gate, tried to york the batsman, negotiated very well by Punit in the delegation, rightly coming to the line of the delivery, plays it down to long on region for a walkable single. But these singles will not going to help team of Vidwan to win this match. Along with the rotation of strike, they need to get 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to back in the game. But what we are seeing here is that the bowlers are dominating very well, and so far. Again, just like a left-hand batsman hitting the ball, and very, very good to see that, because he was absolutely the batsman premeditated switch it is attempted. That's why the bowler knows that where to pitch the ball, not really let the batsman settle for the absolutely perfect switch it, but the batsman managed to get the single down to mid-wicket region. Again, the bowler seaming on from the far end, left-arm balls, pulls that one. Again, the ball will go into land it safely. Again, this is not that much of short enough for the field, the batter to this time opportunity run out. They're trying for the couple of runs here, and this is all we can see that the team Vidwan are looking in a trouble, looking in under pressure, and that's the main reason that they are losing the wickets and in the frequent intervals. And one more wicket is back into pavilion of Vidwan. It's 10 for the loss of 2 wickets, and wicket number 2, which is back in 3 wickets back into pavilion. The new batter in is Ajju is back walking towards the middle.
Aju and Azharuddin, actually, the Aju, and wait and see how Aju will go into contribute from the bat. One of the most attractive wristy player, the former Indian cricketer Mohammad Azharuddin we are talking about. Again, now going for the full shot, Aju not quite getting hold of that stroke properly. And again, a very good short pitch delivery from the bowler so far. Is bowling some good deliveries, killing some quick short pitch delivery. That's where the batter struggling to get under the short pitch delivery. So long way to go for the team with one to win this match. As the third over is in progress, very hard to combine the runs against the disciplined bowling. Again, nicely places that one off the toes down to deep square leg region between square leg and mid wicket in front of the square. And one more single. With that single, Skoban Namuzan to 12 on the board. One more over completed, 3 over completed. They're going exactly 4 runs per over, but I don't think it's going to be good enough for the team Vidwan to win this match. Just coming back to the equation, 2 overs remaining, 12 balls remaining. They have to get 45 runs to win this match. It's a huge ask, isn't it? 45 to get from 2 overs, 22.5 runs per over. The required run rate is always going to be a huge ask, but not impossible in cricket. If you see in a present cricket, anything can be possible. And a lot of example you can get if you review the pages of the history of the cricket. It's not at 45, even more than that the runs are scored. But that was not happening regularly in history. And if you want to make a history, these two batters have to bat out of their skin. They need to bat some need to get some big shots straight away, and no other option at all for these two batters if they wanted to win the match. But so far we can see that the fielding team is really tighten up the screws with some fantastic bowling and bowled some great overs, tidy overs, picked up some wickets. Nevertheless, looks like the 2 overs are going to be very important for the batting chasing team to get some big shots straight away. Aju is in the non-striker's end, and the striker's end, Salau. Ankit. Left arm round. Oh, it's going to be caught. Yes, that slip caught, and the fielder just waiting for that one. Bhati is the catcher down at slip caught and making no mistake at all. Batsman going for the expansive drive and got a healthy edge. Then really, it's a very easy catch for the fielder at short third man. In fact, it's a slip cordon, and wicket number 4, which is back into pavilion for Vidwan. And the Vidwan really struggling in this particular match. The new batter in is walking towards the middle is Karthik, and we can see that quite unfortunate to see that the scoreboard. No one batter managed to get a double figure. When you were chasing a total score like a 57 to win this match, at least 2-3 batsmen, and one batsman have to play a long innings. Just like the batsman Rajah played a very good innings, and Naushad is played an absolutely small cameo in the slog over. It is definitely changing the complexion of the game with that powerful hittings. Right arm, left arm. Around the wicket balls. Again, that ball is almost on the middle and off stump. Batsman it will struggle to get the ball into this bat. Overthrow, but both the batter are not interested to take the advantage of that overthrow. Just a single. With that single, Skoban Namuzan to 13 on the board. 13 means another 44 more runs required for the victory. Absolutely big ask for the infant of Vidwan. Left arm. This time he swings it hard, and he got the big distance as well. What a shot! Absolutely, his muscles that one down to deep the square leg, and big wicket. This is the kind of cricketing stroke which is needed in the early stage of the innings. For the team Vidwan, if they manage to get that 6 in the early stage, it's going to be a different story. Well, Aju has got that one right from the middle of the bat. Absolutely, it was a mesmerizing cricketing stroke came from the bat of Aju there. But it's met with a little bit late here. And again, the bowler bowling left arm. Balls, he wanted to get the one more, and he will going to get the one more. Oh no, yeah, he got that. 2 fielders trying to save the 6, but still ball managed to win the race against that 2
two fielders, just defeating that trying hands of the two fielders and went into the fence for a second consecutive six. And with that second consecutive six, scoreboard now moves on to 25. That means a match looks like a slight bit of interesting. And 25 in the sense they needed another 32 runs to win this match. This is the over number 4 is in progress. 8 balls 34, which is 32 is the equation. 32 required from 8 balls. Here is the bowler. Ajay drives, balance back drive, was powerfully driven back. Opportunities created for the cotton ball as well as for the run out. And two chances in one ball for the bowler. One is the cotton ball opportunity is very difficult because the bat Ajay hit that one pretty hard. And second chance is a run out chance in the non-striker end. And Ajay is the same batter, will going to get the chance, two chances in one delivery. But he back into the strike. It's a good news for team Vidwan that Ajay is back on strike. Last delivery of this over. Left arm. Round the wicket, full toss, lofted, not quite connecting that one proper. And going to get the distance with the direction of the wind. But Ajay might be the low full toss, that's why he couldn't manage with that one highly. And ball landed safely to the hands of that mid-wicket fielder. And wicket number 5, which is back into pavilion. Ajay's small cameo, which comes to an end. But he's tried his level best to get the team into the track, but couldn't manage to complete the job. Is back into pavilion. To start the last over of the innings of their of the opposition team. We did that 30 runs which is required from the last over. That means a 5 maximum which is required for Vidwan to win this match. And now sending that mid-off fielder into long off. Just I want to see one long off is there, one whitish long on. Mid-wicket square leg is there. The first delivery, just a single there. But out is given, there is gone. Bids are off. It's a direct hit. Batsman is gone. So next match, Yaksha Yodhas versus Rangers. I request both the teams, please get ready. Already toss which is completed between these two teams, and the captain of Ranger won the toss. Looks like they elected to field first. So that I request both the teams, please get ready. The match will going to start immediately after this match. Yaksha Yodhas versus Ranger. So it's going to be last opportunity for the team Vidwan because they needed 30 runs in 5 deliveries. That means the 5 maximum which is required for the victory. The new batter just coming to the middle here. The new batter. Again, the ball is got a top edge opportunity for the fielder there, but ball will going to land it safely to the hands of that deep square leg region. One more wicket is back into pavilion. Now,
looks like just a formalities left in this game, unless the bowler will go into ball any stupidity, making stupidity in a sense, bowling wides and no balls. I think no one can stop the team United Dhaba Cricketers to win this match, because 4 balls, 30 runs, absolutely highly impossible. And but still, I'm not saying it's impossible, because the match which is in yesterday, day before yesterday, which happened in our South Kenda district, the underarm cricket, when it's 13 required from because 19 required from 2 balls, and fifth bowler bowled a no ball, and batsman hits a 6. Then it's required 2 ball, 12 runs, and again the fifth ball batsman hits a 6. 6 ball also hits a 6. The match which is finished, and the commentator told that before that the match is over, but after that is saying that it's very difficult to say anything in cricket, isn't it? It's a perfect example of cricket is absolutely a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket unless the last winning run you will going to get, and unless you avoid the last delivery of the match. So again, 4 balls, 30 runs required for the wicket. Right up over the wicket, going for the pull shot, not quite able to get that one now from the middle of the bat. They're going for the second run, and they managed to complete that couple of runs. Again, that couple of runs, so moves on to 29 on the board, and last 3 balls remaining, and it's going to be highly impossible now, I want to say. $28 more runs required from the 3 balls. 3 sixes will not going to help. Again, driven down to mid of long off region, not more than a single. Then scoreboard numbers on to 30. 2 balls remaining, and I think it's definitely now we can say that the formalities left in this game, and of course the celebration will good start here from United Dhaba Cricketers, because they're going to start their journey in this particular cricket tournament with the victory. And here is the last 2 deliveries remaining. Again, driven that one down to mid wicket region for easy single. They're coming back for the second as well, because the batsman knows that even they're not going to win this match, at least they wanted to get some runs for the team. 32, 32, last delivery of the match. Driven nicely down to mid wicket just for a single. 33, the last score, 33. That means a huge victory, and a huge victory for the team United Dhaba Cricketers against Vidwan. They managed to restrict their opposition for just 33. That means a victory of 23 runs. Huge victory registered by team United Dhaba Cricketers. Congratulations for the winners. Hard luck for Vidwan, but nothing must lose the heart, because they got another opportunity, because each and every team will go into the 4 matches, so that the team Vidwan need to come with some positive frame of mind, need to correct some mistakes what they did in this particular match, and wait and see how well Vidwan is going to come with the positive frame of mind for their next match. Meanwhile, we'll take a short break in our commentary box, and after that, after this match, we're going to start the match between Dubai, between Yaksha Yodas versus Rangers. I already announced the result of the toss. Rangers won the toss, captain. They elected to field first against Yaksha Yodas. Now it's time to ask Gopi to take over the microphone. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League.
I request the extra player of Ranger and Yaksha Yoddhas please to be reported here to tell the player's name. Yaksha Yoddhas ಹಾಗೂ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಲೋ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಅಜ್ಮಾನ್ನ ಹಸಿರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಯಕ್ಷ ಯೋಧ ಈಗಾಗಲೇ ತಾನು ಆಡಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ತಾನು ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಂತ ಯಕ್ಷ ಯೋಧ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷ ಯೋಧ ಪರವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ಹೌದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಗನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಗನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಮುದಸ್ಸೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೂರದ ಊರಾದಂಥ ಕತಾರ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್. धन्यवाद सतीश. So the match starts. Match number 7 of this tournament is now going to start between Yaksha Yoddhas versus Rangers. So news is here from the center that the captain of Rangers after won the toss elected to field first, and because of that the openers of Yaksha Yoddhas are the crease are Mudassar and Gagan. Meantime, the bowler is Ilyas, who will start the fresh proceedings from the commentator box, and we are just waiting for the first ball of their innings. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नज़रिए का, तो काफ़ी दूर दूर तक ऐसा कहना पड़ेगा, दूर दूर तक तो नहीं है, लेकिन फील्डर ज़्यादातर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर रुक चुके हैं. पहली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. 20 मिनटों के अंदर आपको निर्धारित 5 ओवर्स पूर्ण करने होंगे इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के लिए. यू हैव टू कंप्लीट देयर 5 ओवर्स कोटा अंडर 20 मिनट्स एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड. और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार.
Again, एक बार फिर से fantastic delivery, absolutely good one. Get some extra bounce at the last moment and passed it just below of his batsman's bat and went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. बेहतर गेंद थी इस वक्त, ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की और नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। इलियास गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और मुदस्सर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इलियास की गेंदों का बाएं हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को पुल किया इस वक्त, गेंद जाते हुए इनटू द गैप, लॉन्ग ऑन पर 1 रन 2 रन मिलेंगे शायद और 2 रन मिल चुके हैं यहाँ पर। गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है यक्षा योद्धास के लिए। कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी नुकसान के और फिर से एक बार इलियास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथ ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज उनके पैरों पर टकराकर वहीं पर गिर गए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रनों पर। 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में इलियास फेंक चुके हैं और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और गेंदबाज इलियास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी, फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 5 balls bowled by the bowler and he conceded just 2 runs and this is turning out to be a fantastic over in Rangers point of view। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूंकि और वाइड का इशारा अंपायर का, just drifting down the leg side at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and a wide call by umpire। single run added to the total और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 without loss in the first over और इलियास एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गगन के लिए। ये गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट पिटलिंग इट इन फैक्ट, has got a single for that stroke और इससे पहले कि मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास समय अवकाश था, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदल सके। पहले ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड आफ्टर फर्स्ट ओवर स्लोवर स्टार्ट फॉर यक्षा योद्धास। इट्स 4 without loss आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। तो जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का कटील प्रीमियर लीग बैरल्स एंड रेंजर्स की प्रस्तुति, कटील प्रीमियर लीग 2024 इस सुंदर से विशाल से आसमान के मानिक ग्राउंड पर खेला जाता है। कटील फ्रेंड्स क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम दुबई proudly presents Barrels and Rangers under the great leadership of Barrels and Rangers proudly presents Kateel Premier League 2024 and this beautiful huge greenery मानिक ग्राउंड आसमान। और जहाँ तक श्रृंखला है, इस श्रृंखला का तो ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए गेंदबाज विश्वा गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और सामना करने के लिए तैयार मुदस्सर। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट का ये 6वां मैच, माफ कीजिए ये 7वां मैच इस वक्त शुरू हो चुका है और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई मुदस्सर के लिए इस वक्त विश्वा। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। Good one, absolutely fantastic one this time. Just missing outside the off-stump. He just wanted to play with the wrong line. Beaten और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो विश्वा इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद को उछाला इस वक्त काफी ऊंचा और लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल। पहला विकेट गिर चुका है। अला टीम सेट आंड बैट बॉल पत्त दांड नना शुरू नम्मा क्रिकेट ये
माता सेरद स्टेपन पाडले आगड्ड बिर्द जवनरे गोब्बुन तूले कटील प्रीमियर लीग कटील प्रीमियर लीग कटील प्रीमियर लीग कटील प्रीमियर लीग So मुदस्सर का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. न्यू बैट्समैन नवाज इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विश्वा की गेंद. और जहाँ तक विश्वा का सवाल है, न सिर्फ ओवर आर्म में बल्कि अंडर आर्म में भी, अंडर आर्म क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी छाप बनाई है. और जब वो अंडर आर्म क्रिकेट खेला करते थे तो कई मैचेस में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है. और यहाँ पर ओवर आर्म में भी अपना करिश्मा यहाँ पर गेंदबाज विश्वा दिखाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद डिफेंस फॉर अ बाउंड्री. Got one into the gap as well. और इस चौके के साथ नवाज अपना खाता खोल चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. पहली गेंद पर नवाज ने चौका जड़ा जो उन्होंने सामना किया था और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार विश्वा. गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार. लेग से बाहर विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर और वाइड का इशारा. 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. और पिछले गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद इस वक्त विश्वा कुछ हद तक अपने आत्मविश्वास को खो चुके थे. लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंद उन्होंने कर दी और आखिरकार बल्लेबाज नहीं टीम को 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में प्राप्त होते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 10 रनों पर. 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार बेहतर गेंद डिफेंसिव फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक और एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड. लेकिन सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. स्टिल द बैट्समैन ऑफ यक्ष योधास सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. और फिर से एक बार फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए विश्वा. काफी लंबा ओवर उनका प्रगति पर और जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे उन्हें कुछ हद तक स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर. और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, गेंद को ठीक तरह से मोड़ नहीं पाया लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला. इससे पहले कि मिड विकेट पर गेंद को फील्डर फील्ड करके थ्रो करे. गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. अभी भी इस ओवर में एक गेंद बाकी और विश्वा अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार. इस बार गगन सामना करते हुए ये गेंद टॉप एज और इस बार सीधे फील्डर के हाथों में. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर खड़े हुए थे, गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है. ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯೇರ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನರ ತೂಲೆ 6-4 ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ಡದ ಬಿರ್ದದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಲೆ ಕಟೀಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. So back to this game और नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर की संपूर्णति हो चुकी है और तीसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज कटील प्रीमियर लीग 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई में बैरल और रेंजर्स इनकी प्रस्तुति है. यह क्रिकेट श्रृंखला न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि कई सामाजिक कार्यों में भी कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई ने अपना हाथ बटाया. निश्चित रूप से आज के दौर के एक बेहतरीन क्लब के रूप में जाने जाते हैं कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई. कई सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है. और हम इस बार आई थिंक इट्स गॉट अ प्रॉब्लम ऑन हिज हैंड. बॉलिंग आर्म पर शायद कुछ हद तक उनके मांसपेशियों की खिंचावट
नस की खिंचावट इस वक्त महसूस करते हुए। जैसे ही गेंद को उन्होंने डिलीवर करना चाहा वहीं पर वो गिर गए। शायद यहाँ पर उनके नसों में, गेंदबाजी का जो आर्म है वहाँ के नस में कुछ हद तक खिंचावट इस वक्त आई है और वो इस वक्त मैदान पर बैठे हुए टीम के अन्य खिलाड़ियों का यहाँ पर उपचार करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಭೋಜನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇವರು ಈ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು अर्पिस्ता है. तो इस बार गेंद टकराई थी पैरों पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. अब 14 रनों पर यक्ष योद्धास और यहां पर गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए और इमरान जस्ट गॉन फॉर अ रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड. विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए थ्रो पहुंचता हुआ इस वक्त नजदीकी मामला और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. बैकहैंड थ्रो, उनके पैरों के बीच से गेंद को थ्रो किया था, सीधे स्टंप्स पर टकराया. उनका निजारा बिल्कुल सही बैठता हुआ और बल्लेबाज रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. तीसरा विकेट गिर चुका, 3rd विकेट गॉन. इट्स 14 for 3. तो अगली गेंद just gone for a loft, not succeeded, but he finds the gap as well. और गेंद पहुंचती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. 15 रन इस वक्त बन चुके हैं यक्ष योद्धास के लिए. और जहां तक सवाल है बेहतर स्कोर का, तो कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा यक्ष योद्धास को. ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका. कुल मिलाकर 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 wickets in the over number 3 in progress. The batsmen of Yaksha Yodhas are now searching for the right track. और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया रिवर्स शॉट के जरिए, लेकिन 2 स्ट्रेटर नॉट स्क्वायर. और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. इससे पहले कि मिड ऑफ के फील्डर गेंद को फील्ड कर अपने आगे की ओर आकर फील्ड करने के बाद स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. और 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. 15 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है इमरान का, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया. और 3 ओवर के बाद यक्ष योद्धा स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. इट्स 17 for 3. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಾರ್ ಡಿಜೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮಾರ್ ಡಿಜೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ with the organizers. Thank you. So back to this game. 4th over starts. एलियास गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज अजीम और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो एलियास अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, काफी लंबे रन के जरिए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ ऊपर था विकेट. इस बार swings, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ पर, not more than a single. In fact they're looking for the second but won't get it. And
throw went just over the bowler's head, but well back up by the wicket keeper at the last moment, और इस बीच सिर्फ एक रन बल्लेबाज को मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए रेंजर्स के गेंदबाज और इलियास अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिलेगा। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। बेहतर थ्रो इस वक्त विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचता हुआ और दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ इस वक्त संतुष्ट हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल द रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर द बैट्समैन ऑफ यक्ष योद्धास और इस बीच इलियास अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुके हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। फिर से गेंद को वहां पर फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इलियास इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लंबे रनअप के जरिए बाएं हाथों इस बार गेंद को उछाला है, टॉप एज मौका फील्डर के लिए, लेकिन जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। जी तो कोशिश उन्होंने जरूर की थी, लेकिन आखिरकार गेंद के आगे आखिरकार टिप्पा खाते हुए और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। शरत इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त बल्लेबाजों को यहां पर यक्ष योद्धास के। इस बार just not quite get that one from the middle of the bat, but he got a single for that stroke 23। जैसा कि मैं फरमा रहा था, चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त यक्ष योद्धास के बल्लेबाजों के लिए अपने टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन न देने के लिए। कर्मा डीजे ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ और इलियास full toss lofted that one straight down the ground into the gap as well, it could be gone, in fact it cuts it off just inside the fence और बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर किया था, हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी लंबे दौड़े जरूर, लेकिन उनसे पहले पहुंचे लॉन्ग ऑन के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और सिर्फ एक रन इस बेहतर फील्डिंग की बदौलत बल्लेबाज प्राप्त करते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed, 24 on the board, 3 wickets lost. Still the batsmen of Yaksha Yodas are now searching for the right track with 1 to go in their innings. विजय संदेश चंद करारे प्रहार इस वक्त करने होंगे बल्लेबाजों को अपनी टीम के रन की गति को इस वक्त बढ़ाने के लिए। फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में ऑफ साइड पर 1 रन का इजाफा और लेग बाय का इशारा अंपायर का। पैर से टकराने के बाद फुल टॉस गेंद निकली थी इस वक्त गली क्षेत्र पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 25 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5th and last started just short while ago और गेंदबाज इस वक्त तैयार जानराज। Full toss left it, chance for the mid off feeder, he underneathing it and he made no mistake।
टॉप एज पर गेंद टकराई, हवा में उछली और एक बेहतर कैच, एक बेहतर जजमेंट के साथ मिड ऑफ फील्डर ने रखा अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। शरद की पारी समाप्त, चौथा विकेट गिर चुका है। दे आर लुकिंग नाउ डीप इन ट्रबल। इट्स 25-4। अगली गेंद का तो 4 गेंदें सिर्फ बाकी अब यक्ष योद्धास की पारी में, और इस बीच गेंदबाज पटकी हुई गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची बल्ले का टॉप पे टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर एक रन बल्लेबाज को मिला। इससे पहले कि शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद लौटा है विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 for the loss of 4 wickets. Still the runs are coming in singles now for the batsmen of Yaksha Yodhas. And now in overall calculation, it's going to be 3 balls remaining in their innings. John Raz. Lofted! This time I think he's got the distance. Yes, it does! It's a biggie! So this is an absolutely fantastic struck. आजीम के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, और छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 32 रनों पर। जरूरतमंद छक्का इस वक्त जुड़ चुका है जो आजीम के बल्ले से लग चुका है इस वक्त। यक्ष their innings and the second last ball of their innings is now coming up. John Raz दूसरी अंतिम गेंद लेकर तैयार, पटके हुई गेंद, टॉप एज, मौका, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई। जब तक चंद टिप्पों के बाद, 2 टिप्पों के बाद गेंद को फील्ड किया जाता, फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 34 रनों पर। अंतिम गेंद अब बाकी उनकी पारी में। द लास्ट बॉल इज नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और अजीम सामना करने के लिए तैयार, जानराज भी तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। Just gone for a loft, not succeeded. Get some extra bounce. I think he's got a blow on his nose at the last, nose or eyes. Just we have to wait and see. शायद उनके नाक या आंख पर गेंद इस वक्त टकराई है, और लेकिन सब कुछ सही सलामत। सौभाग्यवशात उन्हें कुछ ज़्यादा इस वक्त चोट नहीं है, और इसी के साथ यहाँ पर निर्धारित और यक्ष योद्धास के समाप्त हो चुके हैं। सो यक्ष योद्धास scored 34 runs for losing 4 wickets in the stipulated 5 overs, and now they set a victory target of 35 for Rangers. 5 overs, 35 they have to score in the stipulated 30 deliveries. That means in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 7 runs per over, 10 विकेटों की मदद से with the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them, और देखते हैं 35 रनों के लक्ष्य तक रेंजर्स के बल्लेबाज पहुंचने के लिए बल्लेबाजी में कौन सी रणनीति यहां पर अपनाते हैं यक्ष योद्धास के गेंदबाज के खिलाफ। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद रेंजर्स की पारी की शुरुआत होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ एक बार फिर से, जब यहाँ पर रेंजर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you very much, Gopi, and welcome back for the innings of team Rangers after their restricting the opposition for just 34 runs, and they got a target of 35 to win the match in the 5 overs. And wait and see how well Rangers will going to get this total. Thanks to the bowling performance of Rangers, they bowled really some tidy overs. Leading from the front, Vishwa is the one who started well along with his partner Ilyas. They're the opening bowlers. They really got a good start, and after that they never looked back. But in the end of the innings, some good innings coming from Hasim, so that they managed to get that competitive total of 34 runs. And wait to see how well Rangers will going to get this total. And opening batters already they made their way into the middle of the pitch. And Imran, everybody knows this man. Imran is one of the very good striker of the ball, and has got a lot of name in his performance, especially for. Every time when he's coming to the middle, he can do something magic from his bat. With the jersey number 10, always everybody knows that jersey number 10 itself suggests only the quality players wearing that jersey number 10. As god of cricket Sachin Tendulkar wearing that jersey number 10, and even football also wears Maradona, the legend footballer from Argentina, wearing the jersey number 10. And first ball, we're talking about the first ball. It's going to be a warm-up delivery of the afternoon, wide outside the line of off stump. Nothing much to do with the delivery batsman, just shouldering his arm, left the ball into the hands of wicketkeeper, back to bowler. Talking about the jersey number 10, even Messi also wearing that jersey number 10 of from Argentina, bowling right arm from the wicket, going for the reverse sweep, going that one, sending that one between Gully and the third man, and before the fielder from short third man division to run to his back. Ample time for the batter Imran to complete that couple of runs. With that couple of runs, they started their journey. I'm not telling that this journey is going to be that much of a tougher one if they bat sensibly, but the cricket, everybody knows that even the fielding team can win this match if they bowl well and fields well. 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. 3 on the board, correction, and from the far end, right arm over the wicket. Again, batsman plays it at one. Defensively played by the batter in the occasion. Actually, he wanted to play the reverse sweep, and good thinking by the bowler's point of view, as he just bowled outside the line of leg stump and keeps the batsman quiet. Again, going for the big swing of the bat across the line of the delivery. Good line maintained by the bowler. Nawaz in the occasion, seeing the intention of the batter very well, because little bit initial movement here from the batter. Just try to get that one into mid wicket and square leg region, but he missed it completely. Nawaz. Boss, this time he lofted, and he lofted handsomely. What a glorious shot that from Imran. This is what I'm talking about. The capability, the potential of this man. It's been outstanding cricketing stroke we can see from Imran. What a great shot that one from Imran. How easily he gets that one. It's unbelievable sometimes we can see it. Even for the left-hander, it's very difficult to play such kind of cricketing stroke. But the right-hander playing such kind of cricketing stroke, it's absolutely unbelievable. Scope moves on to 9 on the board. One more switch it, and one more huge one. That will go into be landed. Even the fielder in the back square like the deep backward point region is not seeing the ball where it is. And ball is just got a distance as well. 2 consecutive sixes. And with that 2 sixes, scoreboard now rapidly moves on to 15 on the board. 2 switch hits. One is for the very good delivery. One is for the full toss delivery. Imran is on fire. 15 what you're talking about, the total score is in the board. 35 we're talking about the target. That means another 20 runs required for the victory. And looks like the team desperately required a wicket here for Yaksha Yodhas. Nawal bowled him, cleaned him up. Good comeback here by the bowler. After that, conceding 2 sixes in the 2 consecutive deliveries. Then this time for the bowler Nawaz to take the revenge. Of course, there is no word called revenge in cricket, but comeback is very important for the bowler. It's not so easy when batsman going after you
And getting your line and length immediate is not so easy because you are always under pressure. And it's a really great comeback by Nawaz. But I think it's a good enough. It's a good enough 2 sixes for the team Rangers because they got runs what they really wanted. And after doing some damages in the early over, Imran back into pavilion. He played some small cameo. But when you're chasing a total score of 35 to win this match, these 2 sixes I think is a good enough to get the team into the track of winning this match. Surya is a new batter in with just in number 2. New bowler in is the Vaishak. Will going to bowl the second over from the far end. Surya is a new batter in. Mahi didn't got a strike in the first over. As we can see that all the deliveries is faced there by Imran. So still we can see there's a huge wind is passing in the middle of the ground. Absolutely not a wind what you are talking about. It's not a hot wind, but it's a absolutely cool breeze passing in the middle, making this condition so beautiful and enjoyable. Altogether, we can see that electrifying atmosphere here in this Ajman Malik cricket ground. We are seeing that in the 2 grounds the competition is on to get the place in the playoff round from the far end. Right, now over the get lofted. That one ball is there. The chance of the catch there for the deep long on fielder takes a catch. A very good judgment in the end. Once it looks like the fielder will go into misjudge that one because with the direction of the wind, it's not so easy for the fielder to judge the catch. But he managed very well to keep his eye on the ball till the last moment. The wicket number 2, which is back into pavilion of Ranger, and Mahi is out for duck. ಗಡ್ಡುದ ಬಿದ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. The new batter in is none other than one more fantastic all-rounder for the side of Ranger, Vishwakant. Already my friend Gopish mentioned about his very colorful and successful cricket career what he has got. One of the great all-rounder as far as the underarm and overarm cricket is concerned. Vishwa just walking towards the middle and nothing much worried about that 2 wickets because they're chasing a 35 to win this match. One small partnership which is good enough for them to win the match, but I think team Yaksha Yodhas have to do very well. This is one kind of sign of good cricketer, isn't it? You need to give some respect for the good deliveries. That one is absolutely good one. Perfect delivery to ball to the fresh leg when the new batsman coming to the middle, and Vishwanath realizing that you need to give the respect that one. Respect for that delivery. He played that one defensively down to cow point region. Lofted that one down to deep long on region for a walkable single. This will be a pummel from the fielder. They will definitely going to grab this opportunity of that pummel. And they're crossed off for a couple of runs. Good call from his partner. And Surya is the one seeing that pummel. That's why it's always going to be the non-striker's call. When you are seeing that the pummel just in front of that eyes of that batter, he will go and call for the second run. This time going for the full shot. Not quite getting hold of that one properly. Vishwakant is so good in that pulling the ball. But this time it's not that much of short enough. Maybe he's not really going back quickly to that short pitch delivery. And but he managed to complete the single there. With that single score, Namuzan to 18 on the board. Already half of the job which is completed. They need to complete another half of the job. That means 18 runs scored, 17 more runs required for the victory. Again, lovely cricket here from Surya. Sensible batting, and almost he knows that no need to panic at all. They got a very good runs on the board. Just a rotation of strike is good enough for them to win this match. Just a soft end comes into play from Surya to get the single. With that single score, Namuzan to 20 on the board. 19 correction. 19 after 18 one run scored. There's a 19 on the board, and that means they need to get another 16 runs to win this match.
Right, Magoyak slashes it hard down to deep. Backward point revision and protection is there in the deep, so that Vishwakant have to settle for the singer. Everything is going wrong here for the team. Yaksha Yodas. Again, that could be a fumble from the wicketkeeper. Couldn't manage to collect that throw from the field, and a couple of runs has been completed. With that couple of runs, Coburn moves on to 21 after completion of over number 2. After completion of over number 2, chasing 35 to win this match, Team Rangers are looking in absolutely in the driver's seat of winning this match. They got a 21 and they need to get another 14 runs to win this match in the remaining 3 overs. Just be talking about that cricket tournament without the support of the sponsors. It's very difficult to organize such a wonderful cricket tournament. And where title sponsors are Rangers and the Barrels. They are the one really backing up this cricket tournament. They are the backbone of this cricket tournament. The Rangers, in the sense, they are the Rangers General Transport LLC. And thanks to the proprietor of Rangers, Mr. Uday Shetty, for your contribution for this cricket tournament. The bowler is going to start from the far end. Sandy round the wicket. Right arm, Surya plays it back to bowler, not for run. Very good delivery indeed, forcing the batsman to play that one back to bowler. Almost in the block hold of the Surya there, and there is no chance at all for any run. Yes, if the team Yaksha Yoda wanted to back in the game, they needed 2 very good overs if they wanted to back in the game. Not only need to restrict the runs, but of course they need to get some wickets if they wanted to back in the game. Sandy again seaming in from the far end. Balls odds that take his edge. I think he gone. Absolutely fantastic bowling performance here from Sandy. We can hear the loud sound which is the ball has got at the contact with the bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest, back to behind the stump did the rest, and the batter back into pavilion. Wicket number 3 which is back into pavilion. Just like I'm mentioning about if a team wanted to back in the game, Yaksha Yoda, they needed to get some wickets. Just coming back to our sponsors, we're talking about our title sponsors, Rangers and Barrels. Even the Barrels are very prestigious. The Barrels group, and we're thankful and grateful for the proprietor of Barrels group, Mr. Abhi Shetty. They are the title sponsor for this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024. The 11th year successful cricket tournament is in progress. The main sponsor of this cricket tournament is Vidwan Oilfield Equipment Manufacturing LLC, and thanks to the proprietor Mr. Vidyanand Shetty for your support for the success of this cricket tournament. So Mahima Residency, our another co-sponsor, correction, Varaharupa, the one more our co-sponsor for this prestigious cricket tournament, Varaharupa Mangalore, and thanks to the proprietor Mr. Praveen Shetty. Back to the game. Oh, what a shot! One more magnificent struck. Never looks like this man is playing his first delivery, isn't it? It's going to be a miracle sometime. How the batsmen are playing such kind of cricketing stroke, even though he's playing his first delivery. And Sandesh is the batter. He just came in and delivered. Switch it, which is comes into play. And with that 6, Coburn now jumps into 25. That means that just 10 more runs required for the victory. Sandy. Balls catch, it is a call. Looks like might be a little bit opportunities created for the catch, maybe the reaction of the bowler. The ball just came into the glove of the wicketkeeper in a half volley. So no damage done, no runs scored. Still they need to get another 10 runs on the board. So far very successful cricket is going on here of this 11th year of Kateel Premier League 2024. Oh, what a delivery that one, but just missing the direction, isn't it? Extra deviation, extra bounce, extra deviation, because with the direction of the wind, sometimes very difficult for the bowler to maintain that line what they wanted, isn't it? Pitched outside the line of off stump,
bowling a leg cutter outswing delivery means it's again the ball going further away from the right-hander batter. And movement of the delivery very difficult for some time for the bowler to gain the line and length. And this time again improvisation nicely down to define aggression. The fielder will going to get that one because the ball is a little bit slowing down because of the heavy grass, and before the fielder from deep square leg region D1 to come across its right, ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, the score numbers on to 27 on the board. 28, that means another 7 more runs required for the victory. Lot of excitement going in the ground B as well. Again lofted in the switch it, but ball will going to land it safely between the backward point and the cover point region, between and enough time for the batter to complete the single. So 29 on the board after completion of over number 3. 2 overs remaining, 6 runs required for the victory. 6-4 da barso da birsugu mata serudu step nu padle agaddu da birdu da javanere gobbunu tule Kateel Premier League Kateel Premier League Kateel Premier League Premier League. Thank you, DJ. Thank you, DJ, for playing that very beautiful title song of Kateel Premier League 2024. The very beautiful lyrics in this title songs. We are really enjoyed. And again, the bowler will going to start from the commentary box end. The bowler Vaishak bowling his second and last over of his quota. Not that much of effective in this over, in the first over, but certainly wanted to get 1 or 2 wickets in this over if they wanted to keep the hope of winning this match. He needed one tidy over for the team. Yaksha Yoda again driven set to the hands of mid wicket fielder. There is no one there to collect the throw from that fielder, and Surya knows that the ball is went to the hands of a mid wicket fielder, but still there is opportunity to complete the single. Just 5 more runs away from the victory. That means 30 on the board, 5 required for the victory. Vishwakant back on strike. Again away from us. Balls. It looks like the bowler slight a bit of coming right in front of umpire, so sometimes it's very difficult for the umpire to see that wide outside the line of off time. 1 more addition, 31 on the board for the loss of 3 wickets in fact back into pavilion. 31 means 4 runs required for the victory. 1 more delivery which is called as a wide, 32, and without any effort from the batters, the bowler of the opposition team Yaksha Yoda, they himself they are giving some runs. Now 3 runs required for the victory. Bowler Vaishak slight a bit of struggling with his line and length. Maybe wanted to the ball outside the line of off time so that that's prevent the runs for his team. This time going for the full shot. Ball is in there. The fielder from mid-off will go. Oh, he's dropped the catch. The 1 more drop catches here, and again the overthrow. The Vishwakant will not going to go for the third as well. Third in that occasion. Lucky escape from Vishwakant. For Vishwakant, because what could be a wicket here for the bowler Vaishak. A slight a bit of misjudgment by the fielder. Just 1 run required. 1 required. Scores are level. 1 required for the victory. This time he lofted high up in the air. Opportunity for the fielder at mid wicket to complete the catch. And Vishwakant wanted to finish the match too early. But he wanted to finish that match in a style, but Mark couldn't manage to get the distance as he got elevation. And because he played that one very high, isn't it? He played that one very high, that's why the ball is travelled straight to the hands of that fielder at mid-wicket. But Vishwakant, nothing much worried about that wicket. They knows that they're very close to the target. Just 1 runs required for the victory.
So always going to be the early finish will going to benefit the net run rate. Arasa Warriors Baka Karma DJ challenges the extra player ನಕಲು ಇಡಬಾರದು ದಯಮಾಂತದ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾರ್ ಡಿಜೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. May request extra players of both the teams please be reported here immediately. So next match will be played between these two teams. This time they wanted to get the single again. They couldn't manage to get the single. The new batsman came into middle, Chamu. So bowler managed to ball one more dotted delivery here. So maybe they're thinking about if they manage to get a 6, they will go into extra 5 runs. That might be the game plan, because if he manage to hit a 6, they will go into get a 5 extra runs. That will go into get you this time away from the fielder, and they will going to boundary. The boundary, that means they are finish this match with the boundary, and comprehensive victory for the team Rangers defeated Yaksha Yodhas. Boundary, which is single by umpire, not a single, it's a boundary, because the batters are not completed that single. It's very important as far as the scoring department is concerned. It will going to influence the net run rate for each and every teams that runs. And yes, very good victory for team Rangers against Yaksha Yodhas. And now we are coming to the next match. Arasa Warriors takes on Karmar DJ Challengers. I request please get ready. Already the winning team, toss winning team, entered the ground there without wasting a time. They are absolutely good to see that they are supporting the organizers. Quickly they are entered into the ground, and we are just waiting for the two opening batters of Arasa Warriors to enter the ground. So before the match will going to start, another match. It's a time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. I request the openers of Karmar DJ Challengers please go for bat immediately. And I also request the extra player of Karmar DJ Challengers, extra player, please to be reported here to tell the player's name. Please. Yes. Sponsor Rangers. Sponsor not innings. Karma DJ Challengers ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು.
Openers, please go for bat immediately. Right, the match number ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ವನ್ ಟೀಮ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ವಿದ್ವನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದ್ವನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ವನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ, ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ 2024 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ತಂಡದ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. So the match started. First ball, just two missing of Sadio, stump and a wide declared by umpire, and that wide run brings the runs account open for Karmar DJ Challengers. It's one without loss. Two openers, Clevin and Nawaz. Clevin the striker, Nawaz the striker in fact, and this time he played that one but can't find the gap, और गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को रोक लिया. इस बीच रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. नवाज इस वक्त गेंद यहाँ पर खेल चुके हैं और गेंदबाज गुरुराज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर एक गेंद फेंक चुके हैं.
ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, शायद गेंद उनके जबड़े पर इस वक्त टकरा चुकी है। काफी तेज रफ्तार के साथ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आई थी, इस गेंद को पुल करना चाहा था, गेंद लगभग उनके माथे के नीचे इस वक्त टकराती हुई और इस बीच कोई क्षति नहीं। आखिरकार सौभाग्यवशात बल्लेबाज के लिए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद 2 बेहतर गेंदें यहाँ पर फेंक चुके हैं गेंदबाज और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस स्विंग्स एंड दिस टाइम जस्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस। मिस जजमेंट इस वक्त करते हुए डीप मिड विकेट के फील्डर, गेंद का सीधा उन्होंने इंतजार किया था और गेंद उनके आगे टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा उछाल ली कि छलांग लगाने के बावजूद गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेल नहीं सके और गेंद उनके हाथों को टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो ये चौका इस वक्त नवाज के खाते में जुड़ चुका है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है करमार डीजे चैलेंजर्स का 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कटील प्रीमियर लीग 2024 जिसकी शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजित किया है। कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई ने बैरल्स एंड रेंजर्स की प्रस्तुति है। इस सुंदर से हरे भरे विशाल से अजमान मालिक मैदान पर यह श्रृंखला प्रगति करती हुई इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से और 6 रनों के लिए। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त नवाज के बल्ले से डॉट 2 गेंदें खेलने के बाद चौका और छक्का इस वक्त लगा चुके हैं कर्मा डीजे चैलेंजर्स के लिए। जहां तक कर्मा डीजे चैलेंजर्स का सवाल है, श्रीमान दीपक जो कि इस श्रृंखला के माफ कीजिए श्रीमान दीपक जो कि इस फ्रेंचाइजी टीम के मालिक हैं, तो एक बेहतरीन कमेंटेटर भी जाने जाते थे अपने ज़माने के। मैंने मेरे साथ कुछ श्रृंखला में उन्होंने माइक शेयर किया हुआ है, बेहतरीन अंग्रेजी कमेंटेटर इस श्रृंखला में कर्मा डीजे चैलेंजर्स के फ्रेंचाइजी मालिक है दीपक। तो उनके सारथ्य में करमार डीजे चैलेंजर्स यहाँ पर खेलने के लिए उतर चुकी है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत नवाज इस वक्त दे चुके हैं करमार डीजे चैलेंजर्स के लिए। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को इस वक्त कट करना चाहता चूक है, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकली और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 2 इस वक्त बज चुके हैं। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों पर नजर आता हुआ नीला आकाश तले अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और बिल्कुल ड्राई ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. तो बिल्कुल ड्राई वेदर, बिल्कुल सूखा वातावरण इस वक्त नजर आता हुआ और बादलों का नामो निशान जरूर मौजूद है, लेकिन वर्षा के बादल नहीं, बादल के चंद टुकड़े नीला आकाश तले इस वक्त नजर आते हुए, लेकिन यहाँ पर खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार सही गेंद घोषित, अंपायर द्वारा सही निर्णय। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है करमार डीजे चैलेंजर्स, 11 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। इट्स 11 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर, pretty good start for Karmar, 12 in fact, 12 without loss, pretty good start for Karmar DJ Challengers after being losing the toss and put it to bat by Arasa Warriors in the match number 9 of this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024. So back to this match, exactly 4 overs remaining in overall calculation in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज यहाँ पर और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो काफ़ी विशाल सा हरा भरा मैदान, आसमान मालिक मैदान जो कि कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है और यहाँ पर एक और बेहतरीन और मशहूर श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई कटील प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत, जिसकी शानदार तरीके से आयोजन कर चुके हैं कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई बैरल और रेंजर्स की प्रस्तुति है। कटील प्रीमियर लीग 2024 न सिर्फ खेलों में बल्कि कई सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने अपना हाथ बटाया है और निस्संदेह भविष्य में हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि और भी ये क्लब जो है, ये संगठन जो है भविष्य में और भी उन्नति करे और कई समाज कार्यों में अपना हाथ बटाए और निस्संदेह सफलता के बुलंदियों पर यहाँ पर
कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई पहुंचे सामाजिक कार्य और खेल के जरिए। तो इस उम्मीद अपेक्षा के साथ हम यहां पर इस मैच के अगले ओवर की ओर बढ़ते हैं। इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, गेंद को खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल कलेक्टेड बाय द फील्डर इन बिटवीन वाइड लॉन्ग ऑन एंड डीप मिड विकेट, बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर, और 13 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज इस वक्त रिजवान गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज जो कि बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सामना करने के लिए तैयार। 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रिजवान फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट विकेट कीपर करते हुए, और रिजवान इस वक्त तैयार नवाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए, ऐसा कहना पड़ेगा। दिस इज एन स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट। नवाज दौड़े थे, उन्होंने पूर्वानुमान लगाया था कि शायद फील्डर गेंद को फेंकेंगे स्ट्राइकर रन की ओर, लेकिन फील्डर ने काफी चतुरता के साथ इंटेलिजेंटली उन्होंने फेंकी थी गेंद नॉन स्ट्राइकर रन पर, और जैसे ही नवाज ने भापा कि थ्रो नॉन स्ट्राइकर रन पर उनकी छोड़ की ओर पहुंच रहा है, अपने दौड़ के तेजी को उन्होंने बढ़ाया, और आखिरकार इससे पहले की गेंद स्टंप्सों पर टकराए बल्लेबाज पहुंच चुके थे। तो यहां पर आसान से रन बन सकता था, लेकिन मुश्किल के साथ यहां पर पूर्ण करते हुए बल्लेबाज नवाज ये गेंद इस बार अपील, गेंद को शफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 14 रनों पर। सामना इस वक्त करते हुए क्लेविन, और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जहां तक सवाज रिजवान और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ जमावट करते हुए विकेट कीपर, और इस बीच रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार क्लविन के लिए। यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से नहीं मिला, और गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। काफी तेज हवा मैदान पर चल रही है, मैदान की सीमा रेखा के बाहर अपने मैदान के बाईं ओर जो झंडे गाड़े गए हैं, वो झंडे जिस तरह से लहरा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख काफी तेज है। मैदान के बाईं से दाईं और हवा इस वक्त गुजर रही है, और ये जो हवा गुजर रही है न सिर्फ खिलाड़ियों को बल्कि दर्शकों को भी इस भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत यहाँ पर दिला रही है। और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कटील प्रीमियर लीग 2024 की 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। गेंद को ढकेलना चाहा इस वक्त, 2 कदम आगे निकले लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, और गेंद उनके बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज रमीज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। एक और बेहतर ओवर, अगर ऐसा कहना पड़ेगा असर वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, अरसा वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 रन कहना पड़ेगा यहाँ पर। इस ओवर में 2 रन रिजवान ने प्रदान किए, ही कंसीडर्ड जस्ट 2 रन्स इन दिस ओवर, और 2 ओवर के बाद 15 रन, माफ कीजिए 14 रन इस वक्त जोड़ चुका, 14 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs स्कोर्ड बाय कर्मा डीजे चैलेंजर्स against Arasa Warriors after losing the toss and elected to bat first in the match number 9 of this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024. तो इस वक्त जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए प्रशांत शेट्टी, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए। कई मैचेस इस मैच के बाद खेले जाने हैं, तो इस वजह से मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल। और इस बीच प्रशांत शेट्टी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, सामना करते हुए नवाज बाएं हाथ के बल्लेबाज, और फील्डिंग में
कुछ हद तक सजावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेलने का प्रयास, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन की संभावनीयता को पूरी तरह समाप्त किया। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज प्रशांत एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज नवाज इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार दिस स्विंग्स दैट वन, इट्स गॉन मेनी अ माइल्स फ्रॉम द फेंस। लंबा छक्का यहां पर लग चुका है। कटीला अप्पन कईयेर्द सुगितुग कलकु जत्तिना जवनर तुले 6-4 दा बरसोदा बिरसुग माता सेरद स्टेपन पाडले ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್। तो मिडल एक्स्ट्रा पर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमारे का सवाल लंबे छक्के के लिए नवाज ने, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। एक बार फिर से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, फील्डर काफी पीछे तैनात, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और एक रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 21 रनों पर 21 विदाउट लॉस। दिस थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक संभल चुका है एक धीमी शुरुआत के बाद। यहाँ पर कर्मा डीजे चैलेंजर्स और 2 ओवर का खेल अभी भी, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल, तो कर्मा डीजे चैलेंजर्स के लिए कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर 40 का आंकड़े तक पहुंचना जरूरी बन चुका है, या फिर 40 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा यहाँ पर अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज करमार के 40 के आंकड़े को पार कर पाते हैं या नहीं। तो इस बीच गेंदबाज प्रशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए क्लेविन सामना करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बीच गेंद सही घोषित की गई है, कोई निर्णय नहीं अंपायर द्वारा। हालांकि अंपायर 2-3 कदम अपनी दाईं ओर आए जरूर, और लेकिन अंतिम क्षण में इस बार तो अंपायर नो वाइड। तो एक रन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और प्रशांत इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 15 गेंदे उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं, 15 गेंदे और फेंके जाने बाकी। और इस बीच क्लेविन सामना करने के लिए तैयार प्रशांत की गेंदों का। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 22 विदाउट लॉस। And this is the third over in progress in the innings. 2.4 overs gone in the innings. Still 2.2 have to come. और देखते हैं इन बचे हुए 14 गेंदों में यानी 2.2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। लास्ट बॉल लेफ्ट इन फैक्ट, इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। तो अंतिम गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, और प्रशांत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 23 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। स्कोर बोर्ड इज 23 विदाउट लॉस, और इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, शायद वहाँ पर
फील्डर के हाथ को कुछ मरम्मत यहाँ पर करते हुए खिलाड़ी बल्लेबाज के हाथ को कहना पड़ेगा और एक बार फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर में अंतिम बार प्रशांत शेट्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नवाज इस वक्त सामना करते हुए। नवाज का जहां तक सवाल है, बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक वो दे चुके हैं। फुल टॉस के तौर पर गेंद, लेकिन लो फुल टॉस, और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकराई। आई थिंक इट्स नो, इनफैक्ट इट्स ऑफ द लेग। एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका। 24 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुका है। 3 गॉन, 24 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन फॉर करमार डीजे चैलेंजर्स। ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೇ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್। तो इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए रिजवान कोडी, नया ओवर प्रारंभ होता हुआ यहां पर करमार डीजे चैलेंजर्स की पारी में, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नवाज, और पहली गेंद लेकर इस वक्त रिजवान कोडी गेंदबाजी करते हुए नवाज के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा एंड लॉस्ट स्टंप्स। गेंद सीधे टकरा चुकी है ऑफ स्टंप पर, लेग स्टंप पर कहना पड़ेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो लेग स्टंप कहलाता है, तो गेंद सीधे गेंद जा टकराई इस वक्त लेग स्टंप पर, और गेंदबाज ने बल्लेबाज को पहले भाप लिया था कि रिवर्स शॉट खेलने वाली है। बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट पर गेंद को टिप्पा खिलाई और गेंद सीधे स्टंप पर टकराई, फिर डिस्टर्ब होते हुए। नवाज की बेहतरीन पारी पर पता गेंद 18 रन स्कोर पर नवाज। सेकंड विकेट लॉस्ट फॉर करमार डीजे चैलेंजर्स। इट्स 24 for 2। ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯೇರ್ದು ಸುಗಿದುದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನೆರ ತೂಲೆ 6-4 ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೇ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್। तो धीरज का आगमन होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 24 रनों की आरंभिक साझेदारी क्लेवन और नवाज के बीच में टूट चुकी है। नवाज के रूप में बोल्ड आउट होकर पेविलियन वापस रिजवान कोडी की गेंद पर, और उनका स्थान ग्रहण करते हुए नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रिजवान कोडी की गेंदों का। और रिजवान अगली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा करमार के बल्लेबाजों को। अगर उन्हें बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो गेंद पैरों पर टकराई, इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा था
और फुल टॉस के तौर पर गेंद थी और गेंद इस वक्त जब तक पॉइंट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा। डीप फाइन लेग से दौड़ कर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रन पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थ्री बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। अगली गेंद को खेल दिया इस वक्त। गेंद पहुंची मिड ऑन पर 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण करते हुए बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन काफी तेजी के साथ पूर्ण किया और उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई दूसरा रन प्राप्त करने में और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और रिजवान कोहली इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट धीरज के लिए तैयार। 10 से 12 कदम उनका रनअप। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैर पर गेंद टकराई, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, थ्रो पहुंचा, थ्रो चूका इस वक्त निशाने से और इस बीच जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके थे। 4 ओवर की समाप्ति 30 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। तो अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार। टॉप एज मौका खुद गेंदबाज के लिए, फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। दूसरा विकेट गिर चुका है। धीरज की पारी समाप्त 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4 ओवर्स कंप्लीटेड and just a last over left in their innings. Cleven the batsman dismissed and it's 34-2 after 4 overs with 1 over remaining in their innings in overall calculation. Next match. ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. 30 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್, 4 overs completed. Last over remaining. Kaushik, the bowler, is now brought into the attack. और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार धीरज, जबकि यश नए बल्लेबाज के तौर पर इस वक्त उतर चुके हैं, नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और फील्ड में कुछ हद तक सजावट करने के बाद कौशिक पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट खेलना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंदबाजी की थी उन्होंने, वाइड का इशारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। इनफैक्ट बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्टी बॉलर कौशिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुल गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था। गेंद इस वक्त अंतिम अक्षर में कुछ हद तक धीमी रहती हुई गेंद पर स्ट्रोक ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला जब तक विकेट कीपर अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 32 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। पहली बार यश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार कौशिक की गेंदों का और कौशिक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार यश के लिए। ये गेंद उछाला डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग। कटील प्रीमियर लीग के इस 9वें मैच में ये छक्का इस वक्त झड़ चुका है यश के बल्ले से। ऐसा कहना पड़ेगा, इज जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट and dispatched it in a style over deep mid wicket fence for a huge one। और 38 रनों पर
स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। अगली गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, 1 रन मिलेगा एंड विद दैट सिंगल द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट in the over number 5th and the last in progress in their innings. Just 2 balls left. 3 balls left in fact in this over. 3 balls left in this over. तो इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर कौशिक इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा एक बार फिर से, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर। तो 40 के आंकड़े का पूर्वानुमान लगाया गया था एक बेहतर स्कोर के बारे में अगर कहा जाए करमार डीजे चैलेंजर्स के लिए, और 40 के आंकड़े तक वो पहुंच चुका है और देखना है कि उनके गेंदबाज इस 40 के आंकड़े को बचा पाते हैं नहीं जब वो गेंदबाजी पर उतरेंगे। लॉफ्टेड इस बार फील्डर के लिए मौका, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हैं लेकिन कैच को लपकने में असफल, थोड़ा सा मिस जजमेंट और आखिरकार पीछे दौड़ने के बावजूद गेंद के नीचे आ गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल, और ये जीवदान के साथ साथ 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हैं। इसका लाइफ एंड कपल रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। तो कुल मिलाकर 2 गेंदें अभी भी बाकी, और कौशिक इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, एक और रन मिलेगा। रन इस वक्त चाहिए करमार डीजे चैलेंजर्स के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए करमार डीजे चैलेंजर्स के बल्लेबाज रन्स जोड़ने का, रन्स बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए, और कौशिक तैयार यश के लिए। Lofted this time I think it could be taken just inside the fence and taken comfortably. इस बार स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं था और गेंद ऐसा कहना पड़ेगा अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर के हाथों में लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज धीरज, और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है जबकि स्कोर है 43 रनों पर। अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में, 43 for 3 now and now just the last ball left. So Suryakant is now going to face the final delivery of their innings, and Kaushik have to bowl the final delivery of the innings of Karma DJ Challengers. और अंतिम गेंद लेकर कौशिक तैयार सूर्यकांत के लिए, उनकी पारी की अंतिम गेंद। The last ball of their innings is now coming up. फुल टॉस, गेंद तक पहुंचे इस वक्त, गेंद को ड्राइव कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए क्लीन कलेक्शन, बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ पड़े, अंडरआर्म थ्रो पहुंचता हुआ लेकिन थ्रो में उतना तेजी नहीं, और इस बीच बल्लेबाज 2 रन यशस्वी पूर्ण कर चुके हैं। तो सो देयर स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड and Karma DJ Challenger managed to score 45 for losing 3 wickets in the stipulated 5 overs, and now the target for Arasa Warriors is 46, 9.20, the required rate for them in exactly calculation. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. The present equation shows for them 46 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में, 46 टारगेटेड 5 ओवर्स, और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर अरसा वॉरियर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे। थैंक यू, धन्यवाद। ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಗೇಮ್ ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪೆನು ಕೈ ಏರ್ದು ಸುಗಿತುದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನರ ತೂಲೆ 6 4 ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ
edge of the bat. It is a really good thinking here from Suryakant, just pushing the batsman onto the front foot, try to get some edge of the bat. Right, Amabadu again off the back foot, plays it down to short cow point region for an easy single, walkable single for Tausif. With that single, he's open the innings with that single. Scoreboard numbers on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. I request the captain of Karavali Auto Garage, please report here immediately. Dayamantu Dalpa, Karavali Garage Neta, Karavali Auto Garage Neta, Captain Nayak, Ramesh Rayanat Vegade Barodu. Tossgoskara, United, correction, Dubai Indians, Neta Captain Nikhil Katandulle, Dayamantu Barodu. Again, wow, that was absolutely misunderstanding between two fielders. Ball running down to deep, third man boundary, and well saved by the fielder. But here is ample time for the batter to come back for the 3. With the fielder down at the deep back point and third man. Little bit I have a confusion that who will going to field the ball. By doing that, ball is just passing between the two fielders. But a very good job done by the fielder at the deep cover point region to run across. He's made a lot of ground to cover that to stop that boundary, but managed to stop the ball. The 3 runs which is scored in between. 55 on the board in the over number first is in progress. Again now bowler from the far end, right arm over the wicket. Again going for the full shot, not quite getting hold of that stroke properly, but good enough for him to get the single. Even they can look for the second, and they completed quite easily in the end. Yes, he just wanted to get that one. He was standing at short fine leg region, just going back, but couldn't manage to stop the couple of runs. And with that couple of runs, Kobana moves on to 7 on the board without loss of any wicket. Yes, first over comes to an end, and we have one more special guest in this prestigious cricket tournament, Kateel friends, Kateel Premier League 2024, and we have one of the most popular as well as a legend player, one who represented for Mangaladevi cricketers for a long time from Mangalore, my close friend as well, and he is here in our commentary box. It's none other than Prasanna, and I welcome him heartily for this prestigious cricket tournament. And he is the one is dominated during 80s and 90s as Mangaladevi cricketers, dominating in under-arm cricket, and he is one of the best wicket-keeper batsmen and very stylish batsman as well. Not only in under-arm cricket, but he's got a lot of name and fame in over-arm cricket as well. So it's going to be a proud moment for me meeting him in this prestigious cricket tournament. Thank you very much, Prasanna, for coming here from long way. So now coming back to this match, the wicket number, over number 2 will going to start from the far end. Vinay Mudrangadi will going to start from the far end, and the left hand batter will go into face. Known to be a express of Mudrangadi, and wait and see how well he going to justify the nickname of Express, and needed some wickets, and also we can see just wait and see. First ball outside the line of off time, nothing much to do with the delivery, which is going to be a wide because the ball is just missing the direction, going away from the left hand batter. One more addition to total addition of that single scope, and moves on to 8 on the board without loss of any wicket. For the latecomers, you are watching one of the most prestigious cricket tournament in the name of Kateel Premier League 2024, which is proudly organized by Kateel Friends Cricket Team Dubai in this beautiful venue. Oh, what a delivery. What you were talking about, the Express is just justifying the name because of it's almost surprising the batsman, and looks like he wanted to get that one around the legs of the batter. The batsman almost wanted to get that one to the mid-wicket region, but seeing that line, which is all Yorker line, maybe that was outside the leg stump, but it is good enough for the bowler Vinay to get past that ball around the legs of the batter, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Vinay again seaming in from the far end. Right about the wicket. Again, this ball is going to be a wide and a misjudgment by the batsman. Little bit surprise for the bowler to call that as a wide, but umpire says that it's a wide delivery. The umpire decision is going to be a final. The scoreboard is moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Vinay?
Umpire just explaining the bowlers. Please don't waste the time. I request both the teams and fielding team. We are already late. We are just wanted to finish this. All the matches between before that 9 o'clock, but we have wanted to complete even prize distribution ceremony as well. After need to complete 19 matches today, so your cooperation is much required to make this cricket tournament very successful one. Vinay again from the far end. Once again a lovely delivery. They're going for the single chance of run out, but ball is not really coming to the hands of a bowler on his follow through. Leg by call by umpire with the addition of that leg by Scobar Namuzan to 10 on the board. Coming back to the some teams which is participating in this cricket tournament, thanks to the owners of the teams, because without the support of the owner of a team, it's very difficult to organize such a big tournament, because they are the one, absolutely the backbone of the success of this cricket tournament. We are once again thankful and grateful for the owners of all the teams which is participating in this cricket tournament. So far here is team Karmar is playing, thanks to Deepak, the owner of Karmar DJ Challengers, one of the most familiar face, as well a very good human being. First ball, next ball, right arm over wicket, nicely plays it down to cow point region. They're running hard. There's a absolutely very good sensible batting. Just a soft end comes into play. You know exactly there's no cow point, but by fielder is in a deep extra cover. You need to run a lot to front if you wanted to collect the ball. So ample time for the batter to complete that couple of runs. And Tausif managed to get that couple of runs. It's a huge ground, isn't it? Just seeing the dimension of this cricket ground, it's a huge ground. So if you play the ball in the gap, always the opportunities created to get some convert the single into twos into threes. And this was sometimes the sensible batting is very much important, along with some big shots. Tausif is batting on now 5 in fact, and Kaushik is also batting on 3 from the far end. Vinay. Right above again, lofted at one in the air, but safely landed after one bounce collected by deep cow point fielder. And again the ample time for the batter to complete the single. With that single, Scobar Namuzan to 13 on the board. So 13 on the board. Target what you are just once again mentioned here, 46, which is going to be a target for team Arasa Warriors. Arasa Warriors have to bat like a Warriors, and need to justify the name why they are given. And even Karmar, they loves to play with the challenges. This time driven that one up easily down to deep mid wicket, boundary for 4 runs. Lovely shot, good placement, loose delivery, absolutely the punishable delivery there for Vinay. And batsman, I have to say thank you very much, my dear friend, for this full toss delivery, and dispatch that one down to deep mid wicket for 4 runs. With that boundary, Scobar Namuzan to 17 on the board without loss of any wicket. So good going, and the second over is in progress. 17 on the board. Each and every run going to be very crucial here for team Arasa Warriors. So team Karmar DJ Challengers have to be very careful, and by conceding runs. Vinay again from the far end. Balls again, they wanted a single there, but there is no possibility of any, let's make the correction, the possibility of one run there. And with that single, Scobar Namuzan to 18 on the board. 2 overs completed, and then 2 overs completion, that means another 28 more runs required for the victory. 28 required for the victory in 3 overs. That means the equation as concerned, 18 balls and 28 more runs required for the victory. The asking run rate 9.33 runs per over. It's not looks like it's going to be that much of a difficult one, seeing the condition of this cricket ground, where it is having a lot of winds which is passing in the middle of the ground. It's definitely going to be advantage for the batters. Coming back to Deepak sir, we are talking about is the owner of Karmar DJ Challengers, but he is the one who run Youth Association Karmar in Padil, and organized some very good events. He's a very good supporter of sports and games, who has promoted the sports. Especially he organized throw ball tournament. I request the fielding team to make it past. Just talking about Deepak sir, he is one is organized
women's throw ball tournament in during year 1992 to 2000 in Karmar, and he is leading from the front, promoting the sports and games. And at the same time, in the 90s and 2000, he is the one is taken his team youth Karmar into a very good teams in the Mangalore, and with the combination of some players of Reliance Cricketers Jaipur, they won some good titles and very prestigious titles as well. So it's a very good familiar for us, and when he was doing a great job in Karmar, and along with the Deepak, I think the Prakash is the one more the backbone of that Youth Association Center Karmar Padil. So coming back to this match, the over number 3 will going to start from the far end. Right arm over the wicket. This time going for the full shot. Ball is in there. Opportunity is created for the catch, and he drops the catch. And even the fielder managed to stop the boundary. Another fielder and was coming from a mid-wicket region, and a couple of runs which is completed. Catches win the matches, which is the greatest slogan of cricket. Without taking a catch, it's very difficult to win the match. But it is not that much of easy, I want to say. With the direction of the wind, it's not really very difficult, because ball is almost rotating with the direction of the wind, and judgment is always going to be the key here for the fielder to take the catch. And a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves under 20 on the board. Again, swings and missed. The good thinking from the bowler's point of view. Yash knows that the batsman is going for the big shot, because there is a lot of advantage for the left-hand batters. If you see that the direction of the wind is flowing towards the right side of the left-hand batsman, always loves to play the down at mid-wicket and deep square leg region. This time full toss delivery, no ball, called by umpire because of the height of the delivery. It is just over the waist level. So rightly so, square leg umpire quickly saying that it's a no ball. So going to be a wonderful opportunity for the batter to take the advantage of that free hit delivery. So with that 1 + 1, 2 more to the total. With that couple of runs, Koban moves on to 22 on the board. Free hit delivery, umpire signal. It's going to be opportunity for the batter to take the advantage of that free hit delivery. Tausif got an opportunity to play that free hit delivery. Yash. Right, over the wicket, driven that one now nicely down to deep long off region. Not more than single, looking for the second. In comes the throw coming from the deep end. Always the return is very important, isn't it? They need to have a good arm when the fielders fielding in the deep region, and because of that throw which is not really having enough power, both the batters are complete dead couple of runs. Very good understanding between the wicket, no hesitation at all. And especially the Kaushik, I think, is the one is running towards the danger end after completing that first run. It's not a so easy condition. In the hot condition, running between the wicket is always going to be a big challenge. Right, I'm over the wicket again, going for the reverse stroke, but missed it completely. Slight a bit of bat which is involved, so that one more addition to total. With that addition, that singles Koban moves on to 25, quarter century. That means another 21 more runs required for the victory. It's going to be anybody's game, because just I want to see how many delivery remaining in this over. 2 balls remaining. That means altogether 14 deliveries remaining, and they need to get another 21 runs to win this match. Again, shouldering his arm, rightly so. Ball is just missing the direction, going far away outside the line of off stump. Maybe the Yash is trying for the short pitch delivery outside the line of off stump to try to beat the bat, but he couldn't manage to hold his line where it's going away from the left hand batter. 26 on the board. 20 required, lofted, and it's going to be opportunity for the longer fielder. This time he got a wonderful running catch by the fielder. It's absolutely a fantastic catch, I want to say, because it never looks like it's going to be the fielder will going to take the catch, will going to land it safely in front of the fielder. But way that is keeps his run and kept his eyes on the ball till the last moment, just below the knee level. He's managed to take that catch and responsible for the dismissal of a danger batsman Kaushik into the pavilion.
contribution of 11 runs from the bat of Kaushik, and so now 26. They lost their first wicket after that laid the foundation. First wicket is back into pavilion. To 26 on the board. Shiva is a new batter in. He will be the striker. Shiva will go to face Yash. For Shiva, there is a man at deep square leg, one at deep long on. The two fielders outside the circle in the onside division. Right, I'm over the wicket going for the bull shot. They want to run there, but his partner is not interested. Understandable, because he wanted to keep the strike, Taushif, for the next over. After completion of over number 3, chasing a total score of 46 to win this match. Team Arasu Warriors are 26 on the board. That means in 2 overs they needed 20 runs to win this match. The asking run rate of exactly 10 runs per over. 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅರಸು ವಾರಿಯರ್ಸ್ 26 ಅಂದರೆ 20 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. So it's going to be anybody's game, I want to say. This over is going to be very crucial for both the team. This is going to be a decider over, because if any ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ ನಂಬರ್ 83196 83196 ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಗಾಡಿ ಎಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ 83196 Toyota car owner, please remove your car from that area. Just information coming here. Again the bowler will go and start decider over. Down the wicket, balls lofted. What a shot! That will be a magnificent struck. Oh, that was a really unbelievable, isn't it? Quite effortlessly played. Just in a roll of the wrist which comes into play from the batter of Tausif, and he is just clearing the ground quite effortlessly. If you see it in a replay, if you see the replay of this cricketing stroke, it's unbelievable, isn't it? Just using the pace of the bowler, just enough, good enough for him to roll his wrist, and with that strong wrist, he's dispatching that one down to mid-wicket for a 6. Sometimes it's going to be a hurting factor for the bowlers. Even good deliveries will go into dispatch to the fence with some good technique of the batter. 32 on the board. And that 6 will go into release the pressure straight away. 14 required from 11 balls. Right, I'm around the wicket again. The full toss delivery swings that one down to deep square region. The fielder have to chase that one, need to cut that one. But before the fielder from the deep square leg to run to his right behind the square, and ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that couple of runs covered, now moves on to 34 on the board. For the loss of 1 wicket. Looks like a team Arasu Warriors, maybe after that 6 they are almost came into this game, but some kind of miracle bowling which is required here from the bowlers if they wanted to stop these 2 batters not to get the remaining runs. That is what you're talking about. 12 more runs is required for the victory. Vinay away from us. Right, around the wicket, balls driven that one very nicely down to mid-wicket region. They're coming for the second. In comes a throw. What a throw! Absolutely fantastic throw indeed. But have a look at that disappointment here from Shiva, because he is the one who is running towards the dangerous end, isn't it? He is the one who is running towards the dangerous end. He taking the risk, and that's why Taushif might be. It was not a good call for him. He's staying there only, not responding for Shiva, and unfortunately he's back into pavilion.
Just only one run here. 35 on the board. That means 11 runs required for the victory in remaining 9 deliveries. Nine to go, 11 to get. 9 to go, 11 to get. Will it go into a little bit open the gate here for team Karmar? Karmar DJ Challengers knows that. I already mentioned this over is going to be very crucial for both the teams. And now the new batter is in strike, Guru. Right around the wicket. Tick is outside edge of the bat. Absolutely unfortunate. The wicketkeeper may be a little bit early into that jump as a ball which is got a thickest outside the edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump just got a jump, but it's not good enough for him to reach that catch. And one more run which is completed. With that single scope, it moves on to 36. So just looks like, oh my goodness, it's not a good area sometime for the players, and considered to be one of the softest part of the body, and is always going to hurt. So after getting some first aid, looks like the wicketkeeper is got ready here, and it's not easy sometime, and the very much required the abdominal guard is very important for the wicketkeeper sometime to survive. Again, right arm around the wicket, he bowls again, a draw, lofted, loose delivery, and he just the catch, what it looks like it's going to be an opportunity there. Once I thought it might be a maximum, but fielder is got underneath it and he drops the catch. Just a single run taken here. And one more catch which is dropped by the fielder. 37 which is the total score. Which is the total score. The bowler will go into ball away from us, Vinay. Right around the wicket again, lovely delivery in the batsman going for the quick single, and they managed to complete very well with that single score. And moves on to 38 on the board. That means 8 runs required from the last over. So 6 ball, 8 runs required for the victory for team Arasu Warriors against Karmar DJ Challengers, and it's going to be a very interesting, and I request the fielding team to continue this match as quick as possible. We have taken a lot of time in this match, and they will need to decide which bowler is going to bowl that last over. The last over is going to be decider over, and they need to pick one good bowler here to restrict the batsman of the opposition team. Coming back to some news here, one more good news here for the cricket lovers. There will be the auction for the Dubai Indian Premier League Season 1, and Dubai Indians Premier League, in the name of Dubai Indians Premier League Season 1, will going to start very soon. I request the fielding team to make it fast, and just the auction will go into commence on Sunday, February 4th, and 4th of February 2024 in 3 p.m. onwards at Pridoy's Restaurant Cafe ground floor, and at Hotel Fortune Atrium Hotel Burj Dubai on 3rd March of 2024 at DC ground
The match date will be the 3rd March, in fact, and auction date will be the 4th February 2024. I request the umpires to continue this match, make it fast. So all are invited for this auction ceremony, the players auction, and find your best player to this prestigious Dubai Premier League. DIPL, in the name of DIPL. So everyone is invited for this Dubai Indians Premier League Season 1 2024. Here is a last over, 8 required. First ball lofted, and it's going to be opportunity again created, but one bounce into the fence. You can't do the mistake by pitching the ball in front of you when you're standing in that long area, because ball absolutely has got hard enough to get the extra bounce to defeat the fielder. Went into the fence for 4 runs. 42, that means 4 runs required for the victory in 5 deliveries. The first delivery itself, Guru released the pressure by hitting that magnificent boundary. Even though they're having 3 fielders in the deep, mid-wicket, cow corner and long on, but still he managed to get that gap between long on and mid-wicket, that is in the cow corner, and one of the difficult places for the fielder. So again the bowler around the wicket, balls pulls that one and down to deep mid-wicket region and drop the catch. Again good attempt in any off from the fielder at deep square leg in front of square, and they're going for one more extra runs, and they completed. So with that 3 runs, I think the scores are level. Scores are leveled, 45 on the board. Just we are talking about that DIPL, Dubai Indian Premier League. The registration will go into close in the 30th of February. Please note that the players registration will go into close in the 30th of February. Before that you need to register your name. Again pulls that one, finish the match in a style, right. The fielder at deep square leg again had a good jump, again the ball defeating these trying hands. The victory comes up here for Arasu Warriors. They defeated their opposition by 8 wickets. Congratulations for the winners. Hard luck for losers, Karma DJ challenges, but they got a chances here to bounce back, and let's wait and see how well they're going to bounce back in the next match. We'll take a short break here, and after a short break my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you, thanks a lot. The man of the match, which is goes to Rizwan Kodi for his outstanding performance, as they bowled a fantastic over and changing the complexion of the game with some excellent overs. He picked up 2 valuable wickets in this over, and great bowling figure as well from him. So thank you. Kateel appenu kaiyerdu sugitudu kalaku jattina javaneratule 6-4 da barsoda birsugu mata serudu step nu paadle agaddu da birdu da javanere gobbunu tule Kateel Premier League Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League.
हेलो 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 ಮುಂದಿನ Dubai Indians, ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸುಕೇಶ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ Hello. 12th man of Dubai Indians and Karawali Auto, please come into the commentary box. सीमा रेखा को पार कर चुके 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 4 रन बिना किसी नुकसान के सैंडी इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। सलीम इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करते हुए और
जहां तक का सवाल है इस वक्त ऑन साइड के फील्डिंग के नजरिए का, तो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त, माफ कीजिए डीप ऑफ साइड का फील्डिंग के नजरिए का, तो डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद है। और इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद इस वक्त जा चुकी है विकेट कीपर के हाथ में। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और इस धीमेपन पर चकमा खा गया और आखिरकार बल्लेबाज को इस गेंद पर रन नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिनात ओवर द विकेट, गेंद को पुल कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर, सर्टेनली दैट वाज एन 6। अगर अंतिम क्षण में यहां पर फील्डर ने अपना हाथ नहीं अड़ाया होता तो निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी फ्लैट वर्जन पर छक्के के लिए, लेकिन यहां पर बेहतरीन स्टॉप इस वक्त किया था लॉन्ग ऑन फील्डर ने और इस बीच सिर्फ रन्स मिले 1 और इस 1 रन के साथ 5 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। करावली ऑटो गैरेज और दुबई इंडियंस का मुकाबला जो कि यहाँ पर जारी है। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो 4 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी हैं और 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फुल लेंथ गेंद, थर्ड मैन की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे और गेंद को वहां पर थर्ड मैन पर फील्ड कर लिया गया है। स्कोर इस वक्त नहीं मिला, 5 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना 6 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ सैंडी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, अगर उस 1 रन को एक्सक्लूड करके अगर देखा जाए, उस चौके को एक्सक्लूड करके अगर देखा जाए, तो अब तक इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी गेंदबाज सैंडी ने की है और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए डीप मिड विकेट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड द बॉल रेजिंग टुवर्ड्स द फेंस एंड इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। फैंटास्टिकली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ रमेश। थोड़ा सा विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए ऑफ द बैक फुट गेंद को पंच कर दिया कुछ खूबसूरती के साथ। कवर पॉइंट फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकली और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन बिना किसी नुकसान के और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त रमेश के बल्ले से लगता हुआ। तो पहले ओवर की समाप्ति 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाज जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुकेश और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलीम के लिए। तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದವರು। So the scoreboard stays at 10 without loss. Second over starts और सुकेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद डाउन द ट्रैक जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस विकेट कीपर जस्ट बनाते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है कट बिहाइंड के रूप में। Just comes down the track, wanted to loft that one, he's got a deflection on that and wicket keeper behind the stumps made no mistake. हैसियत से इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुकेश की गेंद का। तो सुकेश पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं सलीम का, आगे निकले थे गेंद को उछालना चाहता, आक्रामक स्ट्रोक का खेलना चाहता, लेकिन चूके और बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के दस्ताने में। कॉट बिहाइंड द विकेट के रूप में विकेट जो कि गिर चुका है।
ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद हल्के से गेंद को ढकेल दिया ऑफ द बैकफुट पंजों पर उछलते हुए और जब तक गेंद को कवर पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सुकेश एक बार फिर से तैयार रमेश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार टॉप एज लेकिन फील्डर गली के थोड़े से पीछे तैनात और 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रमेश और अरुण राज और इस बीच सुकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए again reverse shot and this time he finds the gap not so well but he got at least couple for that stroke और रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेला था जरूर है लेकिन डीप बैक थर्ड मैन पर फील्डर को थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ी अपनी बाईं ओर लेकिन आखिरकार इस गेंद को वो सही तरीके से सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में सफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना 1 विकेट के नुकसान पर। और सुकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट नॉट क्वाइट मिड विकेट बल्ले का बाहरी किनारा गेंद जाते हुए थर्ड मैन की दिशा में गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और फिर से बल्लेबाज के पास मौका था दूसरे रन के साथ अपने अपने छोड़ पर वापस लौट सके। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी ऑफ स्टंप से कुछ बाहर क्यों निकलते हुए कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए स्क्वायर इस वक्त स्क्वायर लॉफ्ट खेलना चाहता अंतिम क्षण में बल्ले का टॉप पे टकराने के बाद गेंद निकली इस वक्त फाइन शॉट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से और जब तक फील्डर अपने पीछे की ओर दौड़कर जाकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। अगली गेंद फुल टॉस टॉप एज मौका हो सकता है लेकिन इस बार भी बल्लेबाज बच चुके हैं क्योंकि वहां पर कोई फील्डर नहीं डीप कवर पॉइंट पर और एक बार फिर से इस बार बल्लेबाज दूसरा रन प्राप्त कर चुके हैं तो 3 कपल अंतिम 3 गेंदों में बल्लेबाज प्राप्त कर चुका है स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन रनों के साथ 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट and 2 overs has been completed and they are looking in a good situation for Karawali Auto Garage after being losing the toss and put into bat by Dubai Indians in the match number 11 of this prestigious cricket tournament Kateel Premier League 2024. They made a pretty good start 18 for none after 2 overs. So Fawaz, the bowler is now brought into the deck. पहली गेंद लेकर तैयार ये गेंद बेहतर गेंद थी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम फवाज और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फवाज का जहां तक सवाल है एक वक्त अंडरआर्म क्रिकेट में वो यंग फ्रेंड्स रुआ को प्रतिनिधित्व किया करते थे एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर इस वक्त ओवरआर्म क्रिकेट जो कि खेलते हुए इस बार टॉप एज लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। फवाज फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद ये गेंद बेहतर गेंद एब्सोल्युटली गुड वन ड्राइव करने के प्रयास में चूके शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन मिलेगा। इज गॉट अ बैट ऑन दैट इज गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर करावली और अगली गेंद लेकर तैयार इस बार धीमी गेंद लेकिन इस धीमेपन का फायदा नहीं उठा पाए और लगभग गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद विकेट कीपर के अंदर की ओर से निकली शॉर्ट फाइन लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और बल्ला पहले अड़ा गए गेंद बाद में आए फलस्वरूप गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क है लेकिन एकमात्र रन इस बीच जुड़ता हुआ बल्लेबाज और टीम के खाते में 21 अगली गेंद फवास फुल टॉस गेंद को उछालना चाहता चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। बेहतरीन ओवर फवाज का अब तक समाप्त हो चुका है। पहले 5 गेंदों में माफ कीजिए 1 गेंद बाकी है। बेहतरीन ओवर इस वक्त प्रगति पर तो 3 रन इस ओवर में फवाज प्रदान कर चुके हैं और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर पहली ढीली गेंद इस ओवर में फवाज से फेंकी ऑफ स्टंप से काफी बाहर दिशाहीन गेंद थी और वाइड का इशारा
और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फवाज फुल टॉस ड्राइव कर दिया, गेंद को वाइड स्लॉग ऑफ पर, not more than a single, slight bit of fumble there, and because of that the batsman come back for the second run, और 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 24 and 6 runs came from the over from Fawaz. Pretty good one compared to the first 2 overs in Dubai Indians point of view. 3 overs gone, still the Karawali are now looking in a good situation. It's 24 for the loss of 1 wicket for Karawali Auto Garage against Dubai Indians with just 2 overs to go in their innings. 2 overs left in their innings. शाडी इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 24 रन बन चुके 3 ओवर के बाद यहाँ पर करावली ऑटो गैरेज दुबई इंडियंस के खिलाफ, और सैंडी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट फील्डर स्टैंडिंग सो डीप, बल्लेबाज 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलेगा। फील्डर डीप मिड विकेट से तब तक दौड़ कर आकर जब तक दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे। इस वक्त गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब 30 रनों पर विकेट के नुकसान पर। सैंडी एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑफ द टोन गेंद को खेलना चाहा और गेंद पैरों पर टकरा करने के लिए इस वक्त स्क्वायर लेग पर और 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं। He's got a bad of that in the last moment, I think so, and the scoreboard is now moving at 27. तो इस बीच ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद जब तक फाइन लेग से फील्डर आकर दौड़कर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। और चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। सैंडी एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार जस्ट गॉन फॉर लॉफ्ट, कम्स डाउन द ट्रैक, मिसेस एंड स्टंप्ड बाय विकेट कीपर। 28 for the loss of 1 wicket. The second wicket lost. Dubai da urudu uruda javanadu ottu mandina ee game ye katila appenu kaiyerdu sugitudu kalaku jattina javaneratule 6-4 da barsoda birsugu mata serudu step nu padle ಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ प्रीमियर लीग। और वो इस वक्त सामने है सैंडी की गेंदों का, और सैंडी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। अगली गेंद again the lofted, this time I think it could be gone all the way. No, in fact it taken just inside the fence. एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद अंतिम क्षण में इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा लपक ली गई है, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है करावली ऑटो गैरेज का। So last ball remaining in this over, and we are just waiting for the number 5 batsman. तो नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त हैट्रिक गेंद लेकर गेंदबाज सैंडी तैयार, और देखना यह है कि वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। हैट्रिक बॉल कम्स,
सैंडी इस वक्त तैयार, विकेट कीपर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए। निहाल नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और हैट्रिक बॉल लेकर, हैट्रिक गेंद लेकर सैंडी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद is missing just outside the off step at the last moment. In fact, he survived in this delivery. और धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर फेंकी थी, स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और गेंद लगभग स्टंप से ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई। बाई के रूप में 1 रन बाल बाल बचते हुए इस गेंद पर बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। 29 for the loss of 3 wicket after completion of 4 overs and the last over now remaining in their innings. और जहाँ तक सवाल है अंतिम 2 ओवर का, तो बेहतर कमबैक कर चुके हैं यहाँ पर दुबई इंडियंस के गेंदबाज। सिर्फ 11 रन अंतिम 2 ओवर में बर्बाद कर चुके हैं। अब अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में करावली ऑटो गैरेज के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। समीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग आउट की दिशा में, फील्डर तो काफी पीछे तैनात। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और दूसरे रन के लिए कदम दौड़ पड़ा और इस बीच यहां पर बच चुके हैं मेरे ख्याल से। 3-4 कदम आगे जरूर बढ़ाते, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर वापस खींच लिए। वहां पर स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने उन्हें वापस भेजा और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। 5 गेंदें बाकी हैं, 5 balls लेफ्ट और समीर तैयार। Just gone for a big one, not quite mid wicket. Once again in the same gap, fielder standing so deep, but this time they decided against the second run and they are settled with a single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें बाकी और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। Again turns it away, lofted that one, but down to a deep mid wicket. Fielder मौजूद, सिर्फ एक बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। बेहतरीन कमबैक तीसरे, चौथे और 5वें ओवर में कर चुके हैं अब तक गेंदबाज दुबई इंडियंस के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रनों का स्कोर था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए सिर्फ 15 रन बाद के 15 गेंदों में प्रदान कर चुके हैं इस वक्त गेंदबाज दुबई इंडियंस के। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन मिलेगा। 34, 1 more single added to the total, 34 for the loss of 3 wicket। और 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। 2 balls left in the innings in overall calculation. Samir lofted this time in a flatter version down to a deep hit wicket. Fielder गेंद को रोकने में सफल, deep hit wicket सीमा रेखा के अंदर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक्स, फ्लैटर वर्जन पर गेंद को पुल कर दिया था इस वक्त, डीप पुल कर दिया था इस वक्त डीप इन विकेट पर। 36 for the loss of 3 wicket and the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज समीर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अरुण राज के लिए, जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए सामना करते हुए अंतिम गेंद का। Lofted straight over the bowler set down to a straight hit area, straight down the ground. Oh, he slipped out but he stopped the ball. In fact it's gone, it's touched the fence, it's touched the rope of the boundary. It's a boundary. तो रोके थे जरूर, लेकिन दोबारा दूसरे फील्डर जब तक गेंद को सीमा रेखा पर टकरा चुकी थी। 4 रन घोषित, exactly 40 runs. Exactly 40 runs scored by Karawali Auto Garage. 40 runs scored by Karawali Auto Garage against the Dubai Indians. 41 the target for Dubai Indians. And just talking about the next match. Arasa Warriors will take over VID1 in the next match. And because of that, I request the captains of these 2 teams to please report to the stage immediately. Especially the captain of Arasa Warriors, please to be reported here. The captain of VID1 is just
சிக்ஸ் போர் தான் பர்சோதா பிர்சுகு மாத்தா சேருது ஸ்டெப்னு பாடலே. Hello, check. Hello, check. Hello, mic check. Mic testing. Hello, check. DJ off, DJ off. Check. Check. Everything is ready here for the chasing. Talking about the chasing, the 41 is going to be a target for team Dubai Indians to win this match, and that match, Karawali Auto Garage will going to restrict the opposition from not to get 41. First ball right arm over the wicket, and Fawaz nicely plays it down to mid wicket region, and looking for the second there, but no question of second. And with that single, Fawaz is off the mark, and even the team. Dubai Indians also, they got their first and one without loss of any wicket in the over number first in progress. Bowler Salim is in action from the far end, and Samad is the batter, is in Sandy is the batter, will be the striker. Just I want to see the field set in for the deep in the power play. There is a fielder at mid wicket and long on. The two fielders are in the deep, and again we can see that all the fielders inside the ring. Right arm over the wicket, nicely plays it down to square leg region, and he's doing a right job, and by picking up the single. With that single, score numbers under 2 on the board without loss of any wicket. Coming back to Fawaz, he came from long way from Saudi Arabia, and as far as choosing one icon player is concerned, they got Nawaz as a player from the outside. Is lofted at one, down to deep extra cover. Fielder chasing the ball, but I don't think he'll going to get there. Ball went into the fence. One bounce for 4 runs down to deep extra cover.
So wonderful cricketing show coming from the bat of Fawaz in the delegation. He got a bit, isn't it? It is little margin for error. If you're not having a field in the deep in the offside, absolutely it's going to be punishable. This time he wanted to go for the reverse stroke, missed it completely. Appeal for caught behind. Umpire says not out, and the score remains on 6 on the board. Coming back to the Fawaz, we are talking about this man is performed very well in both underarm and overarm cricket. Represent for young friend Surwa. Might be ball is looks like slipped off the hands of the bowler, so umpire called it dead ball, and rightly so, and no damage. Coming back to Fawaz, is coming from a long way and from Saudi Arabia to represent in this Kateel Premier League. Nicely balled, equally well played by Fawaz. He's quite watchful in the relegation, seeing that ball is almost in the Yorker line delivery, and negotiated very well by bringing his bat into the line of the ball to place that one down to mid-off region, and with that single score numbers down to 7 on the board. And he's coming from the cricket family. We're talking about Fawaz. His father also a very good cricketer, Jamal, was represented for Alekala Sporting. And here is the next one, right? Over the wicket, bounce nicely, plays it down to short mid-wicket region. But bowler himself is running towards his right to stop the single. And with that dotted delivery, looks like one more delivery remaining in this. No, completed over number 1, which is comes to an end, chasing a total score of 41 to win this match. 7 on the board without loss of any wicket. Start from these two opening batters, Sandy and Fawaz. And if you deduct 7 from 41, that means another 34 more runs required for the victory in remaining 4 overs. So, just coming back this cricket tournament, we are just want to give special thanks to our donors, those who are contributed for the success of this cricket tournament. We wanted to name our support sponsors. We are just talking about the co-sponsor. We already mentioned their name earlier, and we are going to read the Varaharupa Mangalore. Thanks to honor Mr. Praveen Shetty, Mahima Residency, and one more co-sponsors, Mahima Residency Hubli, Mr. Premnath Shetty. Thank you very much, proprietor of Mahima Residency Hubli, for your sponsorship. B-Town Restaurant Bar and Restaurant. Thanks to Mr. Hari Prasad Shetty for your contribution for this success of this cricket tournament. Meanwhile, the second over will going to start. Right arm over the wicket. Fawaz nicely turns and one to square leg division. And they're looking for the second, but very difficult to get because fielder from the deep square leg charging into that ball and denying the second from these two batter. One more single. With that single score numbers on to 8 on the board. Coming back to the names of the co-sponsors, GITA Tires, and they are the one more co-sponsor for this prestigious cricket tournament. We have a support sponsor, Talent Technical Services Company LLC. Thanks to Mr. Madhav, the proprietor, and the Dhaba Restaurant. All versus Mr. Prashant Shetty, the proprietor of Dhaba. This time switch it comes into play, plays it down to a little bit finer, down to deep gully region before the fielder from deep backup point region to run across to his left. Ample time for the batter to complete the single. Sandy got a couple of runs. With that couple of runs, score numbers down to 10 on the board. So a lot of history we can see. Some cricketers, those who are very good in performing both underarm and overarm cricket. And here is the next one. Right arm over the wicket bounce. This time the batsman little bit going outside the line of leg stump, looking for the inside out cricketing stroke, and clever thinking by the bowler point of view. You low ball that outside the line of off stump, away from the bat of the batter. Balled him, cleaned him up. I think unnecessarily. Sandy again, he wanted to go for the reverse sweep, but a very good thinking by Yellow in the relegation. He really balled it into the block hold of the batter. Wicket number first is back into the 10 for the loss of 1 wicket. Thank you very much. And now it's the time to announce the man of the match of the previous match. Arasa Warriors won this match, and man of the match which goes to Rizwan Kodi.
So I request Mr. Rizwan Kodi, please come and collect your man of the match from our chief guest in our main stage. I request Satish Shetty, the chief guest for this presentation of man of the match for Rizwan Kodi for his wonderful bowling performance. He is the one who bowled brilliantly, because bowling in the power play is not so easy, and he bowled very well and bowled 2 very good overs, and responsible for the opposition team to restricting for the less runs. So new batter in is Samir Kurg. So presentation is going on here of the man of the match, and the bowling starts from the far end. Going for the big swing of the bat without seeing the line of the delivery, going for the blind stroke here from batter Samir Kurg, and scoreboard remains on 10 on the board. Thank you very much, our chief guest Satish Shetty, and for your support for this cricket tournament, Kateel Premier League 2024. Ilu. Right above the wicket bounce. Again, a slower one. Again, there from Ilu. He's really testing the temperament of the batter with this some variation in the bowling. The good piece of bowling from the bowler. After completion of over number 2 and to 41 to win this match, the scoreboard is 10 on the board. They're going exactly 5 runs per over. That means in remaining 3 overs, they need to get another 31 runs on the board. 10.33 runs per over, the required run rate for the team to win this match for Dubai Indians. Just talking about the sponsors, support sponsors, we're talking about Talent Technical Services Company LLC, and proprietor Mr. Madhav, and socials and masala and socials, which is description, and Mr. Sharat Shetty, the owner of this masala and socials. Thank you very much, sir, for your contribution for the success of this cricket tournament. And Sri Kateel and Sri Kateel Technical Services, thank you very much, proprietor of Sri Kateel Technical Services, for your cooperation. And Rak Petroleum and Rak Petroleum Materials Trading LLC, thank you very much for your contribution for the success of this cricket tournament. And meanwhile, third over is going to start from the far end. This time I plays it reverse shape, but straight to the hands of the fielder, not for run. And Ramesh is the bowler who bowled the first ball. Coming back to Fawaz, I still remember one tournament is organized in NMPT cricket ground in 2017 or 16. That is in the name of UPL, ODP Premier League, one of the biggest tournament of 25 lakh cash. In the tournament, this time straight to the answer by Karawali Auto Garage. Getting that huge wicket of Fawaz. It's 10 for the loss of 2 wicket. Fawaz departs. Tried to get some acceleration, but is not really getting that one from the middle of the bat. Ball is almost in that almost in the half volley, but couldn't manage to get that one into the middle of the bat, and by playing the switch it. But sometimes it's happening in cricket. But here in this particular tournament, I watched some unbelievable switch hits, which is went into many miles, and some different technique which is implemented in this particular tournament to get that big shot, especially by the right-hander batsman playing many switch hits which went into the fans. That's right. Now Fawaz is also wanted to get that switch hit, but couldn't manage to get that one. Ashish Hegde is a new batter in, one more well-recognized player for the side of team Dubai Indians. But so far I think team Garage are making some kind of comeback in this match. This time lofted that one bounce into the fence for 4 runs. And just the ball is came in at such a good height where it is easy for the batters to dispatch that one. And with that boundary, cover number 14 on the board.
attempt by that try to call that Yorker and delivery, but the ball is just almost missing that direction. This time leaning into the drive, almost they try to get that one in the pull and place it down to deep square leg region for a couple of runs. Good technique there from the batter Ashish Hegde, because it's not an easy one to get that one, because he wanted to get that one, which is a bowler is trying for the Yorker ended where he just leaning into the drive, plays it down to deep square leg region for a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 16 on the board for the loss of 2 wicket. You're watching KPL and Kateel Premier League 2024 season 11. This time going for the full shot, ball is in the air, but fortunately for him that ball went into the fielder after one bounce down at short fine leg region. With the addition of that singles, Coburn moves on to 17 on the board. 17 for the loss of 3 wickets. 2 wicket correction for Fawaz and one more wicket. Sandy, the opening batters are back into pavilion. Now all after this man Samir Kurg, and need to get some runs from his bat if they wanted to back in the game. Again, lovely delivery, beautifully bowled there by Ramesh in the delegation, pitching that one outside the line of off timber, just getting a little bit deviation away from the batter, and ball went to the hands of wicketkeeper. No runs scored. I request Raja Saligram please come here. ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ. ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 12 ಬಾಲ್ required for the victory. 2 ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಓವರ್ 24 ರನ್ ಆವಡು. Ilu keeping one fielder at deep long on, one at deep mid wicket, one at deep square leg, and a short that is a short fine leg. There is short third man, short backward point, deep extra cover, short mid off. Pass ball lofted at one, high up in the air. The fielder will not going to get there, but after one bounce he will going to collect. But meantime batsman has got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, Cobra moves on to 19 on the board. That means another 22 runs required for the victory in 11 balls. 11-22. Each and every ball required 2 runs. And again the bowler ball Silu. This time for that one right in the gap down to deep square leg region. Fielder will go into miss that one. That will go into a welcome boundary. Absolutely welcome boundary here for Dubai Indians. As Coburn moves on to 23 on the board. This time the bowler pitching the ball a little bit short. The batsman got all the time in the world. Samir Kurg just going back, just using the deftness of a crease very well and going back and pulls that one down to deep square leg boundary for 4 runs. Of course there is deep square leg a little bit in the front, but he played that one little bit fine between fine leg and the square leg. So with that boundary, it looks like it's going to be now. The match is going to be very interesting. It's going to be anybody's game. 23 on the board. 18 required for the victory. Again, Illu bowls that beautiful delivery outside the line of off time. Slower one, but getting some flight in the delivery. Tossing up the delivery is very important. If you wanted to get some extra bounce and turn, your tossing the ball is very important, and he's doing a right job here. This time again, off the back foot for that one down to deep square leg region. Not more than a single here. With that single, Coburn moves on to 24 on the board. 24 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. This time I go leading edge of the bat, but ball just going to travel after 2 bounce to the fielder, and one more single taken there by the batter. With that single, Coburn moves on to 25 on the board. That means 16 more runs required for the victory in 7 deliveries. Ilu
Ball to Suresh, and Suresh swings at one, but straight to the hands. Oh, drops the catch. Again, what really going on here? Here is a chance of run out, and definitely the batsman is out of his crease. Suresh, little bit correction. Samir, Ashish Hegde. He's got run out as he wanted to get that one into mid wicket. Even the drop catches, but wicket will go into fall in the form of run out. The fourth wicket is back into pavilion. 26 on the board. Last over remaining, and they needed 15 runs to win this match. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Prajwal is the bowler. He will going to bowl that decider over. 15 runs required for the team Dubai Indians. 15 required from last over. Prajwal will going to start his over from the commentary box end. There is a deep long on. There is a mid wicket, deep square leg. The fielder down at long off. The one fielder in the deep in the off. Driven nicely down to the dish long on region for singles. Swarup the fieldsman there in the long on region, and ample time for the batter to complete the single. With that single, scope moves on to 27. 14 required from little correction. 5 balls remaining. 14 runs required for the victory. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The right hand batsman is on strike now. Sukesh is on strike now, the new batter. Can he make a little bit magic here? 14 required from 5. Bowler balls Prajwal. This time across the line, he swings at one, and he got the distance. Yes, he does. This is an outstanding cricketing stroke coming from the bat of Sukesh in the right time. And all we can see that one big shot which is definitely required for the team Dubai Indians. And he got that one right from the middle of the bat down to deep square leg for 4 runs. Now 14 which is required before the previous delivery. Now 6 which is deducted. That means 8 required in remaining 4 balls. What a match. Scoreboard is a 33 on the board. 8 required from 4. Oh, 8 required from 4. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, absolutely perfect Yorker line delivery there from Prajwal there. Good comeback from the bowler's point of view. A very important time ball that Yorker line delivery. Now 3 balls remaining, 7 runs required for the victory. 3 balls, 7 runs required for the victory. Left hand batsman is on strike now. Samir Kurg is on strike. Ramir Kurg and just observing the field set now. Very important for the batter to see the field set. And again the bowler Prajwal. Right around the wicket, swings that one down to deep fine leg region, but it's definitely going to be just a single here. With that single, one more run added, 35. That means 6 required from 2 balls. 2 balls, 6 runs required for the victory. Still the match looks like it's going to be anybody's one. It's going to be anybody's game, and this delivery is going to be a decider, as Sukesh is the one who got a 6 in this particular over in the second delivery of the over. Now it's the 5th delivery of the over, and 6 required from 2 balls. And absolutely we are witnessing one more nail batting finish match. Decider delivery. This time full toss, swings and straight to the hands of deep square leg. Oh my goodness, can you believe this?
The full toss delivery, the bowler getting a prize wicket. It's 35 for the loss of a 4 wicket, 5 wicket impact. So one more wicket is back into Pebble in a wrong time, I want to say, because the man who really takes the team into the track of winning this match is Sukesh is back into Pebble. Now last ball, 6 required for the victory. And coming back to that last ball, 6 runs, I think so many examples we will going to get. The last ball, 6 required. One of the best finishes we are talking about when a 5 required for the victory. Even 6 required for the last ball is done by the most of the cricketers, the batter, and the new batter will going to register his name here. He wanted a 6 in the last ball. Here we go, right arm over the wicket. Oh, he is slapped down and looks like he hits the stumps as well. Hit wicket, and all which absolutely what we are talking about. Record breaking is required, but he broke on the stump, not the record. .35 and victory for the team Karawali Auto Garage. Thanks to the bowlers, we really did a great job of Auto Garage to restrict one of the formidable team. And what talking about the team of Dubai Indians are almost looking towards some points in this match to grab the place in the top in the points table, but here is the team Karawali Auto Garage did a great job to restrict their opposition and winning this match by 5 runs. And congratulations for the winners and of team Karawali Auto Garage. And may I request him to collect his man of the match from our chief guest. Thank you. So we'll take a short break, and after that break we are coming to the next match. And that match will be played between Arasa Warriors versus Vidwan, and that's going to be a 13th match and maybe the 14th match or 15th match going in that ground B. And afterwards we'll see. We'll going to get the place in the qualifier, the playoff round, and we will going to be the qualifier, and we will going to be in the eliminator round. So time to change in commentary box. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Lip correction. I request Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi language. ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯೇರ್ದು ಸುಗಿತುದು ಕಲಪು ಜತ್ತಿನ ಜವನರ ತೂಲೆ 6-4ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಗಡ್ಡುದ ಬಿದ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟ್ಟಿ
धन्यवाद सतीश। तो इस तरह से विडवन विल टेक्स ओवर अरसा वॉरियर्स and the match is now going to start, and news is from the center that the captain of Vidwan, after one toss, he elected to bat first, surprisingly, and their openers are at the crease, and we are just waiting for the first ball of the match। और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। स्ट्राइकर शाहुद्दीन, जबकि नॉन स्ट्राइकर हमदान। पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद बढ़ती हुई, और आउटफील्ड पर जो घने घास है, ग्रास जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी वजह से गेंद अपनी रफ्तार को खोती हुई इस वक्त, जब तक फील्डर के द्वारा फील्ड और सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है इस वक्त विडवंस के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट एक बार फिर से खेल दिया, इस बार स्कूप शॉट खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई, और जब तक गेंद को दोबारा फील्ड किया जाता उसी फील्डर द्वारा कुछ दौड़ लगाने के बाद अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो 2 गेंदों पर बेहतर 2 स्ट्रोक्स इस वक्त खेल चुके हैं बल्लेबाज शाहुद्दीन, और 4 रनों पर पहुंच चुके हैं, और स्कोर बोर्ड है 4 रन। पिछले 2 गेंद पहले 2 रनों के साथ खाता उन्होंने खोला था, और उसके बाद फिर से 2 रन लेकर उसी क्षेत्र में गेंद को ढकेलने के बाद बल्लेबाज 4 रनों पर पहुंच चुके हैं, और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। जबकि गेंदबाज कौशिक का गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ ऑफ द बैक फुट, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार रहे, और अंतिम क्षण में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। कुछ हद तक मिडलर ऑफ स्टंप पर गेंद आते हुए बैक फुट पर जाने के बाद गेंद को कट किया था खूबसूरती के साथ, और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 5 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 15 in fact it's a 5 without loss, and this is the first over in progress in their innings। और कौशिक का फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लगभग उनके कंधों पर गेंद टकराने के बाद, कंधे पर गेंद टकराने के बाद फॉरवर्ड शॉर्ट लेग क्षेत्र पर पहुंची, जहां पर स्वयं गेंदबाज अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करने में सफल। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त विडवन को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। कौशिक, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद just gone for a mighty heave, not succeeded, in fact he's got a single for that stroke, और जब तक स्वयं गेंदबाज मिड विकेट पर जाकर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा। बेहतर ओवर कौशिक का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 1 गेंद बाकी है, माफ कीजिए, 1 गेंद बाकी है। 1 बॉल लेफ्ट स्टिल इन दिस ओवर, और अपनी ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज कौशिक अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाहुद्दीन, और कौशिक अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, लेकिन गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर निकल रही है। गेंद So second row starts in their innings, और गेंदबाज रिजवान इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, और पहली गेंद लेकर तैयार हमदान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस वक्त ओवर की पहली गेंद फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए,
और इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त ना, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त विडवान की पारी में। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद इस बार bowled him inside edge onto the stumps and the batsman departs. Just gone for a mighty, not succeeded. Got his center of the bat, just cracked onto the stumps. And the first wicket gone, Hamdan departs. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. So Aju, the number 3 batsman, is now comes out to the middle after the departure of Hamdan. और पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है इस वक्त विडवान 7 रनों के योग पर। और गेंदबाज इस वक्त रिजवान अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज अज्जू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को कट किया, इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर, लेकिन इससे पहले कि पॉइंट फील्डर गेंद को फील्ड करे, कुछ मिस फील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस बार थ्रो से अपने आप को बचाने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइकर रन बल्लेबाज ने, लेकिन आखिरकार गेंद उनके पैर पर टकराई और स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज काफ़ी हद तक आगे निकल आए थे पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन लेने के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदलते हुए देखा कि गेंद वहां पर टकरा चुकी है नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैर पर। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर। 8 with the loss of 1 wicket at the start of the second over in fact. बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद इस वक्त एक बार फिर से अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और शैफुद्दीन जो कि बल्लेबाज है अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए शाहबुद्दीन माफ कीजिए बल्लेबाज और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त रिजवान की गेंदों का। तो रिजवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहा अपील होती हुई इस वक्त, लेकिन यहाँ पर अंपायर देखना ही है कि अंपायर इस वक्त क्या निर्धार देते हैं। तो स्वीप करने का प्रयास किया था, अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और आखिरकार अपील इस वक्त जारी है और दोनों अंपायर इस वक्त कुछ समालोचन आपस में डिस्कस चर्चा करते हुए और आखिरकार देखते हैं इस चर्चा के बाद क्या निर्धार वो लेते हैं। तो नॉट आउट इस वक्त घोषित कर चुके हैं, शायद बल्ला जमीन पर टकराया था इस वजह से आवाज आई थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और सही निर्णय अंपायर द्वारा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस बीच बेहतर गेंद ಅಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಂಡದ ಅರುಣ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಂಡದ ಅರುಣ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सो बैक टू दिस गेम और दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रिजवान एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट
गेंदबाजी करते हुए तैयार। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा। हालांकि 2-3 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि एक रन के साथ देखा कि थ्रो वहां पर पहुंच रहा और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन बना के 1 विकेट के नुकसान पर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 10 लेग स्टंप से बाहर गेंद को जाने दिया। मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। और गेंद को ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, गेंद को अपने कमर को थोड़ा सा इस वक्त झुकाते हुए गेंद को इस वक्त जाने दिया था। विकेट कीपर के हाथों में यह पूर्वानुमान लगाते हुए कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा तक गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर। Two overs completed, 10 on the board, 1 wicket lost, 3 overs remaining in overall calculation. तो निश्चित रूप से हमारे साथ श्रीमान सुरेश आचार्य जो कि मौजूद है, एसके स्काई फंड स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान सुरेश आचार्य जो कि हमारे साथ मौजूद है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट 10 और जो कि केपीएल के लिए उन्होंने डेंटल अकाउंट फ्री और फ्री डीमेट अकाउंट फ्री और फ्री असेसमेंट और एडिट ऑफ पर्सनल फाइनेंस प्लान्स का जो कि उन्होंने इस वक्त ऑफर दिया है। तो एक बार फिर से हम उनका हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं श्रीमान सुरेश आचार्य जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर स्काई फंड स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है सुरेश आचार्य जी, आपका हार्दिक यहाँ पर स्वागत है। तो हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रेक्षक और दर्शक खिलाड़ियों से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षक और खिलाड़ी इस म्यूचुअल फंड का हिस्सा बने, इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने के बाद। और निस्संदेह कृपया संपर्क करें श्रीमान सुरेश आचार्य जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के। तो पहली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर। धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ विड-1 धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ। और जहां तक सवाल है इस वक्त एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा विड-1 के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो ये गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट, बैकवर्ड थर्ड पान से फील्डर दौड़ कर 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। एक ही रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज विड-1 के कि करारे प्रहार कर सके, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, प्रशांत। ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन गेंद हवा में, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार गेंद को लपकने में असफल। हालांकि गेंद तक पहुंच गए थे कहना पड़ेगा, लेकिन गेंद को लपकने में असफल। मिस जजमेंट, गेंद पीछे की ओर उनकी ओर आई थी और इस मिस जजमेंट की बदौलत गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इसका फायदा उठाकर यहाँ पर 2 रन प्राप्त करते हुए 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज प्रशांत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, फील्डर स्टैंडिंग सो डीप एट डीप कवर पॉइंट, द कंप्लीटेड वन, लुकिंग फॉर द सेकंड बैकअप बाय द अनदर फील्डर एट डीप कवर पॉइंट, बट द बैट्समैन कांट गॉट सेकंड रन फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ विड-1 और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाज फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अपनी अगली
गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रशांत गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Again, just bowled him inside edge onto the stumps after one bounce, and one more wicket fallen for with ones. The batsman departs. Man departs, and the second wicket lost. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. So new number 5 batsman is now comes out to the middle, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, सलाह नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाता है। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में प्रशांत अब तक फेंक चुका है, सिर्फ 4 रन प्रदान कर चुके हैं, और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलाह इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, जगह बनाते हुए गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फील्डर काफी पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 3 overs completed. Still the problems are continuing here for the batsmen of Widwan. They managed to score only 15 runs on the board for losing 2 wickets with just 2 overs to go in their innings. शाम का वक्त लगभग 4:30 इस वक्त बज चुके हैं, 4:30 इस वक्त बज रहे हैं, और यहाँ पर धूप का प्रकोप जरूर कम हो चुका है इस मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर जो कि तय कर चुका है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होते हुए, और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ कि कृपया दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से यहाँ पर ये श्रृंखला जो कि कटील प्रीमियर लीग 2024 एक शानदार प्रगति करती हुई कटील फ्रेंड्स क्रिकेट टीम दुबई बैरल्स एंड रेंजर्स की शानदार प्रस्तुति है। कटील प्रीमियर लीग 2024 2024 श्रृंखला, और इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत मैच नंबर 13 की प्रगति यहाँ पर होते हुए इसके बाद 2 लीग मैचेस खेला जाएगा। चौथा मैच इस वक्त पूल बी मैदान पर खेला जा रहा है, और अंतिम लीग मैच खेला जाएगा पूल ए मैदान पर रेंजर्स और नवीन 11 के बीच में। उसके बाद 3 प्ले ऑफ मैचेस, क्वालिफायर मैच नंबर 1, क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। उसके बाद ग्रैंड फिनाले आज रात को यहाँ पर होगा इस कटील प्रीमियर लीग 2024-2024 श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस बीच नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पहली गेंद जस्ट वांटेड टू पेट दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट द लास्ट मोमेंट आफ्टर एक्सपोजिंग द स्टंप्स, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं है, कुछ हद तक उछाल लेते हुए गेंद गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है, और गेंदबाज रिजवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। कुल मिलाकर चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। बिल्कुल काफी मौसम काफी सुहाना इस वक्त, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है, और जहाँ तक सवाल है इस पर्याप्त वातावरण तले एक बेहतरीन श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। अगली गेंद
ये गेंद टॉप एज, मौका हो सकता है इस वक्त मिड विकेट फील्डर के लिए मौका है, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की मिड विकेट, हालांकि वाइडिश लंगोल से फील्डर दौड़ कर आया, लेकिन आखिरकार यहाँ पर इस कैच को लपकने में सफल। मौका था इस वक्त मिड विकेट फील्डर के लिए, लेकिन वो कुछ कहते हुए यहाँ पर कि शायद उन्होंने गेंद को ठीक से साइड नहीं किया, और आखिरकार जब तक वो इस दुविधा में पड़ गई कि दौड़ लगाएं या ना लगाएं, तो वहीं पर 2 कदम दौड़कर रुक गए, लेकिन दौड़ कर आए वाइडिश लंगोल के फील्डर, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद इस कैच को वो लपकने में असफल, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने जरूर किया। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था इस दौरान 2 रन प्राप्त करने का, 17 रन, 17 for the loss of 2 wicket at the start of the 4th over. In fact, Rizwan 18 in fact, 18 for the loss of 2 wickets. 3 balls left in this over. Top edge once again, this time chance for wicket keeper in fact, and he took the catch successfully. इस बार विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपनी बाईं ओर जाकर इस कैच को लपका। ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपकने में सफल और बेहतर जजमेंट के साथ। तो एक और विकेट गिर चुका है, 3rd विकेट गॉन एंड शाहुद्दीन नाउ डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। So Usman, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. ಆಗಡ್ಡುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ Rizwan आगे बढ़ाते हैं ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं। एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता, चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज अरसा वॉरियर्स के, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed and after completion of 4 overs it's 19 for the loss of 3 wickets. Last over remaining, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर इस मैच के बाद पूले मैदान पर इस लीग स्टेज का अंतिम मैच खेला जाएगा रेंजर्स और नवीन 11 के बीच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। तो इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होता है। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। गुरुराज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और पहली गेंद लेकर गुरुराज लंबे रनअप के जरिए कुछ हद तक रनअप में बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तैनात ऊपर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद लगभग इस वक्त पहुंच चुकी है गली क्षेत्र पर। 1 रन का इजाफा, पैर से गेंद टकराई थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। एक धीमी प्रगति अभी भी करता हुआ यहाँ पर विडवन, और एक बार फिर से गेंदबाज गुरुराज गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। तैनात ऊपर द विकेट, लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद। इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और शायद उनके चेहरे पर गेंद इस वक्त टकराई है और यहाँ पर कुछ हद तक वो दर्द महसूस करते हुए और इस वक्त फील्डिंग टीम के खिलाड़ी इस वक्त उनका उपचार करते हुए, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि सौभाग्यवशात उन्हें कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। वो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ
ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ 11 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪೂಲ್ ಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ 11 ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. तो यहाँ पर खेल कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है. तो यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्स यानी योगदानियों का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा. तो इस श्रृंखला के टाइटल स्पॉन्सर जो है रेंजर्स, जो कि रेंजर्स जनरल ट्रांसपोर्ट एलएलसी के हैं, उनके जो मालिक है मिस्टर उदय शेट्टी. और दूसरे टाइटल स्पॉन्सर है मिस्टर अभी शेट्टी बैरल्स ग्रुप के. और मेन स्पॉन्सर जो है विडवन ऑयल फील्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एलएलसी मिस्टर विद्यानंद शेट्टी जो कि मालिक है. और को स्पॉन्सर है वराह रूपा मैंगलोर, महिमा रेसिडेंसी हुबली मिस्टर प्रवीण शेट्टी और मिस्टर प्रेमनाथ शेट्टी. जबकि बिटोन बार एंड रेस्टोरेंट मिस्टर हरिप्रसाद शेट्टी ओनर. इस बार गेंद को उछाला, टॉप एज गेंद इस वक्त है, लेकिन फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका, एक रन लेने का, दूसरा रन लेना चाहते हैं, अपने स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखने में असफल. 21 वन मोर विकेट फॉलन 21. तो चलिए डोनर्स की ओर बढ़ते हैं. इस वक्त को स्पॉन्सर्स, एक और को स्पॉन्सर्स है गिटी टायर्स. और सपोर्ट स्पॉन्सर्स है टैलेंट टेक्निकल सर्विसेज को एलएलसी. मालिक है मिस्टर माधव. ढाबा सपोर्ट स्पॉन्सर्स है. एक और सपोर्ट स्पॉन्सर्स टैलेंट टेक्निकल के अलावा ढाबा रेस्टोरेंट ऑल इस
के लिए तैयार। माही पिछले गेंद पर अपना खाता यहाँ पर खोल चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान, जहां पर गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तो इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और इस बार ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को उनका आंकड़ा उन्हें यहाँ पर पार करना होगा। निर्धारित 5 ओवर में अगर उन्हें नवीन 11 के सशक्त बल्लेबाजी पर अगर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। और इस बीच गेंदबाज तैयार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा स्कोर इस वक्त रुक चुका है। स्कोर रुक चुका है 7 रनों पर। और फिर से एक बार शॉन, अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर पुल किया खूबसूरती के साथ, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर नहीं, गेंद इस वक्त उनके हाथों से टकरा कर जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर। गेंद तक फील्डर पहुंच गए थे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान की। बेहतर शुरुआत यहां पर रेंजर्स कर चुका है। 11 विदाउट लॉस एट फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय द ओपनर्स ऑफ रेंजर against Navin 11 in the last league match of this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024, which proudly presented by Kateel Friends Cricket Team Dubai and Barrels and Rangers in this beautiful money ground आसमान। और एक सुंदर सा नज़ारा हम देख रहे हैं, धूप, प्रखर धूप मैदान पर इस वक्त गिर रही है। निश्चित रूप से हवा इस वक्त मैदान पर चलती हुई, जिस तरह मैदान की दाईं और बाईं ओर गाड़े गए झंडे, कम से कम 8 से 10 झंडे यहाँ पर गाड़े गए हैं, वो झंडे जिस तरह से लहरा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख जो कि काफ़ी तेज़ है इस मैदान पर हवा जो कि मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त गुजरती हुई। और अंतिम लीग मैच यहाँ पर इस पर्याप्त एक सुंदर से वातावरण पर यहाँ पर खेला जाता हुआ, दर्शकों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। सुबह दिश ने जितने दर्शक थे उससे कुछ ज़्यादा दर्शक, काफ़ी ज़्यादा दर्शक इस वक्त मैदान पर नजर आते हुए। नई ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूके, और गेंद सीधे इस वक्त पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर, जहां पर स्वयं गेंदबाज ने आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। और इस बीच इमरान सामना करने के लिए तैयार, इस बार गेंद को छोड़ दिया और एक बार फिर से मिस जजमेंट, इस वक्त बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया ताकि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। अंपायर आखिरकार टस से मस वहाँ पर नहीं हुए, खड़े पर जहाँ तक खड़े थे वहीं पर रह गए, कोई चलना नहीं उनके हाथों में। और इस बीच रन से रुके हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला कवर पॉइंट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 12 रन। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके हैं रोवेल, और अपनी चौथी गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। फ्लड लाइट्स की खंबे की बत्तियां, 2-3 फ्लड लाइट्स के खंबे की बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं, और लेकिन क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त रोशनी जितना चाहिए सूरज का, तो वो रोशनी इस वक्त मैदान पर मौजूद है इस ढलते हुए शाम में भी। और इस बीच गेंदबाज रोवेल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, सामना करते हुए इस वक्त माही सामना करते हुए इस वक्त, और इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रोवेल माही के लिए। 8 से 10 कदम उनका रनअप, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, इस वक्त कुछ हद तक गेंद को टॉस की गई थी, अंतिम क्षण में फ्लाइटेड गेंद थी और गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त
2 गेंदें इस ओवर में बाकी। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और यहाँ पर एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में जारी रखते हुए गेंदबाज रोवेल अपनी ओवर की अगली एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मणि के लिए और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद बल्ले पर नहीं आई। वाइड का इशारा एक बार फिर से, लेकिन इस बार गेंदबाज और विकेट कीपर नाखुश है, उनसे असंतुष्ट है कुछ कहते हुए, लेकिन अंपायर इस वक्त कहते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल चुकी है। और देखते हैं आखिरकार अंपायर इसे वाइड घोषित कर चुके हैं और इस वक्त बहस जो कि जारी है विकेट कीपर, गेंदबाज और अंपायर के बीच। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। स्कोर इस वक्त है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज इमरान और माही, वो जानते हैं एक बेहतर शुरुआत उनको एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सकती है। शायद इस वक्त इस पूर्वानुमान के साथ क्रीज पर जमने की वो पूरी कोशिश करते हुए ये दोनों सलामी बल्लेबाज। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन प्रोटेक्शन वहां पर मौजूद है, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक ही रन इस गेंद पर बल्लेबाज को मिला। ठीक उसी तरह डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर इस वक्त तैनात किया था फील्डर को गेंदबाज ने और उसी दिशा में गेंद को इस वक्त फेंकी थी, पटकी हुई गेंद थी और आखिरकार सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम इस गेंद पर प्राप्त करता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और रोवेल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 विदाउट लॉस विद जस्ट अ बॉल टू गो इन दिस ओवर। एक लंबा ओवर इस वक्त रोवेल का प्रगति पर और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, जगह बनाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर। जब तक गेंद को रोका जाता, थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद अपनी दाईं और सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकफुट गेंद को पंच किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट और 2 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस, 7 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर comparing to the better one comparing to the first over which conceded 11 runs by Sean। और रोवेल के ओवर में 7 रन बने जबकि शान ने प्रदान किए थे 11 रन अपने पहले ओवर में। 2 ओवर के बाद 18 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है रेंजर्स और अपनी यहां पर तीसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। शॉन पहले ओवर में 11 रन उन्होंने प्रदान किए थे। पहली गेंद ऑन साइड पर फुल टॉस गेंद को मोड़ा इस वक्त डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। हालांकि शान ने पहले ओवर में 11 रन जरूर प्रदान किए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नवीन 11 के कप्तान ने उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें दूसरा ओवर इस वक्त सौंपा है और देखना है कि कप्तान के विश्वास को इस ओवर में गेंदबाज शान किस तरह बरकरार रख पाते हैं। अगली गेंद, यह गेंद उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में लॉन्ग ऑन पर। गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग, एब्सोल्युटली टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। और गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर तैनात थे उनके हाथों में और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इमरान की पारी समाप्त। एक अच्छा सपोर्टिंग किरदार अदा करने के बाद 5 रनों का वो पेविलियन वापस लौटते हुए और 19 रनों के योग पर यहां पर रेंजर्स अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 19 for 1। We are just waiting for the number 3 batsman. I think Vishwa is now coming out to the middle as a number 3 batsman. तो इस वक्त लॉन्ग ऑन पर जो कैच को लपका गया था मोहम्मद नवीद जो थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान लगभग स्ट्रेट हिट एरिया पर और उनकी इस कैच की बदौलत यहाँ पर
इमरान को वो पेविलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। नए बल्लेबाज विश्व का आगमन यहाँ पर होता हुआ और तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और शान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। शाम के 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है और धीरे धीरे इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी यहाँ पर ढलते हुए। तो यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शान, दाहिने हाथ बल्लेबाज विश्वा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए और इस वक्त अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। शॉन अगली गेंद, ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को खेल दिया। स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद पहुंची मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे, दूसरा रन बल्लेबाज लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंचा, इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर फ्रॉम द डीप इन विकेट फील्डर। द बैट्समैन आर फाइनली सैटिस्फाइड विद अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 balls gone in the innings. 15 balls have to come. Half the way mark, still half have to go. और इस बार शान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज माही जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त गेंद को उछाला, गेंद हवे में, एक्स्ट्रा कवर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और यशस्वीतम इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ यहाँ पर विकेट गिर चुका है माही का। ಆಗದ್ದ ಬಿದ್ದದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್। 20 for the loss of 2 wickets. Sandy is now comes to the middle as a number 4 batsman wearing number 4 jersey, and he is now going to face the right-handed bowler Sean. और Sean गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज Sean और इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खेलना चाहा सैंडी, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाया। जब तक गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट विद जस्ट अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज शॉन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त विश्वा। तो क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज इस वक्त नए आए हुए हैं और यहाँ पर देखना यह है कि ये दोनों किस तरह इस वक्त एक साझेदारी के जरिए अपने टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, oh bowled out, bowled off his legs, around his legs, the ball struck to the stumps at off stump at the last moment, bells are disturbed। और बल्लेबाज विश्वा खुद यह समझ नहीं पाए कि वो गेंद किस तरीके से उनको वंचित करते हुए सीधा ऑफ स्टंप पर जा टकराई, बेल्स डिस्टर्ब हुए, लेकिन उनको इस वक्त जाना होगा और इसी के साथ तीसरा विकेट गिर चुका है और इसी के साथ तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका है। 3 overs completed, 21 on the board, 3 wickets down and 2 overs left in their innings। ಆಗದ್ದ ಬಿದ್ದದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್। तो पहले ओवर में 11 रन निशान ने प्रदान किए थे, तो इसके अलावा उन पर प्राप्त वो कर चुके हैं और उनका स्पेल यहां पर समाप्त हो चुका है। और कप्तानों की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए 3 विकेट इस ओवर में शॉन ने प्राप्त किए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद
पहले ओवर में 11 रन प्रदान करने के बावजूद कहना पड़ेगा शान ने 3 विकेटें दूसरे ओवर में प्राप्त किए कप्तान के उम्मीदों को बरकरार रखते हुए। तो 3 ओवर की समाप्ति 21 रन, चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद सूर्या, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रोहन, और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ रेंजर्स की पारी में। और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रोहन। ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार गेंद को खेला, इनफील्ड क्लियर करते हुए काफी लंबा दौड़ लगाते हुए जी तोड़ कोशिश जरूर की फील्डर ने गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और वहां पर कुछ हड़बड़ाहट हो रही है। दोबारा कुछ हड़बड़ाहट के साथ दूसरे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास यहां पर मौका था 3 रन प्राप्त करने का। जी तोड़ कोशिश इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के फील्डर ने जरूर की थी, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंच नहीं पाया। दूसरे फील्डर गेंद को उन्होंने बैकअप जरूर किया, लेकिन वहां पर वापिस कुछ मिसफील्ड हुई और आखिरकार कुछ मिसफील्ड के बाद दोबारा जब तक वो दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड बैकअप करने के बाद थ्रो करे, बल्लेबाज के पास काफी समय था कि 3 रन के साथ अपने छोड़ को बदल सके। और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स at the start of the 4th over in fact। और गेंदबाज तैयार, अंपायर प्लीज होल्ड द मैच। Three runs says umpire, and the match is now once again continuing। तो 3.1 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका। 3.1 ओवर्स प्ले हैज बीन कंप्लीटेड, 24 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस्ट। और इस बीच अगली गेंद को ढकेल दिया इस वक्त, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज रोहन इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और बाएं हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और एकमात्र रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 26 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तो पहले 2 ओवर में 18 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक कर चुके इस वक्त गेंदबाज नवीन 11 के, और इस बीच अगली गेंद, यह गेंद इस बार उछालना चाहा, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग, माफ कीजिए स्क्वायर लेग पर। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा। हालांकि स्वयं विकेट कीपर अपनी बाईं और स्क्वायर लेग पर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बैकअप करते हुए दूसरे फील्डर इस वक्त स्टंप साइड पर थ्रो को रिसीव करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 8 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में, स्टिल 8 बॉल्स रिमाइनिंग इन द इनिंग्स। और गेंदबाज रोहन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार टॉप एज और मौका, लेकिन गेंद तक यहां पर शायद मौका हो सकता था मिड ऑफ फील्डर को, और आखिरकार इस बार गेंद को वो कोशिश कर सकते थे लेकिन इस बार चूके गेंद को वो लपक नहीं पाए, और दूसरे फील्डर जब तक गेंद को बैकअप करे, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। तो कोशिश तो जरूर कर सकते थे यहाँ पर, और कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 2 रन मिलेगा और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर।
29 for the loss of free wicket with 2 balls to go in this over. और अंतिम गेंद, वन बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पूरी तरह सफल होते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा हो चुका है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 7 बॉल्स रिमेनिंग इन द इनिंग्स। 7 गेंदें बाकी और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद दिस टाइम ही लॉफ्टेड दैट वन, आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, यस इट्स अ बिगी। प्रीमियर लीग, Kateel प्रीमियर लीग, 36 the score and a fantastic struck came from the bat of Sandy। और इस छक्के के साथ रनों के औसत में कुछ हद तक बढ़ोतरी यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 36 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs विद जस्ट लास्ट ओवर टू गो इन देयर इनिंग्स। अंतिम ओवर का खेल बाकी और कम से कम अंतिम ओवर में कम से कम 8 से 10 रन यहां पर बटोरते हैं बल्लेबाज तो निस्संदेह यहां पर एक बेहतर स्कोर, यहां पर चुनौती भरा स्कोर खड़ा कर सकते हैं बल्लेबाज रेंजर्स के। तो ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆರಿಫ್ ದಯವಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ರೇಂಜರ್ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ರೇಂಜರ್ ತಂಡದ ಆರಿಫ್ ಇವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ एंड और गेंदबाजी शुरू करते हुए रोहित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सिर्फ 6 गेंद बाकी उनकी पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 6 गेंद में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सूर्या जो कि 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रोहित सूर्या के लिए। 7 से 8 कदम उनका रन अप। Lofted this time, this could be one more, yes it does, it's crossed over the fence for a huge one. This time it came from the bat of Surya and the scoreboard is now jumping up to 42 now with that consecutive sixes, 2 consecutive sixes in the last 2 consecutive deliveries and with that 2 consecutive sixes the run rate is now increasing, rising now for Rangers। 5 गेंदें अभी भी बाकी, 5 गेंदें अभी भी बाकी हैं और देखते हैं यहाँ पर 5 गेंदों में क्या रेंजर्स के बल्लेबाज अपने टीम को 50 के आंकड़े तक पहुंचा पाते हैं या फिर 50 के आंकड़े के पार ले जा पाते हैं। तो इस वक्त सूर्या छक्का लगाने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। रोहित इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाजी करते हुए और गेंदबाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया कि गेंद शायद वाइड हो सकता है लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद घोषित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 42 रनों पर और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप किया है लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक्स्ट्रा कवर पर गेंद का इंतजार करते हुए स्वीपर कवर पर 1 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा हो चुका है और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। 2 रन सूर्या और टीम के खाते में और कुल मिलाकर गेंदें बाकी है 3 और अर्धशतक तक रन पहुंचने के लिए चाहिए 6 और इस बीच सूर्या एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त अंपायर विकेटों को सही करते हुए और गेंदबाज रोहित अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूर्या इस वक्त सामना करते हुए lofted this time not quite middling it, wicket keeper no he won't get that one और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन दूसरा इंटेलिजेंट थिंकिंग नो वहां पर स्टंप्स के पास कोई भी नहीं था और 3 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े।
तो 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो जहां पर सिर्फ 1 रन बनना चाहिए था, जैसे ही 1 रन पूरा करने के बाद बल्लेबाज ने देखा कि वहां पर कोई बैकअप नहीं है, स्ट्राइकर एंड पर रन के लिए दौड़े, निशाना दागा, निशाना चूका, और जब तक गेंद को दोबारा बैकअप किया जाता, डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका था तीसरा रन प्राप्त करने का। 3 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डरों पर दबाव डालने का प्रयास और 100% यहाँ पर यश प्राप्त करते हुए फील्डरों पर दबाव डालने में 3 रन दोनों बल्लेबाज बटोर चुके हैं बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए। 47 नाउ, एंड नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाज रोहित इस वक्त तैयार। यह गेंद सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए धीमी गेंद थी और रनआउट का मौका इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है। So just a last ball remaining in their innings, and the score is now stays at 47 for the loss of 4 wickets. Kateel appenu kayyerdu sugithudu kaloku jattina javanera tule 6-4 da barsoda birsugu mata serudu step nu padle. So the last ball of their innings is now coming up. Lofted, and this time it's going to be gone all the way, and he just finished the innings in a style with a 6. Fantastic finish for Rangers now. This time came from the bat of unidentified batsman. This time he is identified. Jammu, the batsman, he is identified now. Jammu, who hit a 6 in the last delivery of their innings and finished the innings with a style with a 6. So the innings is up. So Sandy hit a 6 in fact. Jammu remains at the non-striker end, and he finished the innings in a style with a 6. So Rangers started slowly, progressed well, but finished very well with 53 for the loss of 4 wickets. Alla team set and bat ball 10 daand nanna shuru namma cricket ye Dubai da uru da javaneru ottu maldina ee game ye Kateel appenu kayyerdu sugithudu kaloku jattina javaneru tule 6-4 da barsoda birsugu mata serudu step nu padle. Agaddu da birdu da javanere gobbunu tule Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League. ಮುಂದೆ 54 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗಳು ನವೀನ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. Agaddu birdu da javanere gobbunu tule Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League, Kateel Premier League.
ಎಸ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಂಜೆ 5:37 ಸಾಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೀವಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯು ಇನ್ನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಸಮಯ 5:38 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಅನುಭವಸ್ಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಯೋಜಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಕಟೀಲ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ರೋವೆಲ್ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತ 1 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕ 1 ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇಜಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ತನ್ನ ಒವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸ್ತವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯ. 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಜರುಗಿನ ಹೋರಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಅಂಕದ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 2 ಅಂಕಗಳು, 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 53 54 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನವೀನ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 26 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 50 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೈಚಳಕ. ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. 26 പന്തിൽ 52 ലക്ഷം മത്സരം വിജയിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് മത്സരം. ആദ്യ ഓവറിന്റെ 4 പന്താണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീമിന്റെ സ്കോർ നില 4. യാതൊരു വിക്കറ്റ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മികച്ച മത്സരം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് മലിക് മൈതാനം അജ്മാനിൽ. ഒരുപാട് കാണികളെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടോ മത്സരം മാറി മറിയുന്നുണ്ടോ?
जल्दी से जल्द इस मुकाबला को समाप्त करना चाहिए। हम तहे दिल से स्वागत करेंगे दर्शकों को इस श्रृंखला के लिए। पहली ओवर की 5वां गेंद अतिरिक्त अंक पर 4 पर है बिना विकेट नुकसान के साथ। उठा के मारने के लिए कोशिश इस वक्त आसान तरीका से जोड़ अंक 2 अंक जोड़ रहे। देखिए लाउड अपील थी, नकारात्मक निर्णय ले चुकी है रेफरी ने। इस वक्त आखिरी एक गेंद बची है, अतिरिक्त अंक कुल मिलाकर 6 पर बिना विकेट नुकसान के साथ। ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೋವೆಲ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 6 6 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 6. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವಿದೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ರವೆಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಾಂತ್ ರವರ ಬಳಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 8 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗರಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು. ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಪನ್ ಮುಖೇನ ಆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 16 ಅಂಕಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 38 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮಿಡಾನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳಿದೆ. 37 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅನುಭವಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಅಹಂಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅನುಭವಗಳಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲಿಯಾಸ್. ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ. 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಬಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತ. ಎದುರಿಸಿದ 11 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಬೆಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಸಾನ್ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೋಬೆಲ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿಬಿಟ್ರು. 1 ಅಂಕ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ರತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮತ್ತು 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೇಜಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 1 ಅಂಕ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೆಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. समय 5 बजे 50 मिनट समाप्त हो चुकी है. इस श्रृंखला का आने वाला सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. बहुत बढ़िया आयोजन कटील की दौरों के तरफ से. कटील प्रीमियर लीग आसान तरीका से अंक जोड़ रहे. आखिरी 14 गेंद पर 30 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. रोबेल प्रीत क्या कर पाएंगे अपना दौरों के लिए, यह है सवाल. रोबेल और सेजान दोनों बल्लेबाजी लोग अच्छी तरह से अंक जोड़ रहे हैं अपने दौरों के लिए. और इस वक्त उठा के मारने के लिए कोशिश. अब वहां पर गेंद रोबेल प्रीत की अध्याय अंतिम हो चुकी है. देखिए बैक टू पेविलियन रोबेल प्रीत. ವಿಶ್ವಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮೂಲಕ ರೋಬೆಲ್ ಉದರಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ. ನೂತನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ. ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನೆರತುಲೆ. 6-4 ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಣ್ಣನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ತಮ್ಮನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಇದು ರೋಹನ್ ರವರ ಆಗಮನ. आखिरी गेंद, तीसरी ओवर के आखिरी गेंद. इलियास करेंगे गेंदबाजी और रोहन. ದಂಡು ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬೊಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 24 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಉದರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. बारह गेंद पर 30 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. ट्यूलेट डिलीवरी
required to 30 runs. ಲಾಸ್ಟ್ ದ 16 ಬಾಲ್ ಉಂಡು 30 ರನ್ ಅವಡು 24 ರನ್ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ పోతుండు 3 ಓವರ್ ಆಂಡ್ जल्दी से जल्द कितना भी जल्दी तुरंत प्रारंभ होना चाहिए. दोनों रेफरीदारों के लिए इशारा दे रहा हूं. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. तुरंत आरंभ करना चाहिए. आखिरी 12 गेंद पर 30 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए सेजान स्ट्राइक पर उठा के मारने के लिए कोशिश इस वक्त कीपर की दस्तान की पीछे तरफ जा रहे गेंद और 4 रन लेग बाई की तरफ से 4 रन. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದಂಡುಗಾರನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಜನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯುವ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 28 ಅಂಕಗಳು. ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಲಭ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನೆರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನೆರ ತೂಲೆ 6
போறதா பர்சோதா பிர்சுகு மாத்தா சேருது ஸ்டெப்னு பாடலே ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಒಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅಂತಿಮ ದಾಬದಾಗಲ ಉಂಡು ಮಾರ ಪೇಪರ್ ಮೊದಲು ಇದು ಬರುತ್ತೆ
ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್. ತನ್ವೀರ್ ರವರ ಉದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈದಾನ ನಂಬರ್ 1ರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ. ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತವಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 34ರಲ್ಲಿ 3 ಉದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಎದುರಿಸುವರು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುವಾಗ 1 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರದಾರ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಹಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೇಂಜರ್ಸ್. 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 4 ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ, 4 ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 4 ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಓವರ್ಗಳು 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ 6:10 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯತ್ತ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತನ್ನಗಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಮಲಿಕ್ ಮೈದಾನ ಅಜ್ಮಾನಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ
ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡು ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಏಳ್ದು ಸುಗಿತುದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನೆರತುಲೆ 6-4 ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 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 Just coming back to these two teams, and after playing a fantastic performance in this league stage matches, both the teams are qualified for the playoff round, and playoff round in the sense they made to the qualifier number 1, and advantage of playing qualifier number is that after winning this match takes them into directly into the finals. Please note that little bit changes in the rules and regulation of this tournament, in the sense not a rules and regulation, I'm just talking about the format of the games.
qualifier round will be of 4 overs. And because of a shortage of time, organizers decided to reduce the number of hours from 5 to 4, and that means there will be a no power play in this 4 overs. Please note, both the captains, there is no power play in this 4 overs. That means not more than 5 fielders outside the circle in 4 overs. This is the only one changes we are going to make in this qualifier. So just I wanted to say, the United Dhaba and Rangers are the two very good teams are qualified for the qualifier number 1, and it's going to be absolutely one of the good opportunity for the spectators. Those are gathered in a very good numbers in this historical cricket ground, and to witness some very good battle between these two teams to get the place in the mega final. So all set now here for the mega final, and Gopi, welcome back again in this very important match. United Dhaba captain, after winning the toss, they elected to the field first, and the Rangers they were going to the bat first. So everything is going to be ready here. Just the umpires signaling towards our manual scorer, and as even for our online scorer, everyone is ready here. Our commentator is ready, and even the cameraman of Msports is also ready here. So Imran Koteshwara, one of the most destructive batter as far as the cricket is concerned, the hard tennis ball is concerned. I will go into face his first delivery. Mahesh is in the non-strikers, and the bowler Ankit will go into start the proceedings from the far end. Hello. I request all the members of Kateel friends, please be spread in the boundary line as a line umpire. Again, first ball, very interesting cricketing stroke there from Imran in the negation, because he wanted to get a switch it, but after seeing that was very difficult to play the switch it, I just went with the stroke and managed to get the single. So they open the innings. Rangers are 1 without loss of any wicket. That brings Mahesh into strike now, and bowler Ankit will go into ball from the far end. And it's going to be a left and right combination. It's always going to be benefits, isn't it? When there is a left and right combination, it's always going to benefits, because of being the fact that the bad bowler have to change the line and length in each and every time when strikes are rotated. The bowlers have to change that line and length. At the same time, the fielding set has to be changed. So I request again the fielding team to make it fast, and 4 overs match, and Ankit will go into ball a next delivery from the far end. Left out of the wicket, lovely delivery, but just missing the direction in the negation. I thought it might be the ball is well within the reach of the batter, but ball just moving away from the bat of the batter. So ball went to the hands of the wicketkeeper. There is no chance at all for any wicket, but there is a single in the form of extra. So with the extra score, now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. What a fantastic cricket tournament is in progress. After that league stage matches, we are into the playoff round. And you are watching latecomers. Just I want to tell, it's a qualifier number 1 is in progress. Ankit once again back this bowling mark, seaming in from the far end. Balls again the goal, the same direction, identical mirror display of previous delivery, because the same line and same length, and the same reaction coming from the wicketkeeper and the batter as well. So one more addition, with that addition of that single extra run, score now moves on to 3 on the board without loss of any wicket. The strong cool breeze is passing in the ground here, making the condition very cool. And again the Ankit ball lofted that one, not quite getting hold of that one properly. Opportunity for the fielder. Oh my goodness, he dropped the catch. Can you believe this? It's an absolutely golden opportunity to send one good batsman into the pavilion. And team United Dhaba, what could be a very good start for them, as unfortunately Ankit, the bowler, what could be the wicket-taking delivery? He couldn't manage to get wicket, because the fielder at extra cover couldn't manage to get that one. So lucky escape of Mahesh, and the run taken in between, 1 run. So scoreboard numbers on to 4 on the board. Ankit again from the far end. Ball left arm.
around the wicket. Again, one more single has been taken down to cow point region. Sensible batting here from Imran in the negation. Ball almost in the midland off stump. Batsman almost covered his stump and plays it quite soft hand comes into play to get the single down to cow point region. With that single, score now moves on to 5 on the board in the over number first is in progress. Very good start given by Ankit, but both the batters just searching for one big shot. They know that the 4 overs game, there is little margin for thinking, and as far as winning this match is concerned, even team Rangers knows that at least they wanted to get 40 plus runs in this condition under floodlight. It's a different ball game coming to this condition. Again, the Ankit bowling from the far end. Again, not quite getting hold of that one properly, and the batsman wanted to pull that one, but being the fact that the ball, which is not really timed very well by the batsman, ball went into that big wicket region, and ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Ankit will go into ball 5th time in this over from the far end. He's got a very good bowling action. Look at Ankit, how smoothly he's coming from the far end. So far he's creating a little bit problem for the batter. Not given any room for the batter to get any kind of big shot. This time Imran plays it, switch it quite beautifully down to deep backward point region. But protection is already given. And the fielding team captain knows that Imran is one of the fantastic striker of the ball as far as the switch it is concerned. So he's kept one fielder in the backward point and cow point. And it's a good thinking from the captain's point of view, seeing what is the strength of the batter. He's just setting a field. And even Ankit also is bowling as for the field. So left-hand batter is on strike now, Mahesh. Ankit final time in this over. Left arm bounce again, a little bit across the line, swings that one down to mid-wicket region, not more than a single. Again, the very good field set here by the captain here. Again, the ball is coming straight to the hands of fielder. Just a 1 run after a completion of first over, searching for the right track. Rangers managed to score 8 on the board without loss of any wicket. And Gopi, welcome back. DJ, please. And Gopi just coming back to this match. It's a very, very important match, isn't it? The qualifier, everybody knows it's going to be a very big opportunity for both the teams. Just doesn't want to take another chance, because winning this match takes them into the finals. So that I think compared to these two teams, both the teams have got opportunity as well as Kateel appenu kayyedu sugitudu kalaku jettina javanerakulle 6-4 da barsoda birsugu mata serudu step nu paadle agaddu da biddu da javanere gobbunu tule Kateel Premier League फर्स्ट ओवर बेहतर गेंदबाजी करते हैं, तो यहाँ पर 8 रन बन चुके हैं और जीतने वाली टीम सीधा इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त कर जाएगी। तो इस बात से ये दोनों बल्लेबाज वाकिफ है, लेकिन यहाँ पर आउट होने की संभव नहीं है, तो कैच छूट चुका है। कैच यहाँ पर छूट चुका है। अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन गेंद को इस वक्त लपकने में सफल और 3 रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। न सिर्फ फील्डर ने कैच छोड़ा, बल्कि 3 रन उन्होंने प्रदान किए। और सतीश, निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा, ये जो रन है काफी महंगे पड़ सकते हैं जब यहाँ पर यूनाइटेड ढाबा के बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो 11 रन बच चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कम से कम 30 का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे। 40 के आंकड़े तक अगर पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर दबाव United Dhaba के बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। Absolutely, Gopi. The catches win the matches, which is one of the greatest slogan of cricket. But here is a team Dhaba missing the 2 opportunities, isn't it? The 1 catches which is in the first over, that's another catch which is missed in the first delivery of the over number 2nd. And altogether, we can say that Dhaba just missing that golden opportunity to send 2 batters into the pavilion again from the far end. Raja Saligrama, what a delivery that one. Absolutely fantastic short pitch delivery. This is a really want to do and the bowler when the batsman is an aggressive frame of mind. It's not so easy to keep the batsman quiet. The batsman like Imran always wanted to go after the bowler. And again, a very good delivery there from Raja Saligrama. Right above the wicket, lovely change of line. Appeal is going on. They're up
but only the wicket keeper you can see that appealing, but the bowler knows that ball is missing his bat. But what a fantastic thinking there by the bowler. Rajesh Saligrama quickly realizing that batsman going for the switch hit is quite deliberately balled outside the line of leg stump and misses the bat complete. The wicketkeeper so excited behind the stump, but not a confidence. Again the bowler from the far end. Raja starts very well, seaming in from the far end. Right above the wicket, one more delivery, which is again going to be a one more dotted delivery. Now frustration and the pressure straight away into Imran. What a great piece of bowling there from Raja Saligrama. He is really thinking very well. But it's one more problem here for Imran is that he already premeditated. Before bowler going in to deliver the ball, he premeditated. That's why bowler knows that he's going for the switch hit. So he quite deliberately bowling outside the line of leg stump. So that's why a couple of times he couldn't manage to get the ball into his bat. Raja Saligram again bowling from the far end. Right above the wicket, swings at one, but misfield there, but absolutely it was a bad miss. What could be a dotted delivery? That ball is racing towards the fence, towards a deep mid-wicket boundary for 4 runs. Hello. This time Imran breaking the shackle. Hello. Breaking the shackle again. The ball got that one right from the middle part, but quite unfortunate that mid-wicket fielder couldn't manage to stop that one, and ball went into the deep mid-wicket boundary for 4 runs. This time Imran going for the switch, chance of catch there. Fielder, he's got that one. What a fantastic! He's taken a stunner. The fielder Rahul down at short third man region, taken absolutely a magnificent catch. That will going to be a huge wicket here for Daba. ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೇ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಗೇಮ್ ಯೇ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಏರ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನೆರತುಲೆ 6-4 ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ. Thank you DJ. Thank you. So 2 overs completed. After completion of over number 2, I want to know the score. 15 for the loss of 1 wicket, and Gopi coming back to this the one more 2 batters are back into the wicket. Mahesh also returning to the pavilion because of retired out in fact, and that means 2 wickets back into pavilion. So Gopi coming back to this over which is bowled by Raja Saligrama. It's good over, isn't it? One catch which is missed over, but one misfield also. Actually nothing wrong with that bowler, but the fielder not really anticipated very well. But the Rahul's catch definitely is going to be one of the best catch of the tournament. He's taken down as a short batsman, because that's a catch of Imran, who are known to be one of the destructive batsmen, and taking a wicket of Imran, the might be little bit United Daba captain seems to be very happy even after 2 drop catches. Exactly सतीश, यहाँ पर बेहतर कैच लिया है राहुल ने, पीछे की ओर दौड़ते हुए नजरें गड़ाए रखे, और निस्संदेह इमरान का विकेट गिरना कुछ हद तक ड्रॉप बैक साबित हो सकता है। इस मोड़ पर 1 या 2 विकेट और प्राप्त करते हैं जल्द से जल्द गेंदबाज यहाँ पर यूनाइटेड ढाबा के, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। Absolutely, Gopi. Then it can restrict the runs of their opposition, but Imran is certainly is going to be a big wicket. But one thing is sure, Gopi, in this cricket tournament is playing under natural light is different, and playing under light is going to be a different ball game, isn't it? Some different technique need to be implemented, because maybe because of lights are on, ball which is not really coming to the bat, just like what we are seeing in the morning, the day matches, there is a help of wind also. The breeze which is passing strongly, but in the light, under light, it's going to be a different ball game. I'm not saying that it's going to be a high scoring game, but absolutely if we see that for 35 to 40 runs under floodlight, it's going to be a very competitive total. And wait and see from the commentary box and bowler
Prathamesh will go into ball second delivery of this over. Right arm over the wicket balls. Oh, lovely delivery. What a delivery. Absolutely fantastic one. Batsman almost shuffled across the line of the delivery. Tried to get that one down to mid-wicket region, but the bowler knows that he's going for the big shot. He just bowled that one absolutely on the block hold, and the wicket-keeper behind the stump did the rest. Sandy is on strike. Prathamesh. Right over the wicket balls. Again, helicopter shot comes into play. Just a roll of the wrist which comes into play to pick the single down to wide-ish long on. Before the wide-ish long on fielder will go in to collect that one. Ample time for the batter to collect the single. With that single, scoreboard numbers on to 17 on the board in over number 3 in progress. All we can see that the battle is on between the two very good teams to get the place in the mega final of this prestigious Kateel Premier League 2024, the 11th edition we are witnessing here. Again, Prathamesh away from us. Right over the wicket, swings that one down to mid wicket. Chance here for the fielder. He taken the catch. That ball went into the mid wicket region. There is a fielder just waiting for the catch, and ball just landed into the hands of the fielder. The wicket number 3, which is back into favor lane of Rangers. Thank you DJ, thank you. So Gopi, just what you're talking about, some acceleration what you're thinking about from the batters of United Dhaba, and by doing that acceleration, the wickets are also falling here. It's not a good news here for United Dhaba, because losing 1 wicket means, Gopi, out of 24 deliveries, they're losing 1 delivery. So each and every delivery is going to be very important. Losing 3 wickets here means they lost already 3 deliveries out of 24. 6-4 da barso da birsug mata serve step न पाडले. Exactly सतीश सर, 3 विकेट गिर गए, एक तो रिटायर्ड हट हो गई, लेकिन 2 विकेट जो गिरे 2 गिरे और आगर्द बिर्ददा जवान रे गोबुन तूले. ऐसा कहना पड़ेगा, हर गेंद पर रन बनाना जरूरी था. कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग. वो आगे तक करना चाहते हैं और इस बार मौका, और इसी के साथ विकेट गिर चुका, एक और विकेट. तो विकेट के ऊपर विकेट गिरते हुए सतीश, और निश्चित रूप से हर विकेट के साथ यहाँ पर दबाव अब रेंजर्स के ऊपर बढ़ता हुआ. और कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग, कटील प्रीमियर लीग. As the Indigo are strongly back in the game because they picked up a wicket. We are just talking about losing 1 wicket means they are losing 1 delivery, and again they lost 1 more wicket. That means they lost 4 deliveries out of 24. This is all happening. You cannot blame batter for that because there is no option at all. When you are playing the small format of a game like a 4 overs, there is no option. Batter have to look for some acceleration, and by doing that, bowlers has got opportunity to take the wickets, and Suryakanta is out for golden duck. And this is not a good news here for Rangers because they got a Rangers in their batting department, the Rangers, but couldn't manage to convert that one into performance. The new batter in? Samadhi is a new batter in, and Prathamesh is looking so good. He's in a hat-trick now. He's bowling hat-trick delivery. Right over the wicket, lovely delivery. Almost looks like it's going to be a hat-trick, but nicely negotiated by Samadhi in the negation. He managed to get that ball into his bat and plays it down to mid-wicket revision for a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 19. After a long time, scoreboard is moving from 17 to 19, and 1 more over which is comes to an end. After completion of over number 3, searching for the right track, Rangers really struggling in the middle. 17 on the board. Gopi E1 not 6. The run rate what we are talking about is not looks like it's going, never looks like going to be healthy run rate. They lost 4 wicket as well. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 4 विकेट हो चुका है और बेहतर कमबैक अंतिम 2 ओवर में इस वक्त कर चुके हैं यूनाइटेड ढाबा के गेंदबाज. तो अंतिम ओवर का खेल बाकी है और यहाँ पर सतीश ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 10 से 12 रन यहाँ पर बटोरने होंगे यहाँ पर रेंजर्स के बल्लेबाजों को. अगर उनके टीम की कुल रन संख्या लगभग 30 तक पहुँचती है, 30 के पार होती है, तो यहाँ पर चुनौती भरा लक्ष्य यहाँ पर वो प्रदान कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज शुरू करते हैं. तो यहाँ पर अंतिम ओवर में इस वक्त हावी होगा बल्लेबाजों को.
गेंदबाज के ऊपर, जहाँ तक गेंदबाज का सवाल है, इस अंतिम ओवर में उन्हें किफायती गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। फिर कुल मिलाकर ये अंतिम ओवर दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा सतीश। Absolutely, the last over certainly is going to be very important for Rangers there. At least they wanted to get some 10 to 15 runs up. First ball right up over they get going. Oh my goodness, ball is hitting the face. Ball just hitting the face of the batter. It's definitely going to be a very, very painful, I want to say, because ball which is hard in the nature. And the 10x ball which is used in this particular tournament is very, very hard in the nature. And when a ball which is hitting the face means it's certainly, it's not the first time I'm seeing that. 2-3 batters already got hurt by ball hitting the face. Very good directed bouncer there from the bowler in that occasion. Byros is the bowler who's got a very good short pitch delivery. Sandy. 5 deliveries remaining. Just like we just mentioned, it's going to be a 5 deliveries very important for Rangers. Left arm. All the wicket again going for the big swing of the bat. Not more than a single. Of course, Byros will not going to mind about this single. You know exactly this is the last over. I want to prevent the boundaries and sixes. So far 2 deliveries. There is only 1 run conceded by the bowler. That means it's a good going in the last over. And here is a Sandy back on strike. Sandy is a kind of batter who can be a very handful at any situation. He knows that just 4 deliveries remaining and you need to get at least 1 or 2 big shots in that 4 deliveries. Byros bowling from the commentary box end. Samad is the striker, a little correction. Left arm. Ball. Oh my goodness, he's balled him. Clean him up. Ball whisked like after having a little bit inside edge of the bat. Ball fell into the stump. The 1 more wicket is back into pavilion. Rangers are looking in a deep trouble. $20 for the loss of 5 wickets. What a great delivery that coming from the hands of Byros. Absolutely, after getting that ball inside edge of the bat, and somehow they wanted to get that one onto mid-wicket region, and ball just fell into that. This is what I'm talking about, Gopi. The difference between playing in daylight and playing in under floodlight. It's always going to a different ball game, isn't it? This is what I can see, that the Rangers are so far in this tournament, batters are dominated. And all instead of when floodlight which is switched on, you can see that the batter is really struggling here. And now the bowler will go on to continue. So far he's looking so good. Pritham Ram is a batter. Again off the backward turns that one on to square leg region, not more than a single. With that single score, but moves on to 21 on the board. And the last 2 deliveries remaining in the innings of Rangers. And the last 2 opportunity, I want to say, last 2 opportunity for Rangers, at least out of 2, if they manage to get 1 big shot, then it's going to be a little bit satisfaction here for the captain of the side. They will going to depend at 25 to 30 runs, unless it's going to be difficult for them to win this match. Again, the bowler bowling away from us. Left arm over the wicket, ball lifted it, lofted it. It's going to be opportunity for the fielder, and he completes a catch as well. So 1 more wicket back into pavilion. Absolutely, Rangers. The wickets are tumbling like a house of cards. The Pritham Chammu is the batter. Is the bat back into pavilion. Try to get a big shot, and Sandy, little correction, is the batter, is back into pavilion. Try to get the big shot on the mid-wicket region. Again, not quite getting that one from the middle of the bat. Looks like after that lights are on, the ball which is not really coming to the bat. If you see that batsmen are really struggling to get the timing behind the stroke. And bowlers have started to dominate. That means I think the 25 to 30 runs always going to be depending. Again, just talking about the last delivery of their innings is coming up. Satish Acharya is the batsman. They're going for the single. Definitely they come for a second because the last ball they want to take a chance, and it's not a good run to return the appeal for run out. Umpire says no, they're going for the third, but just as a sider, I want to say only 2 runs and couple of runs in the last delivery of their innings. So Rangers will go into finish their
4 overs quota at the score of 23, and they set a target of 24 to win the match for Team United Dhaba. And I wait and see how well United Dhaba will going to get this 24. But I want to say this match is going to be interesting because even the looks like the 24 is a little bit less score to defend. But ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ 10 ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಶುರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ದುಬೈದ ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಏರ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನರತೂಲೆ 6-4 ದ ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗ್ ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ದುದ ಬಿಡ್ದುದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 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 बेहतरीन गेंदबाजी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर अगर उन्हें यूनाइटेड ढाबा के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना है तो देखते हैं इस क्वालिफायर मैच नंबर 1 में क्या होता है और विनर्स ऑफ दिस मैच स्ट्रेट अवे गो इनटू द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कंपटीशन। तो इस वक्त कई हल माइक चेक हल तो इस वक्त देखते हैं इस मैच में विजय कौन दर्ज करता है और स्ट्रेट अवे इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में कौन सी टीम प्रवेश प्राप्त करती है। तो क्वालिफायर मैच नंबर 1 यहाँ पर खेला जाता हुआ और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद हैं, राजू सालिग्रामा और दूसरे बल्लेबाज जो कि इस वक्त यम्बी इस वक्त सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज यम्बी। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराए, बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद रन्स नहीं मिला बल्लेबाज को। तो अगले मैच में वराह रूपा ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि लिया है एलिमिनेटर दौर के बाद में। तो क्वालिफायर मैच नंबर में इस वक्त एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर जारी है और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इलियास और बाएं हाथ के बल्लेबाज एमबी इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। So what a fantastic struck came from the bat of MB
ऐसा कहना पड़ेगा। थोड़े से सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ उछाल दिया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान और चौका प्राप्त करते हुए। और जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया, कुछ ऐसे ही शुरुआत की इस वक्त जरूरत है अगर उन्हें 24 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो पॉजिटिव स्टार्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, धनात्मक शुरुआत यहां पर कर चुके हैं एमबी। चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान। अब ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, और देखना है कि गेंदबाज के ऊपर जो दबाव बना हुआ है उस दबाव को हटाने के लिए इस वक्त वो किस तरीके का अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं अगली गेंद पर गेंदबाजी में। और इस बीच इलियास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, एमबी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट विकेट कीपर यहां पर करते हुए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है। ऑफ साइड पर कोई फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक फील्डर दिखाई दे रहा है लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडर, और कोई डीप एक्स्ट्रा कवर नहीं, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन नहीं। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। और अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, 4 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। और चौका प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर बेहतर कमबैक यहां पर इलियास कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट, लेफ्टी बॉलर टू द लेफ्टी बैट्समैन, अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर और कुछ ज्यादा बाहर तो नहीं निकल रही थी इस वक्त। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह क्वालिफायर मैच नंबर 1 कटील प्रीमियर लीग 2024-2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 2 टीमों के बीच इस वक्त संघर्ष जारी है। इलियास, ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला है, गेंद फील्डर शायद काफी पीछे है, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को काफी ऊंचा इस वक्त उछाला था जरूर, काफी देर तक गेंद हवा में थी लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर मौजूद थे काफी पीछे, मिड ऑन पर कोई फील्डर नहीं था और जब तक वो दौड़ कर आए गेंद तक, गेंद को लपकने का प्रयास करे, गेंद उनके आगे टिप्पा खा चुकी है, इस वक्त पिच हो चुकी है और इस बीच बल्लेबाज के पास काफी समय अवकाश था 2 रन प्राप्त करने का। तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इलियास एक बार फिर से तैयार। Again, swings this time, but straight to field, deep mid wicket. Clean collected, just inside the fence. The batsman got only a single for that stroke. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 7 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। और सतीश, निस्संदेह यहाँ पर अगर रिक्वायर्ड रन रेट को देखा जाए तो एक बेहतर शुरुआत कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेंजर्स के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में जहाँ तक मेरी याददाश्त है 10 या 11 रन बटोरे थे, उसके बाद कमबैक किया था यहाँ पर यूनाइटेड ढाबा के गेंदबाजों ने। तो यहाँ पर रेंजर्स के गेंदबाजों को कमबैक करना है इस वक्त, तो निस्संदेह जिस तरीके की गेंदबाजी 3 ओवर में यूनाइटेड ढाबा के गेंदबाजों ने अपनाई थी उसी तरीके की गेंदबाजी इस वक्त अपनानी होगी। घातक गेंदबाजी खासकर रेंजर्स को इस वक्त करना होगा। Well, Gopi, absolutely you are talking about, but the benefit of chasing the runs is that they absolutely knows the target in front of them. So they are playing as per the condition required. Knows that they needed exactly 6 runs per over. They started well. They got a 7. That means they are very much on the track of winning this match because but consistent of getting 7 runs, 6 runs in each and every over, I don't think it's going to be a big ask. But cricket, everybody knows, is unpredictable game. Just like I mentioned, 11 runs which came from the first over for the team Rangers, and afterwards the downfall started. They started to lose the wicket and run rate which is coming down, and they got only 23. So such kind of comeback is badly required. Exactly, सतीश, देखना यह है कि अगले इस ओवर में जो इस वक्त शुरू हो चुका है बल्लेबाज क्या करते हैं। तो डाउनफॉल पहले ओवर के बाद शुरू हुआ था रेंजर्स की पारी में और यहाँ पर देखना यह है कि यूनाइटेड ढाबा की पारी में भी वही सिलसिला यहाँ पर दोहराता है या नहीं। तो पहली गेंद डॉट इस वक्त हो चुकी है, विश्वा गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 17 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए। ये गेंद फुल टॉस, स्विंग्स एंड दिस टाइम चांस आउट, ड्रॉप्ड बाय द डीप मिड विकेट फील्डर। That was a straightforward chance gone in vain. हालांकि गेंद के नीचे अंतिम क्षण में वो आ गए थे लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो जीवदान मिला और जीवदान के साथ बोनस के तौर पर 1 रन भी उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 विदाउट लॉस, 16 बॉल्स लेफ्ट, 16 रन रिक्वायर्ड। द इक्वेशन स्टैंड्स
exactly the same. All 10 wickets they got kept intact. और बराबर का टक्कर यहाँ पर जारी है. अब पहली बार राजू सालिग्रामा यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुका है. जहां तक राजू सालिग्रामा का सवाल है, वहां पर बी ग्राउंड में जो मैच खेला गया था उनमें 3 लगातार छक्के वो लगाए थे और 200 दिरहम का कुछ इनाम उन्होंने प्राप्त किया था. 3 लगातार छक्के, तो यहाँ पर 3 लगातार छक्के लगाने की उतनी जरूरत नहीं है. यहाँ पर सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है और देखना है कि राजू सालिग्राम किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. तो गेंदबाज विश्वा इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और राजू सालिग्रामा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. राजा सालिग्रामा, और जहां तक सवाल है इस वक्त राजा सामना करते हुए इस वक्त विश्वा की गेंदों का. विश्वा अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में है. 2 डॉट गेंदे. गुड स्टार्ट फॉर द बॉलर विश्वा. 2 डॉट गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं, 1 सिंगल प्रदान कर चुके हैं. कुल मिलाकर 3 गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं और रन इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर. 15 गेंदे बाकी, 16 रन चाहिए. 16 to get from remaining 15 deliveries. What a fantastic first qualifier match is now progressing here under this prestigious cricket tournament, Kateel Premier League 2024. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. इस बार फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को चाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. इट माइट बीन कंसिडर्ड जस्ट इनसाइड द फेंस और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. विकेट एक्सपोज करते हुए, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया. स्क्वायर ऑफ द विकेट, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए और आखिरकार बल्लेबाज 2 रन प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के. और राजा सालिग्रामा अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. विश्वा फिर से एक बार तैयार. अब तक उनका ये बेहतर ओवर साबित हो चुका है. दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट. फील्डर जी नहीं वहां पर मौजूद हैं लेकिन काफी पीछे, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. ऑफ द बैक फुट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. 12 रन बन चुके हैं. 5 रन 5 गेंदे इस ओवर में विश्वा प्रदान कर चुके हैं और स्कोर है इस वक्त 12 रन. गेंदे बाकी है 13, रन चाहिए 12. द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और बिल्कुल लगभग ऐसा कहना पड़ेगा. अब काफी देर के बाद कुछ हद तक सन्नाटे भरा माहौल, पिन ड्रॉप साइलेंस यहां पर छा चुका है और दर्शक इस वक्त दिलचस्पी के साथ मैच का मुआयना यहां पर कर रहे हैं. तो निस्संदेह करनी भी चाहिए. मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर यहां पर रुक चुका है. इस ओवर में अंतिम बार विश्वा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट राजा के लिए. यह गेंद स्वीप किया इस वक्त इंप्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद जाती हुई बैकरो थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर. काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14. और सतीश पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 7 और 2 ओवर में चाहिए 10. अब इक्वेशन कुछ हद तक आसान और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा रेंजर्स को एक घातक गेंदबाजी इस मैच में वापस ला सकती है. Exactly, Gopi, and very noticeable thing in this 14 is that without loss of any wicket, this is one of the biggest problem for defending team, isn't it? At the same time, Gopi, maybe it was a little bit difficult one for Rangers to defend this match, but difficult road often leads to beautiful destination. And what they need to do here is that even they thought that it might be the 10 runs, but they need to defend, but need to try that one, isn't it? The self-confidence is always going to be key for the success. And both the bowlers, of course, just third over is going to start here from the commentary box. And in this particular over, if the bowler manages to stop the batsman, restrict the batsman by 2 to 3 runs, then it's going to be a very good last over in front of very good spectators. And it's nothing like that everything is out of the hands of Rangers. They can try for that 10 runs because 12 balls, first 2-3 delivers definitely going to be very important for bowlers to get economical, and afterwards it's going to be more interesting because I already mentioned, Gopi, it's not an easy game under floodlight and you need to work hard for each and every run, and that's what the bowlers have to count for that. And Imran is the one being a very experienced campaigner for the side of Rangers. He will definitely going to try for that. But I think these batters knows that just a sensible batting, isn't it? Just a sensible batting required for them to get into the final of this Kateel Premier League 2024. Exactly, सतीश. यहाँ पर दबाव को जो झेलेगा वही यहाँ पर इस मंजिल तक पहुँच पाएगा. तो यहाँ पर 12 गेंदें 10 रन, इक्वेशन आसान, लेकिन इस वक्त सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है. रेंजर्स के लिए कमबैक करने का मौका जरूर है. एक बेहतरीन ओवर उन्हें इस मैच में वापस ला सकता है और उस बेहतरीन ओवर की तलाश में
गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इमरान, और इस वक्त जो कि सामना करने के लिए तैयार एमबी। तो इस वक्त दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए, और पहला क्वालिफायर मैच इसी श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ अंडर फ्लड लाइट्स, ये मैदान काफी झगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आता हुआ। और इस बीच पहली गेंद लेकर इमरान तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंचे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर काफी पीछे मौजूद, नॉट बाउंड मिडफील्ड इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज दूसरा रन लेने में कुछ दिलचस्पी, खास दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है, 15 रन, 11 गेंदें बाकी, 9 रन। निस्संदेह इस वक्त घातक गेंदबाजी की सख्त जरूरत रेंजर्स के गेंदबाजों को इस मैच में कम बैक करने के लिए। धीरे धीरे ऐसा कहना पड़ेगा, दिस ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप फॉर यूनाइटेड ढाबा। और एमबी और राजा सालिग्रामा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए यहाँ पर सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इमरान तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए। और जहाँ तक सवाल है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के फील्डर को, उन्होंने वहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर के फील्डर जो कि काफ़ी पीछे थे ठीक सीमा रेखा के पास, उन्हें पुकारा और कहा कि भैया आप 20 गज के दायरे के अंदर आ जाइए। और इस वक्त गली पर जो फील्डर थे उन्हें इस वक्त भेजा गया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन ठीक सीमा रेखा के पास, इस पूर्वानुमान के साथ कि बल्लेबाज यहाँ पर एमबी कुछ रिवर्स शॉट, नहीं माफ कीजिए, राजा सालिग्राम रिवर्स शॉट खेलेंगे इस बार, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया, गेंद पहुंचती इस वक्त मिड ऑफ पर, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, 1 रन 2 रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला लेकिन थ्रो में काफी धीमा। और इस बीच 2 रन बल्लेबाज के खाते में जुड़ चुका है, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन, 10 गेंदे 7 रन। तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ यूनाइटेड ढाबा का, और निस्संदेह यहाँ पर रेंजर्स के गेंदबाज को डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त जरूरत है। और इस बीच इमरान एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट करते हुए, हर गेंद के बाद वो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और इस बीच राजा सालिग्रामा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, मिसफील्ड बैकअप होता हुआ वाइड लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर थोड़े से पीछे, नॉट मोर देन अ सिंगल, हाफ स्टॉप इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने किया था। और आखिरकार जब तक बैकअप किया जाता गेंद को 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, 18 रन, 6 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी। द इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ यूनाइटेड ढाबा। और दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, और कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस मौके पर इस वक्त अपनानी चाहिए उन्हें, और फिर से अपने स्थानों पर लौटते हुए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद oh, terrific, and he just got rid of the batsman, caught behind the wicket, and at last the bowler got the breakthrough. MB the man departs, गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर आई थी, गेंद को पीछा करना चाहा, सेंसिबल क्रिकेट अपनाना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पुश करना चाहा, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा यहां पर टकराता हुआ और गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। तो सतीश यहां पर विकेट गिर चुका है एमपी का, तो शायद ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है या नहीं, आप कहिए। Well, Gopit, just open the gate, I want to say. Just a little bit open the gate for the fielding team, because getting the wicket means the new batter coming to the middle. And whenever the new batter coming to the middle means the opportunity for the bowlers to get 1 or 2 dotted deliveries. Because it's not so easy. It's not so easy for any batter to come and get high in under floodlight. I already mentioned it's a different ball game. So, golden opportunity for fielding team Rangers to benefit that wicket, isn't it? Got the wicket, but have to bowl another 2 good deliveries, because 1 wicket is not good enough for Rangers to win this match. But at the same time, losing 1 wicket of Emi Shetty, maybe they are even a chasing team also. Dhaba is not going to feel pressure here, because the run required here is 6 and deliveries remaining is 8. बिल्कुल सतीश, गेंदे ज्यादा है, रन्स कम है, और यहाँ पर डॉट गेंदे और विकेटों की सख्त जरूरत है यहाँ पर वापसी करने के लिए। 1 विकेट यहाँ पर गिर चुका है, इमरान कुछ हद तक उत्साहित हो चुके हैं। नए बल्लेबाज बातिसन इस वक्त सामना करते हुए इमरान की गेंदों का, यह गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया, 2 कदम आगे निकलते हुए गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, डेंजर एंड पर थ्रो पहुंचता हुआ नजदीकी मामला, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे, थ्रो थोड़ा सा वाइड था, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन, अब 7 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए। और सेंसिबल क्रिकेट यहां पर नए बल्लेबाज बातिसन ने अपनाई थी, 2 कदम आगे निकले और हल्के से गेंद को इस वक्त फुल टॉस गेंद को फ्लिक कर दिया ऑफ द टोज,
डीप मिड विकेट पर 2 रन के लिए मिड विकेट फील्डर की बाईं ओर से। और इस बीच गेंदबाज इमरान तैयार गेंद के साथ रन अप में इस वक्त दौड़ते हुए, शायद गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 7 गेंदें 4 रन चाहिए विजय के लिए। 4 to get in remaining 7 बॉल्स। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद पैरों पर टकराई, रन से मिलेंगे 21 for the loss of 1 wicket. Leg by declared by 3 overs completed, 6 balls remaining, 3 runs required. और अब ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर रेंजर्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी यानी मैजिकल बॉलिंग ही इस मैच में वापस ला सकती है। सतीश। Well, Gopi, exactly the magical and miracle what need to do here, isn't it? Rangers have to bring one bowler and who did a miracle before, isn't it? Because yes, we are just talking about the possibility of winning this match is definitely going to be a very important that they need to bring one good bowler who can do the magic. Meanwhile, I request for the next match, both the teams please get ready because immediately after this match, the fielding team have to enter the ground. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So last over going to start here and 3 runs required for the victory. The last over going to start from the commentary box and 3 runs required for United Dhaba to enter into the final of this prestigious Kateel Premier League 2024, which is proudly organized by Kateel friends, Kateel team friends Dubai. John Raja definitely is looking for some magic, just like my friend Gopi is mentioning about some magical bowling which is badly required for to win this match. And well, wait and see how well the John will go into bowl that magical over. In front of him, the right-hand batsman. Batism is a batter now, plays it quite nicely down to fine leg region, ball running down to fine leg region, 2 fielder behind the ball, and before the 1 fielder will go to get that one, ample time for the batter to complete the 2 runs. Scores are level. Just 1 run required for the victory, and I request the next team, please get ready. And a team which is going to play a eliminator round, Harasa Warriors as well as Varaharopa. I request both the teams, please get ready for the next match, and fielding team especially I request please get ready and please enter immediately after this match. Now just 1 run required for the victory. Looks like, Gopi, just a formalities left in this game, isn't it? Because 5 balls, 1 run, they got 9 wickets and no need to panic at all in that occasion. But we can see that test match field set here for the right-hand batsman because just a single required for the victory. Right arm over the wicket. Delivers, he finished the match in a style. 1 bounce into the fence and Team United Dhaba entering into the mega final of this prestigious Kateel Premier League 2024 by defeating Rangers in the qualifier number 1. And congratulations for winning team. Nothing much lose heart here for Team Rangers because they got one more opportunity. And after that eliminator round, the winners of that eliminator will going to face United Dhaba in the qualifier number 2. So now it's a time to announce the man of the match. I request Byros of Team United Dhaba, please come and collect your man of the match for your wonderful performance from the ball and the bat. ಹಲೋ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಯೂರೋ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕುಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕುಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much. Hello. Welcome for all the dignitaries for this prestigious cricket tournament. Those who are supported for the success of this cricket tournament, and on behalf of organizers, Kateel Friends Dubai would like to give special thanks to all the donors, so those who are supported wholeheartedly for the success of this cricket tournament. So now is the time for the eliminator round. Aras Warriors will going to take Varaharupa Mangalore in the eliminator round. Hello. Now it's the time to change in commentary box here. Now it's the time for ask our two and other co-commentators. I would like to invite Rupesh Pujari. So warm welcome, sir. First time we are sharing mic with Rupesh Pujari and another commentator, Ashraf. And welcome back, Ashraf and Rupesh, for the eliminator round. Thank you. Hello. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ರೂಪೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಅಶ್ರಫ್ ತರುವಾಯಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 11 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವರಹರೂಪ ಹಾಗೇನೆ ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತದ ಜವನೆರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ವರಹರೂಪ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಂಡಿಗತನದಲ್ಲಿ ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹರ್ಷದ್. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ತೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೂಪೇಶ್ ಅವರೇ, ಸಮಯ 7:10 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸಾಗುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಬಂತು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಹರ್ಷದ್ ಮುಖೇನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ವರಹರೂಪ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಷದ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಶಿವ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಶಿವರವರ ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶಿವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜ್ಮಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಮೈದಾನ, ಶಾರ್ಜಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವರವರ ಉದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡೆ. ಕೌಶಿಕ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಕೌಶಿಕ್ ಎಡಗೈ ಮಾದರಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಕೌಶಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸುನೀಲ್ ಇವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು 11ನೇ ವರ್ಷದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನಿಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ್ ರಾಗಿರಬಹುದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರಹ ರೂಪ ಹಾಗೆಯೇ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಬಂತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ದಿಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಒಂದು ಸುಲಭ ಬೌಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಗೊಳ್ಳದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ನೋಡಿ. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಾಂಡಿಗಳು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯತ್ತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ರೂಪೇಶ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷದ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲ 2 ಕೌಶಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಹರ್ಷದ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವರೆ. ತದನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹರ್ಷದ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೌಶಿಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷದ್ ಟು ಕೌಶಿಕ್. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 11. ಹರ್ಷದ್ ಟು ಕೌಶಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಆಗಿದೆ. ಕೌಶಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಕೌಶಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಾಂಡಿಗವನ್ನ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ದಿನೇಶ್ ರೈಯನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ತೌಸಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್. ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 11 ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ಷದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗತನ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಕೌಶಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ತಂಡ ಕೂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಿನೇಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತೌಸಿ, ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಮುಸಾಮಿಲ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕುಬಾದಲ್ಲಿ ಮುಸಾಮಿಲ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ವರಹ ರೂಪ, ಹಾಗೇನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಕ್ಷಿತ್. ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್. ದಿನೇಶ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯತ್ತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ರೂಪೇಶ್ 5 ಅಂಕಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಒದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕದ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅರಿದು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಈ 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ರಕ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂದರೆ ಇದು ಹಬ್ಬವೇ ಹಬ್ಬ. 2024 ಸಂಭ್ರಮದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ 11ನೇ ವರ್ಷದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುವುದು ಇದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರಹಾರೂಪ ವರ್ಸಸ್ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಸ್ ಆಗನೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಸ್ 3 ಕೂಡ 3 ಓವರ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ತೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್, ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ನಾಡೆ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಸಫ್ವಾನಿನ ಅಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಸಫ್ವಾನ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಯೋಧ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಇವರು ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಯೋಧ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟೋ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿವರ್ಸಿಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4 ಅಂಕಗಳ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕೊಂಚ ಗಳಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12 ಅಂಕಗಳು. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು KPL ಸೀಸನ್ 11 ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಧಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 12 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ 2 ಓವರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬಿಟೌನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವುಗಳು ಗುರುತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜನೆಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಫಿ ಬಾಯ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫೈಸಲ್ ಬಾಯ್,
ಇರುವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರನ್ನ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ತೌಸಿ ಗುರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಭರತ್ ಗುರು ಜೀವದಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಮುಸಾಮಿಲ್ ತೌಸಿ ಗುರುರಾಜ್ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಗುರುರಾಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರರಿಂದ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಗುರುರಾಜಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಂಬಿಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿವಾಣವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 14 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಾಮಿಲ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರ, ಅದೇ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಲತೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಮುಸಾಮಿಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರು ಹಾಗೇನೆ ತೌಸಿ ಕೂಡ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ರೂಪೇಶ್ ರವರೇ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 16 ಅಂಕಗಳು. ಇನ್ನುಳಿದ 1 ಓವರ್ ಮತ್ತು 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ತಂಡ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತೀರಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40ರ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಷಡ್ಕ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ 40ರ ಈ ಮಧ್ಯ ಉತ್ತರಗಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ ബീടോൺ സ്ഥാപനയുടെ ഓണറായ സർ ഹരിപ്രസാദ് ഷെട്ടി അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും കട്ടീൽ ഫ്രണ്ട്സ് പരമായി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആദരത്തോടെ ഇവർ മത്സര പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. യുണൈറ്റഡ് കാബോ ഇവർ സംഘസംസ്ഥയുടെ അസക്രിയ കാര്യകർത്തന്മാർ തന്നെയാണ് ഷാഫി ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസൽ ബൈ. ഈ 2 പേർക്കും വളരെ ആദരത്തോടെ ഇതാ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ മത്സരം രംഗത്തിലേക്ക്. യെസ് ಮುಂದುವರಿಸಿ ರೂಪೇಶ್ ಅವರೇ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಬೀಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಸಾಮಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಯತ್ನ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಂಕಾಂಶ ಬಳಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ഇത്രയും നല്ലൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണികളെ നല്ലൊരു ശക്തികളുടെ കൈവാടം തന്നെയാണ്. അത് തീർച്ചയായും പറയണമെങ്കിൽ കിഷോർ ഷെട്ടിയാവട്ടെ, സുനിൽ ഷെട്ടിയാവട്ടെ, സൂര്യകാന്ത് സാറാവട്ടെ, ജീവൻ സാറാവട്ടെ, പ്രദീപ് സാറാവട്ടെ, ഈ എല്ലാ പേരുകൾക്കും നന്ദി കടപ്പാട് ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയാണ്. നല്ല രാത്രിയും പകലുമായി ഇവർ പരിപാടിയിലേക്ക് അധ്വാനം ചെയ്ത ശക്തികൾ തന്നെയാണ് ಇವರೆಲ್ಲವರು. ತದನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಇದಾದ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ. ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ, ನೋಬೋಲ್ ಬೌಂಡರಿ, 5 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಾಲ. बैट और बाइस ओके. ಎಷ್ಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ ಮಧ್ಯ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ತಾನ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ವರಹ ರೂಪ ಹಾಗೇನೆ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತದೋ ಆ ತಂಡ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಸಫಲತೆಯ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸಫಲತೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ KPL ಸೀಸನ್ 11 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಎಸ್ತಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 25, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು 3 ಓವರ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯ ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 11 ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಫಲತೆ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ, ಸಫಲತೆ 2 ಓಟಗಳು. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಡಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ರೇಂಜರ್ಸ್, ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ವರಹ ರೂಪ. ಈ ಒಂದು 4 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ತಾನ ವರಹ ರೂಪ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಸಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ತೌಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿದಂತ ತೌಸಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls remaining. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೇನೆ ನವೀನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಟ್ರೋಫಿ ಆವೃತ್ತಿ 5 ಡೇ ನೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 2024 ಸೀಸನ್ 5 ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾರೀಕು 18 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಟ್ರೋಫಿ ಆವೃತ್ತಿ 5 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಫಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫೈಸಲ್ ಬೈ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಕೀರ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಶಿಕ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದಿಲ್ T5 ಮೆಂಬರ್ ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 5 ಕ್ರಿಕೆಟ್ 18 ಸಂಡೇ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ ಶಾರ್ಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ UAE. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ತಂಡ. ഒരു നല്ല മത്സരം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും മലിക് മൈതാനം അജ്മാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചു. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളാണ് 2 മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് നാം കണ്ടത്. ഇനിയും മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു മത്സരരംഗത്തിലേക്ക് വന്നതായ എല്ലാ നല്ലവരായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വളരെ ആദരത്തോടിതാ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ കട്ടീൽ ഫ്രണ്ട്സ് തീർച്ചയായും ഇത്രയും നല്ല ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മൈൻ സ്പോൺസേഴ്സ് വളരെ ആദരത്തോട് നന്ദി കടപ്പാട് പറയേണ്ട ലക്ഷ്യമാണ്. ഇവിടെ വിദ്വാൻ ഓയിൽഫീൽഡ് എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് LLC അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായി തന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബാരൽസ് ദെൻ റേഞ്ചേഴ്സ് ഈ 2 ടീമിനും വളരെ ആദരത്തോട് നന്ദി കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. കോ സ്പോൺസറുകളായി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓറഹറൂപ്പ മാംഗ്ലൂർ, മൈമ റെസിഡൻസി ഹുബ്ലി, ബി ടൗൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബാർ, GT ടയർസ് സപ്പോർട്ട് സ്പോൺസറുകളായി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ടാലന്റ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ്, ദാബ റെസ്റ്റോറന്റ്, സോഷ്യൽ മസാല, ശ്രീ കട്ടീൽ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ്, റാക് പെട്രോളിയം മെറ്റീരിയൽസ് ട്രേഡിംഗ് LLC. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ വെൽ വിശേഷായി ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸಾಲಾ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಈ ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಬಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓನರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಹರ್ಷಾದ್. ದುಬೈ ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೇನೆ ಹರ್ಷಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್.
ಚೆಕ್. ಹಲೋ, ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 3 ಓವರ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್. ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 11 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡು ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ವರಹ ರೂಪ ಪರವಾಗಿ ಕಪ್ತಾನನ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೌಶಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸ್ತಗಾರ ಕೌಶಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೌಶಿ ಈ ಬಾರಿ ಅರಸ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ಕಾಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಾಲ್, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರಹ ರೂಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರಹ ರೂಪ. ಹಾಗೇನೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರಸ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರ್ಮಾನಿಕರು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೌಶಿ ಟು ಹರ್ಷದ್. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷದ್ ಸತತವಾಗಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 11. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಹರ್ಷದ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ಉದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರಹ ರೂಪ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡು. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಹರ್ಷದ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. दोनों दौरों की एक्स्ट्रा प्लेयर तुरंत आना चाहिए. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಪರ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ 7 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷದತ್ತ ಸಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಶಾಟ್. ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದ್ರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 2 ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಡಿನ ಮೂಲಕ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 6 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆ. ಹಲೋ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅರುಣ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟೋ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರುಣ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅರುಣ್ ಇವರಿಗೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಅನೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಅನೀಶ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅನೀಶ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. 2 ಸುಲಭದ ಸವಾಲು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. 2 ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸುವುದೇ ಆದರೆ 9 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಉದರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಅಂಕಗಳ അവಶ್യകത ಇದೆ ನೋಡಿ. 18 പന്തിൽ 24 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമിരിക്കുമ്പോൾ മത്സരം മാറി മറിയാൻ പോവുകയാണ്. ആരിക്കാണ് വിജയം, ആരിക്കാണ് പരാജയം, എല്ലാം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നു അജ്മാൻ മൈതാനത്തിൽ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಡೂಮ್ಯಾಕ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಲಿಕ್ ಮೈದಾನದತ್ತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸೊಬಗಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಹಬ್ಬವೇ ಹಬ್ಬ, ಸಂಭ್ರಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಳೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೂರ ಸರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಕರುನಾಡಿನ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿದೇಶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಿಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಎಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಅಂಕಗಳಿರುವಾಗ ಅಲ್ಫಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸೀವರ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಡೂಮ್ಯಾಕ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ LLC ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಡೂಮ್ಯಾಕ್. ಗಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ಉತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಂಡುಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ದಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನದತ್ತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. 1 ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಶಿವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿವ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇದರ
ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಶಿವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಶಿವ್ ಹಿಮಾಲಯ ತಂಡದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಶಿವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭವಿತ್ತು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ಆಲ್ಫಾಸ್ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಡಿತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು, ಜೀವದಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಫಾಸ್ ರವರಿಗೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 12 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊರರೂಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ತಂಡ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಹೊರರೂಪ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಬು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಸುಲಭ 2 ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶಾಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ಬೀಟ್ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಒಂದು ಅಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, 2 ಅಂಕಗಳು ಲಭ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16 ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ವರಹರೂಪ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾಫಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರಹರೂಪ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ. ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ, ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ನೋಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. दूसरी ओवर के अंतिम गेंद, रंडाम ओवरिंದ ಅವಸಾನತೆ ಬಂದ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 13 ಬಾಲ್ಡ್ 15 ರನ್ ಆವಡು 18 ರನ್ ಆತನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಡನುಳ್ಳರ್ ಬಾಲ್ ಕೀಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ 25 ಬಾಲ್ 1 ರನ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು. ಈ 1 ರನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆದಿಕೊಂಡು 10 రెడ్ వికెట్ పోతుండు. కడేత 14 బాల్డ్ 14 రన్ ఆవడు. కడేత 14 బాల్డ్ 14 रन आउट. ये मैच विन आउट जितना आखिरी 12 गेंद पर 14 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. मैच हाई वोल्टेज पर जा रहे. देखिए किसकी बारी जीत है, किसकी बारी हार है, सभी सवाल सामने दर्शकों के सामने. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರರು. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು ಎರಡೂ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೂಮ್ಯಾಕ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ, ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ, ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ, ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಎಸೆತಗಳು ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಲಿಕ್ ಮೈದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಿಮಾಲಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಹರಿಪ್ರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊಗಸಿನ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ, ಕುಂದಾಪುರದ ಪರಿಸರ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಕ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸರು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಶಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಹರಿಪ್ರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಹರಿಪ್ರದ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಖಂಡಿತ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚೆಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ರವರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಂತಿಮ 10 ಎಸೆತ 12 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆ ಚತುರತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ 3 ತ್ರಿವಳಿ ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್? 3 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾರ್ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಶಾರ್ 3 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 24 ಅಂಕಗಳು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 9 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 9 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು, ಎಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 4 ಅಂಕಗಳು. ಈ 4 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. आखिरी 8 गेंद पर 5 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए बल्लेबाजी की रोक पर स्ट्राइक पर अल्फाज करेंगे बल्लेबाजी. 9 गेंद पर 15 अंक कमा चुकी है अल्फाज ने और 9 स्ट्राइक पर रक्षित करेंगे बल्लेबाजी. 9 स्ट्राइक पर 4 गेंद पर 6 अंक कमा चुकी है. अच्छी तरह के आयोजन इस मैदान पर ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರುನಾಡು ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ, ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಅದೆಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರರು. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚತುರತೆ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ 2 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಾಗಲು. ಹೊರರೂಪ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡೆಯತ್ತ 7 ಬಾಲ್ಡ್ 3 ರನ್ ಆವಡು 30 ರನ್ ಮಂತದರು. ಹೊರರೂಪ ಕಟೀಲ್ ಹೊರರೂಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಭಾವನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪಾಸಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮೂಜನೇ ಓವರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲ್ ತಕ್ಕೊಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೋಡಿ ಅಲ್ಫಾಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ನ ತುತ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು
ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 अंकಗಳ आवश्यकता है. आखिरी 6 गेंद पर 2 अंकों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ अगला मैच के लिए रेंजर्स द्वारा तैयार होना चाहिए. अंतिम ओवर एसेयಲು ಸಿದ್ಧ ಗುರು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಅಗಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ರಮೇಶ್ ಇದೀಗ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಸರ್ದಾರ ಅರ್ಷಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರ್ದಾರ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರ್ದಾರ ಅರ್ಷಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಬನ್ನಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅಭಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಭಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರಾವಳಿ ಆಟೋ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೈ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಜೀವನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಜೀವನ್ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಂಬರ್ 2 and team Varaharopa Mangalore defeated Arasa Warriors in that eliminator, so they got a place in the qualifier number 2. And qualifier number 2 will be played between the losers of qualifier number 1. Rangers will go into takes on team Varaharopa Mangalore. The tossing ceremony is going on, and the toss which is on by captain of Rangers Vishwakant won the toss against Mithun, the captain of ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಷಾದ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹರ್ಷಾದ್ ವರಹರೂಪ ಪರವಾಗಿ.
Hello, check. So please note that there will be changes in this qualifier number 2. The match will be of 3 overs, and I request please cooperate with us, both the team's captain and the players. The match will be of 3 overs, the qualifier number 2. So congratulations for Varaha Rupa Mangalore. They won the match against team Arasa Warriors, and winning and losing is a part of cricket. But they played a very good game of cricket. Thank you very much each and every teams. They participated in this prestigious Kateel Premier League 2024. The participation is more important, and special thanks to the owners of each and every team, because you are the one responsible for the success of this cricket tournament. The Rangers captain Vishwakant won the toss, and no hesitation in his mind that he wanted to field first, and of course and Gopi, welcome back again for this very important match, because here I think no excuse for Rangers. Of course they got one excuse in the qualifier number 1, but here definitely they doesn't want to repeat the mistake what they did in the qualifier number 1. But coming back to the against team, Varaha Rupa, they played a very good game of cricket against team Arasa Warriors, and whenever the team which is coming to the winning track is always going to be a dangerous sign for the opposition team, so that I think Rangers will not going to take this match lightly, seeing that the performance of team Arasa Warriors did absolutely fantastic, isn't it? And wait and see how well this team will going to get the planning here. The game plan is very important, strategy which is very important when you're going to play knockout stage matches. It is absolutely do or die for the both the teams, and Gopi, certainly both the teams definitely they knows that they want to do before die, and what both the captain wanted to do here is that is the last opportunity, and both the teams certainly will go into battle for the victory, and I hope the battle will go into a very healthy battle between bat and ball. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर रेंजर्स से जो कि क्वालिफायर मैच नंबर 1 में जो कि हारी हुई टीम है, और जहाँ तक सवाल है वराहा रूपा का, तो उन्होंने इस वक्त अरासा वॉरियर्स को एलिमिनेटर में परास्त करने के बाद क्वालिफायर नंबर 2 में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो सहज रूप से वराहा रूप का इस वक्त काफ़ी हद तक आत्मविश्वास बढ़ चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। द ओपनर्स प्लीज गो फॉर बैट इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। तो वराहा रूपा का जहाँ तक सवाल है, एलिमिनेटर मैच में हालांकि विजय दर्ज करने के बाद सहज रूप से नेचुरली उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है, और ये देखना यह है कि रेंजर्स के खिलाफ वो किस तरीके की यहाँ पर खेल अपनाते हैं। तो ऐसा कहना पड़ेगा रेंजर्स और वराहा रूपा जो क्वालिफायर मैच नंबर 2 में भिड़ रही है सतीश, और हम उम्मीद करते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड बैटल इन दिस क्वालिफायर मैच नंबर 2, और देखते हैं कौन सी टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में यूनाइटेड ढाबा का सामना करेगी। Well, absolutely, Gopi, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. But what a fantastic cricket tournament! Almost we are coming to the very close to this end of this tournament. The one match, there's a mega final which is remaining after this qualifier number 2, and in this out of these two teams, one team will go into get the place in the mega final. So already United Dhaba, they are entered into the final, just waiting for the winner of these two teams, and it's going to be very interesting. So ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ So opening batters have already made their way to the middle of the ground, and the Mithun being the captain of the side is a striker, and in the non-strikers and Arshad. It's going to be a very good contest now, and the bowler will go into start the proceedings for the side of team Rangers. Ilyas is always is the one who's got a successful tournament and from the ball, so one of the good starter as well. So far he bowled very well whenever his opportunity is given. ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್
ಇದರ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, first run already came here for team ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much, and thanks to all the donors. You are the one that responsible for the success of this cricket tournament. Again, we are grateful and thankful for all the donors for this Kateel Premier League. Again, next ball driven that one officially quite safely down to deep long off region. Protection is there in the deep long off region, so that batter have. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. So Skobuna moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Each and every delivery, each and every run in this qualifier number 2 definitely going to be very crucial for both the teams. Again the Ilyas bowling from the commentary box and right arm around the wicket, left arm, that will be correction over the wicket again. Mithun going for the big stroke in the negation, misses the line completely. Leg by call by umpire. Mithun is not really happy with himself. You know exactly that the ball which is in his scoring zone, isn't it? Ball almost in the little bit on the leg stump, and batsman always want to get the big shot on the onside region, and Mithun certainly just missed that opportunity to swing his bat into that line of the ball. Maybe the ball which is not really coming to the bat, isn't it? Quite understandable under floodlight. It's not so easy for the batter to get the big shot. Again the bowler Ilyas, left arm over the wicket, this time going over the top of the infield, just over the top of the infield. The fielder behind the ball, and before the fielder will going to collect the ball down at deep cow point region. Ample time for the batter Ashad to complete that couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 5 on the board without loss of any wicket. 5 on the board without loss of any wicket means both the batters has got a good ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್ ಇದರ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Came into the batsman going for the absolutely going into that mid wicket region. Maybe is trying for, but couldn't manage to get that one into the middle of the bat. Got an inside edge of the bat. Unfortunately, he drags the ball into the stump, and Ilyas strikes with a huge wicket. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So 5 for the loss of 1 wicket. 1 more wicket is back into pavilion. The huge wicket, the wicket of Arshad, is known to be one of the good striker of the ball, but losing him in this condition definitely slight a bit of under pressure now for team Varaharupa. But Ilyas, just like I mentioned, Gopi, is the man, is the bowler who really got a very good tournament from the ball. Again in this do or die match, he produced one more very good delivery. Even the batsman little bit early into the stroke, ball which is came late to the bat. That's a big problem when you're playing under floodlight, ball which is not really coming to the bat. एग्जैक्टली सतीश, इलियास ने इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है और यहाँ पर भी इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 में उस सिलसिले को यहाँ पर बरकरार रखते हुए और अंडर फ्लडलाइट्स यहाँ पर गेंद पर नियंत्रण प्राप्त करना बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर उतना आसान नहीं है और परिस्थिति का पूरा लाभ इस वक्त उठा चुके हैं इलियास एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए. सतीश exactly in the next ball right over the wicket, Rakshit going for the big shot, ball is in there for a while, but after one bounce collected by the fielder, here is the batsman turning out for the second run, and they managed to complete that couple of runs quite easily. So Rakshit is straight away off the mark with that couple of runs. And Skobana moves on to 7 on the board after completion of over number 7. After losing the toss, the captain of the opposition asked to bat first. Varaharupa Mangalore managed to score 7 for the loss of 1 wicket. And Gopi 7 for 1. Certainly it's going to be not a huge total, but not a small total. 7 certainly the bat captain of Varaharupa seems to be, it was a good start. Even they lost 1 wicket, but
12 deliveries which is remaining, excluding wides and no balls, and out of 12 if they manage to get another 15 to 20 runs, definitely it's going to be a good score in this condition. Exactly सतीश, अंडर फ्लडलाइट्स अगर 6 रनों से ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट होता है तो सहज रूप से चेजिंग करने वाले टीम के बल्लेबाजों पर दबाव होता है, और चंद डॉट गेंदें अगर खेलते हैं चेजिंग करने वाले बल्लेबाज टीम के बल्लेबाज तो निस्संदेह उन पर दबाव बढ़ जाता है। तो इस वक्त कम से कम 20 के आंकड़े को पहुंचना या फिर 20 के आंकड़े के ऊपर जाना है बल्लेबाज को, अगर सामने वाले टीम को अगर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। Absolutely, Gopit. Vishwakant is a bowler, sings that one. That is going to be a maximum. Yes, it does. That ball just pitching a little bit short, and the batter, like you already mentioned, the Mithun is a very, very good striker of the ball, and little margin for error. You can't bowl the short pitch delivery to the caliber of a batsman like Mithun, and he's just capitalizing that one. Just going back, have a look at the stroke, how deeply he went into the crease. Just using the deftness of the crease very well. Of course, it's not that much of shot in it, but he made that ball very short by using the deftness of the crease. Just going back, and he's got a very good height as well, and got that one right from the middle of the bat down to deep square leg for a huge 6. It's a much required 6 came from the bat of Mithun, and scoreboard jumps into 13 on the board for the loss of 1 wicket. Vishwakant a little bit under pressure now after that 6, and he bowling right arm over the wicket. Balls this time he lofted, and it's going to be a chance here for the fielder to take the guide off the catch. My goodness, can you believe this? You can't do the mistake in this do or die match. You can't do the mistake because no excuse. You can't, because the Mithun is a batter who got a 6 in the previous delivery. The very good comeback looks like one sitter, looks like, but the Vishwakant is got a big wicket here. But unfortunately, the fielder will not going to support in that occasion. Ball catch which is dropped by the fielder. Right over the wicket, ball is lovely, very good comeback here by Vishwakant. Again going for the chance of run out here, and both the batters are completed a single. With that single, score moves on to 16 on the board. 16 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd is in progress. So Rangers, what me and Gopi just mentioning about what the mistake they did in the qualifier number 1, they doesn't want to repeat the mistake. But here is the problem for not only for the batters, but we can see that the fielders a little bit not comfortable under floodlight. It's not so easy to catch the ball, what they're catching in the morning in the natural light. Right over the wicket, balls again going for the this time the batsman couldn't manage to get that one from the middle of the bat, and ball went to the hands of short fine leg division. Ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 17 on the board. Now I think it's a good score on the board. Varaharopa, Mangalore looks like they got a good score here, because one big shot really changing the momentum of this game. And he's the man. His strike is Mithun, got a 6, and again Vishwakant. Captain to captain. That's a battle between two captains. Now again Vishwakant not really able to concentrate over the line, which is going far outside the line of off time. Punishable not from the batters but from the umpire, and wide call. That Koba Namuzan to 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket. What we are talking about, a battle between these two captains, also experienced and very quality players. Right arm over the wicket. Balls this time going for the big shot. Opportunities created for the cotton ball, and Vishwakant never looks like he will going to drop the catch, and that's the end of Mithun. Just Gopi, we're talking about the battle between two captains, but unfortunately at the beginning of the over, the one chance which is missed by the fielder in the deep wide-ish long on, but this time Vishwakant just thinking about, I'm not giving the chance for the fielders himself, I want myself to get the wicket of Mithun then, and cotton ball which is taken, but maybe think it's going to be too late to pick the wicket of danger man Mithun, because already run switch is in the board, and each and every run now onwards is going to be a bonus run for the Varaharopa Mangalore. Exactly Satish, यहाँ पर बदला जो कि ले चुके हैं विश्वा। अगली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया, तो 19 रन्स बन चुके हैं यहाँ पर सतीश। 2 विकेट जरूर गिरे लेकिन 18 रन बन चुका है। इन हालात अंडर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव, जैसा कि हमने पहले भी फरमाया। तो यहाँ पर कमबैक करना है, तो गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी करने होगी। 7 गेंदें उनकी टीम में, उनकी पारी में बाकी हैं, और उन 7 गेंदों पर इस वक्त बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा गेंदबाजों को। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर टीम का, तो वरारूपा का, तो इस वक्त
इस वक्त उनके बल्लेबाजों को इन बचे हुए 7 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पर बटोरने होंगे। 30 का आंकड़ा निस्संदेह उनके लिए बेहतर इस वक्त साबित हो सकता है अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। Absolutely, Gopi. It's going to be very important. Again, full set one very nicely right in the gap. There the fielder fielder will go to cut it off from the deep square leg to the short deep mid wicket region, and meantime it's ample time for the batter to complete that couple of runs. So the batter got a couple of runs. Alfaz is the batter who got a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 20 on the board, and over number last is in progress. Imran is the bowler. One more very good cricketer, very good all-rounder for the side of team Rangers, and wait and see how we'll going to restrict the runs in this last over. And Rangers knows that, and as much as run they managed to restrict in the last over, it's going to be so easy for them to when they're going to chase those runs. But here sensible batting which is required for the batters of Warharup, because after getting a 20 in a remaining 5 deliveries, I already mentioned it's going to be a bonus run. The batter is on strike now. Rakshit is on strike. Rakshit, in the sense as a savior, as if convert Rakshit in English, absolutely it's a savior, and wait and see how we will going to save his team and how we'll going to bat in the remaining deliveries. Right, over there, get a lovely delivery, beautiful delivery there from Imran. Absolutely, little bit lifting of delivery I want to say, because he's just exploiting the condition very well, hitting that very good areas in that Imran. He knows that the batsman is a little bit aggressive frame of mind, quite deliberately pitching the ball, shortening the ball and shortening the line, not really good ball that one around the range of batsman's strength there. Again, one more full toss delivery, nicely plays it down to deep square leg region for a single. They're looking for the second. In comes the throw from the deep, but batsman is on trouble and is back into pavilion as well. This all happening in the slog overs, last overs. There is no option at all. Batter have to look for the runs, and by doing that, the batters couldn't manage to reach his home. The one more wicket is back into pavilion now. The Rakshit is the batter, is back into pavilion, but 1 run certainly will be added to total, because for the second run they got a run out, and the total score now 21 on the board. 21 for the loss of 3 wickets back into pavilion. What a fantastic qualifier number 2 is in progress. Each and everyone wanted to know that who will going to be the finalist. After the United Dhaba got a place in the mega final, even the United Dhaba players also, very interestingly, they are watching this match, because they knows that they will going to play against the winner of this match, and it's going to be a very, very interesting match. So after this match, there will be a match for the women's. Ladies match will go into start, so that I request the captain of both the teams, please be reported for the toss. Again, they're going to Mr. Leg Stamp. They're going for the run there, but it's absolutely a suicider. This is absolutely a suicider, isn't it? It's never looks like going to be a run there, but the wicketkeeper knows that it's a wide ball, but they wanted to get another bonus run for that wide. That's why they went for the run. And wicket number 3 is back, 4 is back into pavilion. Safwan is the batter, is the back into pavilion, looks like. Alfaz, I think, the batsman. Alfaz batter is the back into pavilion now. Score remains on 22 on the board. 4 deliveries remaining in this over. Imran little bit struggling to get his line and length, and just like I mentioned, team have to restrict the run, need to restrict runs, otherwise very difficult for them to restrict the opposition team. Again, Shashi Durga is a new batter, and it pulls that one down to deep square leg region. Ball is in there for a while. After one bounce collected by the fielder, looking for the second. In comes the throw from the deep, but not good enough to stop the couple of runs from this to batter. So that couple of runs covered moves on to 24 on the board. Rangers now knows that 4, and in the previous match also I think it's a 24 which is target, but which is managed very well. And again it's going to be a 3 overs match. It's not a 4 overs match. So that last 3 deliveries remaining in the innings of team Imran. Right, over the pulls that one. That will going to be
Oh my goodness, drop the catch again. This is not a good to see that fielders are dropping the catches, because dropping the catch in the sense, Gopi, they're not only they're losing the wicket, but a couple of runs, isn't it? That's very important. Along with that drop catch, they're conceding two valuable runs. And with that couple of runs, Gopi moves on to 20. Just a minute, Satish sir. Yes, ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ದ ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಟೌನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬಿ ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೋಡಿ. So last ball remaining, scoreboard is 26 on the board, 26 for the loss of the wicket. 5 wickets have already back Pillian, and last delivery of the innings of Varaharupa. Imran wanted to restrict the runs. You know that already 26 on the board. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So run out. ಸ್ಕೈ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಟೌನ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you very much. 26, which is the total score now. 27 going to be a target for Team Rangers to win this match. And it's going to be very interesting, Gopi. And 27 in 3 overs and asking run rate exactly 9 runs per over. 18 ball, 27 required for Rangers to get the place in the mega final. But now, in this particular match, I want to say, this is going to be a good match, definitely, because it's not a huge score, but not an underestimated score. 27 under floodlight. Certainly it's going to be a lot of hard work is required for the team. Yes, Satish sir, just a minute. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಇದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಟೀಲ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕಲ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಲ ಸರ್ ಅವರು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. So 27 target for the team Rangers. The opening batters have already made their way to the middle of the pitch. It's a time to change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in India. And Gopi 27, what we're talking about, a good total under this condition. But
I think the bowlers needs to justify the effort of the batters, isn't it? Because getting a 27 is not good enough, but justifying that 27 is more important for the bowlers. At the same time, Rangers we are talking about after performing very well, I think they need to perform very well in this match. I request the fielding team, please start the match. We are having a shortage of time. ದಯಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have a shortage of time now. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, यहाँ पर रेंजर्स के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है। अगर 27 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है, रिक्वायर्ड रन रेट एक्जैक्टली 9 runs per hour in 3 overs they have to score for victory, 27 runs to qualify for the grand finale of this competition, and let's see can they reach the target or not. Meantime the opener is Imran and Sandy, the openers. Meantime the ball is taken by Arshad, who will be starts the fresh proceedings from the commentator box, and और इंतजार है इस वक्त पहले गेंद का, और देखते हैं यहाँ पर कौन सी टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। यूनाइटेड ढाबा का सामना करने के लिए पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड के साथ शुरुआत कर चुका है इस वक्त गेंदबाज अरशद, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के निस्संदेह। जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त वरहा रूपा का, जहाँ तक विजय का सवाल है, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 11 दे हैव टू बोल्ड टाइट बॉलिंग if they have to restrict the batsmen of Rangers under 26 runs in their stipulated 3 overs, और पहले गेंद में तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में एक रन प्रदान कर चुके। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सिर्फ एक सही गेंद इस ओवर में फेंके जा चुके। जस्ट 1 right delivery bowled in this over so far, 2 runs conceded by the bowler, and now it's 2 without loss in the first over। तो इस बीच गेंदबाज अरशद गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अब सैंडी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फ्लड लाइट्स की झकमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर कर चुकी है, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता हुआ कटील प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत क्वालिफायर मैच नंबर 2 की शानदार प्रगति होती हुई। इस बीच गेंदबाज तैयार अरशद, यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर रहा है, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिसफील्ड, और इस बीच इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। वहां पर एक ही रन हो सकता था, और अंतिम क्षण में बल्लेबाज जो फील्डर दौड़ कर रहा है डीप मिड विकेट से, गेंद से अपने नजरें हटा ले हड़बड़ाहट में, और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और इस छूट का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन, दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। अरशद फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। सैंडी, ये गेंद रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका हो सकता है, फील्डर वहां पर आते हैं डीप कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सैंडी का स्ट्रोक डीप कवर पॉइंट फील्डर को बीट नहीं कर सका, गेंद काफी देर तक हवा में थी, काफी ऊंची उछली थी, और एक बेहतरीन जजमेंट के साथ डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपका फील्डर ने, और इसी के साथ सैंडी की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 4 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त रेंजर्स का, और निस्संदेह सतीश ऐसा कहना पड़ेगा सैंडी का विकेट का गिरना कुछ हद तक ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है रेंजर्स के लिए, क्योंकि सैंडी ने पिछले मैचेस में बेहतर बल्लेबाजी की थी, तो यहाँ पर उनका विकेट इस वक्त कुछ हद तक मुश्किलों में ढकेल सकता है रेंजर्स के बल्लेबाजों को आने वाले ओवर्स में। Exactly, Gopi. Losing some very good cricketer like Sandy's wicket in the early stage of the innings is definitely going to be a little bit of back foot for Team Rangers. But I want to say that they got some good players in the side. Losing 1 wicket means in the sense they lost the match. They lost 1 wicket, but they're not in lost the match. They can try for the another remaining days. But I think it's a very good breakthrough there from the bowler Asher. They got a huge wicket of the Sandy. But you need to appreciate that fielder as well. Of course, we are just talking about only the bowlers, but the fielder is the one is helping the bowler to pick the wickets, because their contribution is more important. We are seeing that so many drop catches in this particular, especially under floodlight. So the fielder did a great job to pick the wicket. So a lot of best wishes which is coming from even from Bangalore and Mangalore as well. And it's one best wishes came for Safwan of Team Vararupa, and door number 301 Bengaluru wishing all the best for Safwan. Again, a nicely driven down to deep backward square leg. They're looking for the second there, but a very risky one. I think if they wanted to get a couple of runs, it's going to be very risky, because they need to save this man, Gopi, because Imran is a key player for Rangers. If they wanted to win the match, he need to play responsible in it
and responsible innings, and you need to take an initiative for Rangers if they wanted to win the match. Exactly सतीश, यहाँ पर इमरान को एक बेहतर पारी खेलना जरूरी है क्योंकि वो इस वक्त की प्लेयर है यहाँ पर रेंजर्स के लिए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त वराह रूपा का, तो इमरान का विकेट जल्द से जल्द उनको उखाड़ना होगा अगर उन्हें इस मैच में अपना आधिपत्य प्राबल्य स्थापित करना है। तो देखते हैं यहाँ पर किसकी जीत होती है, बल्लेबाज की या फिर गेंदबाज की। और गेंदबाज अरशद इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ ओवर द विकेट। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद लगभग उनके घुटनों पर टकराई अंतिम क्षण में और वहीं पर गिर गए, रन से नहीं मिला। डॉट गेंद इस वक्त जुड़ता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर और 22 रन और चाहिए विजय के लिए अब। और 13 गेंदें बाकी, 22 runs more required in remaining 13 deliveries. The equation seems to be a stiffer now a little bit for the batsmen of Rangers. और जहां तक चौके और छक्के का सवाल है, कम से कम एक चौका या छक्का इस वक्त रेंजर को काफी हद तक इस मैच में वापस ला सकता है। अरशद फिर से एक बार तैयार, यह गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर, एक बार फिर से बल्ले पर लेने में असफल। पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रन। 6 for the loss of 1 wicket and first over has been completed. 2 overs remaining in overall calculation. So in remaining 2 overs they have to score 21 runs for victory. और सतीश यहाँ पर पहला ओवर अंडर प्रेशर अरशद ने इस वक्त बेहतरीन फेंकी है जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए हैं। Absolutely, it's a very good start because keeping the batsmen like Sandy and Imran to quiet is not easy, and just giving 6 more runs in the first over, I think the bowler did a great job. But still, Gopi, just coming back to the equation, 6 which is directed from 27, that means another 21 more runs required for the victory in 2 overs. Now asking run rate is creeping up. It means the 6 runs means they were talking about they got a 6 run, but because of that slow start, the asking run rate is really climbing up, and required run rate now climbing up to 10.50 runs per over, and it's going to be very, very interesting how well the DC batter will going to get this. This is going to be a very decider over for both the teams. The batting team wanted to get at least 10 to 12 runs, and at the same time fielding team wanted to one more economical over. Exactly सतीश, दोनों टीमों के लिए ओवर काफी महत्वपूर्ण है। रन से ज्यादा बनाने होंगे बल्लेबाज को, जबकि रन ज्यादा से ज्यादा रोकने होंगे इस वक्त गेंदबाज को इस ओवर में। तो देखते हैं क्या होता है। 21 required in remaining 12 deliveries. First ball, मुजम्मिल गेंदबाजी शुरू करते हुए absolutely fantastic delivery this time और स्टंप्स एक्सपोज करते हुए शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कटील प्रीमियर लीग 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और निश्चित रूप से इस सुंदर से मैदान पर आसमान मैदान पर आसमान के मानिक मैदान पर एक बेहतरीन श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहाँ पर गुजरता हुआ और फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दोनों टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और इस बीच मुजम्मिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला, इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर, रन नहीं मिलेगा। उछालना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से उछाल नहीं पाए और गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 6 for the loss of 1 wicket with every dot ball the pressure is now building up on the sides of the batsmen. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त मुजम्मिल तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। काफी लंबा रन अप उनका, 10 से 12 कदम, अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फुल टॉस ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था और 1 रन प्राप्त करने में सफल। ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈಜಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಇವರು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಾಫಿ ಹಾಗೇನೆ ಫೈಜಲ್, धन्यवाद। तो यहाँ पर 3 गेंदें फेंके जा चुके हैं और मुजम्मिल अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट। ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ. And he dropped.
Fantastic strike, but dropped by the fielder at deep end wicket. He's got a life. तो इस वक्त रन मिल चुके हैं, 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, और मुजम्मिल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। और गेंद की परीक्षा करने के बाद इस वक्त बल्लेबाज गेंद को इस वक्त गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए, और मुजम्मिल एक बार फिर से तैयार रहा। और रन है 8, रन चाहिए 19, गेंदें बाकी हैं 8, 19 रन रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 8 डिलीवरीज। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है, और मुजम्मिल कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और मुजम्मिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बीच ये गेंद इस बार फुल टॉस ऑन साइड पर डिफ्लेक्ट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जरूरतमंद चौका यहां पर लग चुका है इस वक्त। बल्लेबाज इमरान के बल्ले से खूबसूरती के साथ गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद इस वक्त डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 12 रन 15 रन चाहिए, गेंदें बाकी इस वक्त 7, मैच में कशिश अभी भी बरकरार रहा। ಕಟೀಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವ 12 runs 15 runs required, 7 balls remaining, and still the Shiva still the hopes alive for the batting side now with this boundary। और मुजम्मिल इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इमरान ये गेंद टॉप एज, लेकिन गेंद इस वक्त शायद सीमा रेखा को पार करेगी, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। इट्स अ बिगी, और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा रेंजर्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम। 9 रिक्वायर्ड, 6 balls remaining, और सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा it could be anybody's game at this situation in this last over। Absolutely, Gopi. 1-6 really changing the complexion of this game, isn't it? And Imran, just like mentioning about he's a danger batsman as far as opposition is concerned. What a great shot that was, Gopi. Nothing wrong with the line of the delivery, but he just shuffled across the line of the delivery, got that one right from the middle of the bat, and he got the distance as well. I will mention that getting a distance is very difficult under floodlight, but he got the distance because he's got a muscles power and he got a technique of hitting the ball. It absolutely is a if you see that stroke, absolutely it was a very delightful cricketing stroke to watch. Now last over remaining and 9 runs required for the victory, but still match is poised because 9 to get from last over, still a lot of hard work required from the batter, and even the hard work required for the bowler if they wanted to restrict the runs in this last over. बिल्कुल सतीश, अंतिम ओवर 6-9 द इक्वेशन स्टैंड्स फॉर रेंजर्स। और इस वक्त गेंदबाज प्रताप विल बी स्टार्टिंग अ मैच डिसाइडिंग ओवर। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप इस वक्त तैयार, लंबे रनअप के जरिए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस वक्त विश्वा। देखते हैं विश्वा इस वक्त क्या करते हैं, क्या पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, क्या पहली गेंद पर रक्षात्मक तरीके का खेल अपनाते हैं, देखने वाली बात है। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद प्रताप और फील्डर इस वक्त लॉन्ग ऑफ के थोड़े पीछे भेज दिए गए। ओवर की पहली गेंद लेकर प्रताप इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और इस वक्त स्कोर रुक चुका है वहीं पर, यानी गेंद कोई भी नहीं फेंकी जा चुकी है। 9 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, और प्रताप एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। और इमरान इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज विश्वा की ओर कुछ बढ़े, कुछ कहा उन्होंने कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए। और इस बीच प्रताप ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद हल्के से गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया खूबसूरती के साथ। सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, स्ट्राइक रोटेट करने में सफल। वो जानते हैं इमरान को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना बेहतर होगा उनके टीम के लिए। अब 5 गेंदें 8 रन एंड इमरान back on strike, and let's see what will happen in this delivery। और देखना यह है कि प्रताप इस वक्त किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर अपनाते हैं इमरान को बांध कर रखने के लिए। जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, इमरान की उपस्थिति इस वक्त रेंजर्स के लिए बेहद जरूरी है अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो यहां पर मौका जरूर है वरह रूपा के गेंदबाज प्रताप को कम बैक करने का। निस्संदेह चंद डॉट गेंदे इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर दबाव यहां पर बढ़ा सकते हैं। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और इस बीच मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है, और प्रताप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इमरान इज नॉट गोइंग टू फेस प्रताप, 7 से 8 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त शॉर्ट गेंद पुल किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक, और इस
पड़ेगा। यहाँ पर रेंजर्स अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है और देखिए यहाँ पर गेंदबाज हताश मनोभावना के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। अब रन से चाहिए 2, गेंदे बाकी है 4 और सतीश इमरान निस्संदेह इस वक्त एक शीट एंकर रोल मुख्य सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए और उनकी इस कड़ी मेहनत मुशक्कत की बदौलत यहाँ पर उनकी टीम रेंजर्स इस वक्त विजय के द्वार में आकर खड़ा हो चुका है। सतीश Well, Gopi, absolutely the 2 sixes, only 2 deliveries that really changing the momentum of the game, absolutely. And Imran is the one getting that 2 sixes, and what a great shot that 2 sixes. Absolutely the quality cricketing throw coming from the bat of Imran, and that's why some players, Gopi, they are very good in playing under pressure, isn't it? They love to deal with the under pressure situation, and Imran is a kind of batter, is always loves to play under pressure. That's why, Gopi, some players recognized by the cricket lovers because of their braveness and their gutsy batting, isn't it? Handling the pressure is more important, and winning the game for the team is more important. Now, just 2 runs required and 4 deliveries remaining, and have a look at the game is changing here, isn't it? At one stage looked like Bara Saropa, they will going to win the match quite easily after that good start given by the opening bowler. Only 6 runs came from that over, but that 2 sixes which is good enough from bat of Imran to take his team into the winning track. 2 runs required for the victory. I want to see how many runs Imran is scored. He's batted 19 runs, and that means almost 75% of the runs which came from the bat of Imran. And good thinking, in fact. Looks like the bowler has got a little bit of problem here after he was delivered the ball. Looks like a little bit the problem from his left leg. Maybe that the right leg which is a little bit twisted after he wanted to deliver the ball because of the dew factor which comes into play, and he couldn't manage to grip that one properly. So the bowler will going to continue. 2 runs required, Gopi, and 4 balls remaining. Looks like everything is over, but another 2-3 deliveries is going to be very important for the team if they wanted to back in the game for team Varasarupa. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर 2 रन 4 गेंदे चाहिए। डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकने होंगे। गेंदबाज इस वक्त बदल दिया गया है और गेंदबाज हैं रक्षित इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 2 और 4, हियर वी गो। ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट स्क्वायर लेग पर इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड और दूसरा रन लेना चाहते हैं। और मैं ये नहीं समझ पाया क्योंकि बल्लेबाज इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 गेंदें बाकी है, 1 रन चाहिए विजय के लिए और शायद बल्लेबाज ने इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहे, लेकिन इस बेवकूफी में कई मैच टाई पर ना समाप्त हो जाए। अगर 3 गेंदें लगातार टाई होंगे, 3 गेंदें लगातार डॉट होंगे तो शायद मैच टाई हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना एकदम कम है। लेकिन सतीश की क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है जब तक ना आखिरी गेंद पे की जाए, यह एक कहावत है। Well, Gopi, maybe I have noticed here that Imran is coming to the striker and is the main reason that he is the one changing the complexion of the game. That's why he wanted to finish the match from his bat, and that's maybe the reason that, but otherwise no reason at all. Now last run required for the victory. Wait and see. बिल्कुल सतीश, 3 डॉट गेंद इस वक्त चाहिए, सिर्फ 1 रन चाहिए रेंजर्स को इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। हियर वी गो, ये गेंद उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हैं, दैट्स इट। Rangers are through to the grand finale of this competition, defeating Varaharupa in a thriller, and with that victory, they are through to the grand finale. So the grand finale match will be played right after the women's match between United Dhaba versus Rangers in the grand finale of Kateel Premier League 2024. So absolutely fantastic match came soon. And Kyo Satish? Well, Gopi, absolutely good match. I request the 2 teams captain please be reported here immediately for the final match. So at last we are just waiting for the 2 teams which is getting a place in the mega final of this prestigious So just about talking about this mega final, and just 2 teams. I would like to congratulate the 2 teams which is got a place in the mega final. Team United Dhaba as well as the Team Rangers are the 2 teams. At last they managed to come get the place in the mega final of this prestigious Kateel Premier League 2022, which is proudly organized by Team Kateel Friends Dubai, and it is 11th year.
to Vishwa in that semi-final. ದುಬೈದ ಊರುಡು ಊರುದ ಜವನರು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಏರ್ದು ಸುಗಿತದು ಕಲಕು ಜತ್ತಿನ ಜವನರ ತೂಲೆ 6-4 ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಟ್ಟದ ಬಿದ್ದದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ So the final will going to start here, and before the final will going to start here, a little bit change in commentary box as well. I request Mr. Ashraf as well as Rupesh Pujari, please be reported here for the further explanation of the match in our state language. The state language for the first innings. I request both commentators please be reported here immediately. I request Rupesh Pujari as well as Ashraf please be reported here immediately for the first innings of the mega final. Thank you. ರೂಪೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ರೂಪೇಶ್ 6-4 ಬರ್ಸೋದ ಬಿರ್ಸುಗು ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಡ್ಡದ ಬಿದ್ದದ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೂಪೇಶ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರಟಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಒಂದು ಕಡೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಕದನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ 2024 ಒಂದೆಡೆ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರೇಂಜರ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಡಾಬಾ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಕದನ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು, ಎಲ್ಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ಕದನದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 8:55 ಮುಕ್ತಾಯ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅಶ್ರಫ್ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್
ಎಸ್, ಎರಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರದಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ, ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರದಾರ. ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು. ಫೈನಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವರು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರೂಪೇಶ್, ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆದ್ದರೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಸೋತರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿತ್ ತನ್ನ ಕಾಂತಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ. ಅಂಪೈರ್ 2 ರನ್ಸ್, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೆಡೆ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರೇಂಜರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನಿಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಸುವ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ. ಹಲೋ, ಚೆಕ್. ಜೀವನ್, ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಜೀವನ್. ಮೈಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಮ್ದಾನ್, ರತ್ನಾಕರ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಯಾಳನ್ನ ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಂಘಟಕರೇ, ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರಂತರವಾದ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. अंपायर्स थोड़ा जल्दी ये मैच करने का. अंपायर्स ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ವಿಶ್ವ ಹಾಗೇನೆ ಎಸ್, ರೋಗ ಬಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡ, ರೋಗ ಬಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡ, ಸಮಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ, ಮರಣಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ, ಮರಣಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರವಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಾಳೆ. ಇದು ಷಡ್ಕ, ಇದು ಷಡ್ಕ, ಇದು 6 ಅಂಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಡು ಕೂಡ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರೇಂಜರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದಂಡು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನ, ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಕಿತ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡು ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅಂಕಿತ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ, ದಾಂಡಿಗತನದಲ್ಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೆ ಅಂಶು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡೋ ಅನುಭವ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ. Wait and see what is the decision. Decision is the pending. Yes, ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾರ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡಿಗತನ ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಾಳೆಯದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಇದು ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತು ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನದ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಕಾಂತ್. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 13ರತ್ತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಮುಂದುವರಿಸುವರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರಂತರವಾದ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. മത്സരം തുടരേണ്ടതാണ് റഫറി. മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്, സമയമില്ല. അതിനകത്ത് ಬೇಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಶ್ವ ಒಟ್ಟು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಡೆಯಲು 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14, 1-4. लास्ट बॉल अंकित. पहली ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाजी की रोक पर अंकित करेंगे गेंदबाजी. बल्लेबाजी की रोक पर इमरान कोटेश्वरा. इस वक्त अंतिम गेंद को क्या कर पाएंगे इमरान जी, यह है बड़ी सवाल. उठा के मार रही है इमरान जी. अब अपर गेंद क्या कर पाएंगे इस वक्त. हेलो हेलो जीवदान मिल चुकी है. देखिए इमरान कोटेश्वरा को ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂಡ ರೇಂಜರ್ಸ್. अंपायर ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಮ್ದ लास्ट बॉल 1 ओवर सिंगल लास्ट बॉल ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 15 ಅಂಕಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಸರಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 15 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯ ಉದ್ದರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಂತ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ನೂತನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ 4 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಉದುರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ವೇದಿಕೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕರುನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು. ತೃತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿಶ್ವಕಾಂತ್ರವರ ಆಗಮನ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಟು ವಿಶ್ವ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡಿಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡಿಲಿವರಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. दूसरी ओवर की 5वां गेंद. गेंदबाजी के रूप पर प्रथमेश, बल्लेबाज के रूप पर विश्वा. विश्वा इस वक्त क्या कर पाएंगे? उठा के मारने की कोशिश. विश्वा की विकेट नुकसान हो चुकी है. देखिए ये है गेंदबाजी. प्रथमेश बैक टू पेविलियन. विश्वा. बैट्समैन प्लीज, बैट्समैन प्लीज, नेक्स्ट बैट्समैन. बार बार बता रहा हूं बल्लेबाजी कितना भी तुरंत आ जाइए मैदान पर. बॉल. टोटल स्कोर Muzanta 16. Loss of 2 wicket. Last delivery. Second over last delivery. The side to Suryakant. Last ball, last ball. ಉದಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನತ್ತ ಬರಬಹುದೇ.
ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ, ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನೋಡಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 18 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ KPL ಸೀಸನ್ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಒಂದೆಡೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ഇഷാർ സമയം കൊടുക്കരുത്. റെഫറി ഇഷാർ ആരംഭിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഓവർ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ ഓവർ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇഷാർ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್, 3 ಓವರ್ಗಳ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂತಿಮ 1 ಓವರ್ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಜಾ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಂಕಾಂಶ ಪಡೆಯಲು 1 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಅರಿತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಾ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ರಾಜಾ ಮುಖೇನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಒಂದೆಡೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುಂದಾಪುರ, ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪರವಾಗಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವ ಕೂಡ ರಾಜಾ. ಈ ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಟು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು 2 ಅಂಕಗಳ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ರಾಜಾ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಮ್ದಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಟಪುಟ್ ಲೈನ್ ಹತ್ ಬೇಗ. ಚಾಮೋ ಸಮತ್ ತೀರ್ಮಾನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 17 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸಮತ್ ಯಾನೆ ಚಾಮೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು 21 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆ ಇದೆ. 3 ಒದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ದಂಡನೆ. 1 ಸುಲಭ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಒಂದೆಡೆ ದಾಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ದಾನಿಗ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಕಟೀಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तीसरी ओवर के आखिरी गेंद राजा सालिग्राम इस वक्त क्या कर पाएंगे? आसान तरीका से 1 अंक जोड़ रहे दूसरे अंक के लिए.
बिल्कुल नहीं, और रन आउट की चांस. खतरा 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 खतरा. यस, विकेट की नुकसान हो चुकी है. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ತನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗನ ಗೋಪಿ. ಎಸ್, ಕರುನಾಡು ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು. ಸರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಇರುವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you very much, both commentators, wonderful commentators, Ashraf as well as Rupesh Pujari, for your wonderful commentary in this first innings of mega final, and 24 which is going to be a target for team United Dhaba if they wanted to lift this very prestigious title, KPL Kateel Premier League 2024. Just a few minutes we need to wait. I request the captains of ladies teams, women's team, please be reported immediately for the tossing ceremony. ದಯಮಾಡ್ತದಲ್ಪ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗಡೆ ಬರೋಡು. ದಯಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಗೋಪಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ KPL. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೋಪಿ ಜಸ್ಟ್ 15 minutes, and we're going to decide who will go into champions of this prestigious KPL 2024, and 24 runs is going to be a target, required at exactly 8 runs per over. But seeing that target, Gopi, it's going to be anybody's game, because 24 might be a very good total on the board, but you cannot underestimate United Dhaba, because they are the one, they came into directly after winning qualifier 1, they came into the mega final, and in this last match both the teams certainly will going to battle hard for the victory. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर यूनाइटेड ढाबा, हालांकि क्वालिफायर मैच नंबर 1 में रेंजर्स और उनका मुकाबला हुआ था और रेंजर्स को उन्होंने परास्त किया था, और यहाँ पर रेंजर्स और यूनाइटेड ढाबा का मुकाबला एक बार फिर से हो रहा है. तो क्वालिफायर मैच नंबर 1 का रिपीट सतीश, क्वालिफायर मैच नंबर 1 का रिपीट है, रेंजर्स वर्सेस यूनाइटेड ढाबा. तो यहाँ पर देखना यह है कि रेंजर्स इस वक्त बदला ले पाता है या नहीं यूनाइटेड ढाबा के खिलाफ. तो बेहतर स्कोर 24 अंडर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव, और देखते हैं यहाँ पर यूनाइटेड ढाबा इस मैच इस 24 रनों के लक्ष्य तक पहुँच पाता है नहीं. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है, पहली गेंद लेकर तैयार. देखते हैं सतीश, और जहाँ तक मैच का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. सतीश, absolutely, I request bowler please start your run up, because we have a shortage of time, and here is the first ball, left arm round the wicket pass ball, lovely sheer delivery, equally well played there by the batter, just steering that one to the backward boundary and set a bit of misfield there by the fielder, but no question of second, and first run completed. So they started their journey, United Dhaba, they got a first run from the first ball. Make a the women's team, which is the toss which is on by Meka Warriors against Power Girls. That's the news for the next match, the women's match. Please get ready, and it's going to be very interesting. There's 24 runs required in 18 balls. We are talking about asking run that is 8 runs per over, and bowler will go into Ilyas is the one, the very good starter.
Left arm balls again going for the full swing of the bat. Ball is in there for a while, but nothing much worried about that one because the ball which is not really having a contact with the bat, but certainly ball is deflected from the leg of the batter. Batism is the batter who wanted to get that one onto square leg region. Missed it completely. This time out which is given there by the umpire. And maybe ball after having a bat and then deflected from the leg. After having a conversation with the square leg umpire, their umpire decided to raise his finger, and Batism is batsman is back into pavilion. So the first wicket is back into pavilion. It's one for the loss of 1 wicket, and Ilyas and Gopi suddenly just talking about in the previous match also, and you just told that it's a repetition of the qualifier number 1, and in the qualifier number 1 the team United Dhaba, they defeated very strong opponent Rangers. So maybe it was a repetition, and but Rangers doesn't want to repeat that result, isn't it? Because it is going to be a golden opportunity for the both the teams. बिल्कुल सतीश, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्वालिफायर मैच नंबर 1 का, और यहाँ पर देखते हैं कौन चैंपियन बनेगा। केपीएल ने कटील प्रीमियर लीग 2024 का पहला विकेट खोने के बाद सर्टेनली द प्रेशर ऑन द बॉलर, और प्रेशर इस वक्त यूनाइटेड क्रिकेटर्स के ऊपर, यूनाइटेड ढाबा क्रिकेटर्स के ऊपर। देखते हैं किस तरह वो कमबैक यहाँ पर करते हैं। इक्वेशन स्टैंड्स 16 balls remaining and 23 runs required. So 9 wickets they got, and let's see what will happen in the forthcoming delivery, Satish. Absolutely, Gopi, and a new batter just coming to the middle is Yambi, and the nickname Yambi is a very good striker of the ball. He's a left-hand batter, and always the left-hand batter known to be they are very stronger than the right-hand, because they got a little bit extra power as far as powerful hitting is concerned. The left-hand batter is always dangerous, and that's why it's going to be very important for Ilyas to get the ball in the right area. Otherwise, a little margin for error. And the fielder at mid-wicket, deep long on, deep mid-wicket, deep square leg, the 3 fielders outside the circle in the onside region. Again, the Ilyas seaming from the away from us. Left arm also going for the big swing of the bat. Ball is deflected from the leg in the negation. Very good tidy bowling performance from Ilyas. This is what I already mentioned. He is a man, Ilyas is always a man with the reason for the success of Rangers, because getting a good start is very important for any team when depending the total. And Ilyas is the one so far did a great job from his bowling. But job is not yet over. Just talking about the 24 runs which is required for the victory. Here is again Ilyas. This time is going for the big shot, but not really got that one from the bat. Again, now one more dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem. So far, there is a run. We can see that only 1 and 4 deliveries bowled, Gopi. And that means now remaining 14 deliveries. They need to get another 23 runs to win this match. The difference between run and ball is a little bit going higher and higher. That's what is a little bit not a good sign here for the chasing team. They need to decrease that difference between run and ball immediately. Otherwise, it's going to be difficult for them to win this match. Again, the bowler seeming away from us, Ilyas. Balls to Yami again. That's a lovely delivery. Look at the variation in the ball. This is what really needed, some good bowlers and some adventurous bowling. I want to say that some innovative bowling here from the bowler. Is not bowling same deliveries, mixing up the delivery very well. Sometimes he bowled a quick delivery, sometimes he bowled a slower one and straighter one, and that's what he got a success so far. Now, hello. Again, the bowler will going to continue from the commentary box, and it's going to be only 2 runs on the board in this over. Last delivery to bowled. I requested the fielding team to make it fast, and we need to understand the problem of organizers. And again, the Ilyas bowling away from us, bowling with an absolutely fantastic run up. Left arm over the wicket. Balls a beautiful delivery. Absolutely magnificent Yorker line delivery there from Ilyas, and batsman just survived because he's got a leg onto that. Otherwise, his ball will going to crash the mid-line leg stump. And first over completed. After completion of first over, chasing a total score of 24 to become the champion here. Team United Dhaba has got a very, very slow start, Gopi. It is absolutely shackling start. He lost a wicket as well. At the same time, didn't got enough runs about. Now, problem starts here for team Dhaba is that
they need to get another 21 runs in 12 deliveries, and that might be a little bit difficult but not impossible. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा 12 गेंदे 21 रन, क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पर जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो यूनाइटेड ढाबा के बल्लेबाजों को इस वक्त चाहिए कम से कम एक या दो चौके या छक्के इस मैच में वापसी करने के लिए। फिलहाल रेंजर्स का तख्ता यहाँ पर भारी लगता है और बेहतरीन ओवर इस वक्त इलियास ने समाप्त किया, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया और आखिरकार यहाँ पर तख्ता जरूर भारी लग रहा है इस वक्त रेंजर्स का, लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक करने का मौका जरूर है यूनाइटेड ढाबा के बल्लेबाजों को। ग्रैंड फिनाले क्लाइमैक्स जो कि केपीएल कटील प्रीमियर लीग 2023 का यहाँ पर गुजरता हुआ, और पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद दिस टाइम लॉस्ट दैट वन, जस्ट वी आर वेट एंड सी, इट कुड बी टेकन इन साउथ डिफेंस। उछाला था इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया। प्लीज स्टॉप द डीजे। और यहाँ पर ये विकेट गिर चुका है, तो 3 for the loss of 2 wicket. First over, second over started now, and now 11 balls remaining. And the score is now. అలా టీమ్ సెట్టాడు బ్యాట్ బాల్ సత్తుదాడు నన్న షురు నమ్మ వికెట్ Look at the wicket drop. It is a Raja Salindra. బైదా ఊరుడు ఊరుదా జవనే ఒట్టు మాతినా ఈగే కటిల అప్పెల్ కయ్యేడు సుగిదు కలుపు తెత్తిన జవనే 6 4 డాబర్ సదా బిర్సిగు మాతా సేరుదే స్టెప్పును పాడ్లే. He got the elevation, but the pace to get the distance. And new batter just coming from the middle is the main evidence how well he got take the responsibility of getting some acceleration, because they now heading Gopi and Kateel Premier League to get the 6 shots in the one over. Kateel Premier League Kateel Premier League. Still, they have a long way to go. 20 runs exactly required in remaining 10 balls. So that means 2 runs per ball. They have to score for victory. और यहाँ पर चौके और छक्कों की उन्हें सख्त दरकार। फिलहाल इस वक्त गेंदबाज इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार एमबी। और जहां तक एमबी का सवाल है, पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और देखना है कि उस सफलता के सिलसिले को यहां पर इस मैच में भी वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूके डॉट गेंद, 1 more dot delivery. The pressure is now building up on the batsmen now. और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, इस डॉट गेंद के साथ समस्याएं और बढ़ चुकी है यहां पर बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को साइड पर उछलना चाहा, 1 more dot delivery, और नो सिग्नल केम फ्रॉम अंपायर। 8 balls 20 runs exactly required, 2.5 runs per ball, and this is going to be absolutely difficult task now, but not impossible. और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद फुल टॉस, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मिनट, 1 more dot delivery, and this is turning out to be a 1 more fantastic over in Rangers point of view. And now 7 balls remaining, 20 runs required. Absolutely difficult task. और देखते हैं अब चौका या छक्का बल्लेबाज लगा पाते हैं नहीं, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त की है इमरान ने अंडर प्रेशर में। अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, एंड द बैट्समैन आर फाइनली satisfied, settled with a single. 2 overs gone, 5 runs on the board, and 2 wickets lost, 19 required of last over. और यहाँ पर इस श्रृंखला का अंतिम ओवर शुरू हो जाए। The last over of the tournament in men's section is now going to start, और 19 रन अंतिम ओवर में। तो सतीश, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? Well, Gopi, temperature is very cool here, but the temperature of the match is very high, and 19 runs which is required from last over, and maybe that was the last over.
as well for the team United Dhaba, because 19 runs it can be manageable, but only with the sixes and boundaries, and otherwise very difficult for them to win this match. But have a look at the 2 overs, Gopi. The previous overs ball by Imran, he not only batted very well, scored 13 valuable runs. Now once again he contributed from the ball as well. That's why he's one of the great player, and he's the one always going to benefits not only from the bowling department, but even from the batting department as well. Now do or die situation. Wait and see how well these two batters will going to get that 19 runs from the last over. The bowler Janraj. Right arm over the wicket. Oh, take is outside the edge of the bat. Ball is going to land it safely after one bounce collected by that short-term fielder. 18 required. 5 balls remaining. Celebration slowly started in the dugout of Team Rangers. They just started to feel that they can become the champion if they bowled 5 good deliveries. But cricket, everybody know the early celebration is always, I think it's not good to see, because we are having a lot of example in cricket. Even 1 or 2 deliveries is good enough for the team to back in the game. I wait and see. Again the bowler bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. This time Sings. What you are talking about? Too early celebration will going to be a dangerous. Just like what I'm talking about, Gopi. Cricket is just like that only. You can't say anything in cricket. It's an unpredictable game. Now 12 required for the 4 balls, and 1-6 certainly open the gate here for the Rangers. Hello. Exactly सतीश, और ये छक्का जो कि यहाँ पर ऐसा कहना यूनाइटेड ढाबा के उम्मीदों को बरकरार रख चुका है. बेहतरीन स्ट्रोक, absolutely perfect struck came from the bat of Prathamesh. Just got that one right from the middle of the bat and lofted that one down to a long on fence for a massive one. 12-4 और यहाँ पर कुछ हद तक संभावनीयता बन चुकी है सतीश इस छक्के के साथ यूनाइटेड ढाबा के लिए. Exactly, Gopi, but 1-6 is not good enough here for them. They gained a lovely delivery indeed. Ball just deflected from the leg of the batter, so that they completed. They wanted to come back for the second. He wanted to return the strike. Here is a 100-meter race is going on in the middle. This is absolutely 100-meter race is going between the fielder and the batsman. But at last, the fielder winning the race against the batter. The run out which is taken place, but more importantly, Gopi, this of run out, but Prathamesh one who hit the 6 to the strike. Exactly सतीश, प्रथमेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं. 11 रन चाहिए 3 गेंदों पर. 11 रिक्वायर्ड, 10 for tie, 11 for win and 3 balls remaining. और अंतिम अवकाश, the last chance in front of the batsmen of United Dhaba now. प्रथमेश जो कि अंतिम उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई देते हुए, और देखते हैं ये है कि वो अपने टीम को सही मंजिल तक पहुँचा पाते हैं या नहीं सतीश. Well, Gopi, 3 ball, 11 runs required for the victory, 10 for the tie. There are 10 for the tie, 11 for the victory, and certainly it's going to be a very, very interesting. Now, Prathamesh, what you are talking about, he is on strike. He can be able to do the magic here, but a slight a bit of injuries which is continues here, and 2-3 injuries already in this tournament, and yes, level of competition. यहाँ पर रेंजर्स का भविष्य जानराज के हाथों में. देखते हैं क्या होता है. Dotted delivery. Kateel Premier delivery. That's it. Beautiful delivery. Now,
noise coming here and right above community house. You can hear that. The celebration is well started here. But the celebration is going to more bigger and bigger after this last final of the tournament. KPL. Right above once again. That's it. Team Rangers are becoming the champion of Kateel Premier League 2024, defeating United Dhaba with that valuable 9 runs, and they are lifting the prestigious KPL 2023 season 11. Congratulations for so congratulations both our teams, and now it's time for the women's team to start the match. And for that match, I would like to invite Ashraf, our Kannada commentator, very experienced commentator, and I request Ashraf to please come to the box. Thank you. So thank you very much, and that's it for the final. And before we are going to leave this mic, I would like to give special thanks to the organizer, because they are the one, they are giving us the opportunity to be the part of this most successful and most prestigious cricket tournament in the name of Kateel Premier League 2024. And myself, Satish Salian, Bangalore, and Mr. Gopi would like to give special thanks to the organizer. Isn't it, Gopi? It's going to be a great experience, isn't it? Even the first time doing this commentary in Dubai, but it's going to be a great experience, and I would like to give special thanks for the great hospitality by the organizers. So now I would like to hand over the microphone to our one more very good commentator, Ashraf. Thank you. All. Yes. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ಆ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಕರಾವಳಿ ಕಂಡಂಥ ಆ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್, ಆ ಇರುವರ ಅಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗೌರವಾಂತ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು. ಒಟ್ಟು ಮಾತಿನ ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಟೀಲ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯೇದು ಸುಗಿತುದು ಕಲಪು ಜತ್ತಿನ ಜಲನೆರ್ತುದೆ 6-4 ಬರ್ಸದ ಬೆರ್ಸುಗೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ
ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶ ಮಣ್ಣಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವೈದರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಜನಟ್ಲ ಬರಡೊಂದು ಕೇನಂದುಳ್ಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲವರ ಏತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ ವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ నుంచి ನಕಲಿ ಪಾತೆರಡು MC ಮನ್ಪುನಕಲು ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪನಡೆ ಹಾಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಮಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನುವ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಟೀಲ್ಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಂದಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂದಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಪನ್ಪುನೊಂಡಾಗತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಅವನಿ ವೆಪನ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಸ್ವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿನೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಾಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಓಲ್ ಒಪ್ಪಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಾಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮಿತ್ ಬರೋಣ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೆಯೋದ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನದನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಈಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಐದು ಮತ್ತು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ತೊಜಿಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಊರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇರು ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಬೈದಾರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿಂಡ ಇವು ರೀತಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡೆ ನಿಜ ಅವ್ರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಡಾಲರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಬೈ ಮಿಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರೋಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೈ 28 years career ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್ ಬಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಅವು ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಪಂಡದ ಆತಂಡೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಆತಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನ್ ಪ ಯಾನ್ ಅರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡ್ಲ ಮಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಿಕ್ಲ ಪುದರೊಂಜಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅವಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಾಗ್ಲ ಮಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಲ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂತಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಅವೇಲಕನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ ಅವೇತೋ ಮೈದಾನದ ನಿಕ್ಲ ಈರುವೆರು ಒಂಜಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಡ್ ಅಧಿಕೃತಾದಿ ಅಂತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ತೋಡೊಂದಿತನ ನಿಕ್ಲ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಜಂಟಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದೇಶ ಮಣ್ಣುಗಳ ಜಂಟಿಯಾದ ಬೈದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಐದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ರಫರೇ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಇರ್ನೂತ ಅಜಿಪನೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ನೂತ ಅಜಿಪ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ 259 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತ ಅಜಿಪ ಇಡಗ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಅವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ 260th is going to be a most memorable tournament for us and ಬಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇದು ಪಂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಏಪ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕಲ್ನ ಮೋನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ದಿನ ನೆಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ದಯಮಟ್ಟ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕಲ 100% ಕೊಡ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಐಟ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ ಬರು ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೋಪಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೈನಲಿ 260 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಆ
ಜಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಸೇರಿ ಅದೆಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, 2 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು 260 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿದೇಶ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ